Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon. ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ടോസിനായി ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾ, ഇഞ്ചോടിഞ്ച് നെക്ക് ടു നെക്ക് മാച്ചസ് വി ഹാവ് സീൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ. ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത MPLന്റെ മാസ്മരിക അനുഭൂതി പകർന്നൊഴുകിയ അവസാന ദിനം. ഇന്ന് ബി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ദിനമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് MPL അവതരിക്കാൻ തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടീമുകളുടെയും ക്യാപ്റ്റൻസിനെ ടോസിനായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് പച്ചിലമ്പാറ ആൻഡ് ദ ടീം ഗുഡ് ലക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ് പൊസോട്ട്. ഓൺലി 2 മിനിറ്റ് മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ സൈനപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ. അതിനുശേഷം വി വിൽ ക്ലോസ് ദ സൈനപ്പ് ബുക്ക്. 2 മിനിറ്റ് ഓൺലി available for the players to do the signature from the sign-up book. Okay, second call for the captains for toss. Good luck, Friends Club Posot. Yes, Captain Jabir Manjeshwar is here. And on the other side, Royal Friends Pachilambara have Dawood Hossengadi. And we have the umpire Mohan Yayadi joins on the tossing center for the first procedures of this day number 4 of this mega cricket carnival. Ultimate cricket showdown of Andram cricket. Time for toss. Head is a call from Jabir Manjeshwar. That was spinned by Dawood Hossengadi and Jabir Manjeshwar, who won the toss and decided to good luck Posot. Captain Jabir Manjeshwar won the toss. പുതിയൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ they will taking time to announce after winning the toss. A big discussion going on there with the senior players of Good Luck Posot. Okay, won the toss and elected to bowl first. That's a news from the tossing center. After Good Luck Posot captain won the toss, he decided to bowl first.
Thank you, Mr. Michael Darwin. Very good evening, all of you gather here, and warm welcome once again for this particular tournament of MPL Season 10 2026, which is presented by Mannamkuzhi Arts and Sports Club. Mannamkuzhi, definitely very good day of day number 4 here in this particular condition. Hot sunny day. We have Mr. Harish Padilla as a umpiring position, and one more umpire. We have Mr. Saif Padilla. Those who are leading, those who are controlling the first match of day number 4. That is match between Good Luck Pursuit takes Royal Friends Pachalampara. Yes, the first match of day number 4 here. Good Luck Pursuit on the toss and elected to field first. Definitely there will be something plan, some strategy behind by taking a fielding in the center. Yes, we can see both the officials are walking into the ground to start the first matchup over day number 1. Day number 4, yes, definitely a very good team list have been comes under Group B of MPL Season 10. Many more the match number 10 of Group B, that is Royal Friends Pachalampara takes Good Luck Pursuit and is day number 4. A lot of matches has to be had to come on such a day like Friday. We have started the match number 10 of B Group. Yes, we have the openers from the side of Royal Friends Pachalampara. There is one side we have Musa Patan, another one side we have Farooq from the side of Friends Royal Friends Pachalampara here to start over number 1. And this time captain brings Rahim Kumble into the attacking number over number 1. Rahim, here we go. Yes, sir. Here we go with the first delivery. Rahim Kumble takes the guard up right and over the stumps for Farooq. This time first delivery from Rahim to Farooq. The day number 4, match number 10. Nicely flicked towards the straight reach. There is a catch chance, and meanwhile, but a fumble over there by the fielder bowler. Rahim doesn't able to collect that perfectly in his first beginning of first delivery. Meanwhile, batter is in safer zone right now. Once again, Rahim to Farooq. This time nicely delivered. Have a look at the line and length towards a very good line and length have been placed by Rahim Kumble here. What a good start we can see from Rahim so far. Did perfectly in this initial over itself. A very good start from the side of Good Luck Pursuit. Looking for the big shot this time. There is no connection at all. Meanwhile, very good backup from behind the stumps. A very good quick collection. Not at all letting the batsmen to go for a single run over there. That is what. Very control at the moment of starting over number 1. From the side of the small guy, Rahim Kumble, all the way from Kumble playing for KFC Kumble. Now he have taken jersey for Good Luck. So what a magnificent fielding. Single-handed fielder who is fixed in the short mid-wicket region. Completely collects that and going right through towards the wicket-keeper's hand. What a brilliant performance they are showcasing in the first match of day number 1.
Brilliant work from the side of Good Luck Pursuit. Yes, we knows that the coach of Good Luck Pursuit is none other than Mr. Badruddin Pursuit, one of the well-known campaigner of under-arm cricket, is having more than 17 years of experience in this under-arm cricket. That's what he have did for their teammates, and they are working on that. Definitely nice delivery. Flick the delivery towards the same region. A mid-wicket fielder is rushing towards the delivery. And meanwhile, collect single more run here. One more addition to the scorecard. Scorecard is 2 on the board after completion of 5 deliveries. So far, Rahim started very perfectly for the team like team. Good Luck Pursuit. Last delivery right in over the stumps for Musa this time. Lucky for this time. Nicely delivered. From Nizam, beg your pardon, that was Nizam who is striking over there after completion of over number 1. The scorecard is 2 on the board. There is no damage from the side of Prince Pachlampara here. Mr. Rahim Kumble just left 2 runs in this first beginning over from the hands of Rahim here. Very good control by himself in the bowling mark. He have shown for the crowd, shown for the spectators, and definitely that which makes a very good impact on the fielding marker by just giving 2 runs in the initial over number 1. Have a look at that bit changes in the fielding mark, getting the fielder inside the 30-yard circle. The fielder who is fixed in the deep square leg region, meanwhile getting him into the 30-yard circle, and slightly changes in Rahim Kumble, getting him into the deep square leg region. That is what here tactics used by the captain Jabi Manjeshwar, and he himself came into attack over number 2 here, taking the guard up right over the stumps for Musa this time. First delivery, looking for the big shot. There is no perfection with the batter. A big appeal we can see from the bowlers as well as fielder keepers, but Mr. Saif Padil is not confidential with that appeal. The batsman Musafat Patan is on safer zone right now from the side of Royal Friends Pachlampar here. A very good start from the bowling mark. We can see from Jabi Manjeshwar came into the attacking over number 2 here. Once again for Musa Patan. This time the ball moved towards the square leg region, and extra have been added to the scorecard. Scorecard slightly moving towards 3 on the board after completion of 1.1 deliveries over here. A very good start we can see from the bowler's hand. What a brilliant start. And meanwhile, there is a chance for the batter in such a condition like the wind which is moving towards the square leg region. The strong position of Musa Patan is square leg. He can go for the big shot. This time nicely one to the deep square leg region. Meanwhile, Rahim Kumble fixed perfectly right towards the behind the stump person, and there Rahim makes perfection with that fielding mark over here. Meanwhile, batsman just satisfied with single, and one more addition to the scorecard. Slightly changes, getting once again Rahim towards the deep square leg region. Have a look at that. Basit Ullal is discussing ideas, planning strategies along with the Jabi Manjeshwar. That is what Icon and the captain has to be worked together to take their team into the victory marker. So that is what we can see from the both wicket keeper as well as Icon player as well as the captain is working together to get a very good outcome from that. Yes, definitely we can see a brilliant match between those teams.
Started perfectly, just left 4 runs. Second over is in progress. 4 more deliveries left in this particular over number second. Once again, Jabi to Nizam. This time nicely flicked towards the fine leg region. A ball pushing towards the boundary line. Now 4 more addition to the scorecard. Have a look. The third delivery, nicely gentle push have been given towards the fine leg region where there is no fielder fixed perfectly. Once again, Jabi Manjeshwar, the captain, into the attacking number 4 here to Nizam. Once again, Nizam facing Jabi Manjeshwar as Basitullah is doing some tactics over there in the fielding mark. Definitely Basit knows that very well. Nizam can hit any maximum in the any time of the cricket over here. Yes, once again looking for the big shot. This time I've seen the air and crossing the maximum. What a night! Over the fence for the maximum. 6 more addition from the side of Nizam. What a connection by Nizam over here in this particular delivery. Scorecard is jumping towards 14 on the board after completion of 4 deliveries. Once again, Jabi to Nizam. This time we go for a big shot. Meanwhile, nicely driven towards the deeper square leg. A fielder fixed perfectly. Meanwhile, collected couple of runs. There is a chance for an out. And big appeal. We can see there is one more chance, and umpire goes for upstage for the run out. Yes, sir. Umpire goes for the run out for the upstage. What a drama we can see in the middle. Definitely, it is entertainment in running between the wicket. We can see from both the batters, that is Musa Patan as well as Nizam. Runs will be considered and 1 wicket have been fallen from the side of Royal Friends Pachlampara. Definitely Saif did perfect work over there in the middle, went for the upstage and the third umpire have given right decision over here with the support of Shine Sports. Musa walks back to the dugout. The first wicket have been fallen from the side of Friends Royal Friends Pachlampara. That was not required third running between the wicket. They have been satisfied with the couple of runs because already Nizam have been lofted 1 maximums, 1 boundaries. The scorecard is 16 on the board. We are in the second over. Not bad start from the side of Royal Friends Pachlampara. Last delivery nicely towards the deep. Third man reach and fielder fixed perfectly, given right throw and completed over number second. The scorecard is 17 on the board. Loss of 1 wicket.
The board after completion of 2 overs, loss of 1 wicket. Now it shows a balancing start from the side of both the teams. That is Royal Friends Pachalampare as well as Good Luck Pusota. The captain brings a new bowler into the attacking over number 3 here. Sharata coming into the attacker with the bowling mark here, pitching the delivery towards the ground and facing for Davudo Sangari, who is giving partnership for Nizam here. Nicely flicked towards the deep onside region and taken comfortable single. Just giving strike for Nizam because Davos knows that Nizam is on fire. We have seen his batting performance in this previous game, previous over. Lofted one maximum and lofted one boundaries for his account. That is what the strategy behind of Dawood Sangadi, giving strike for the Nizam this time directly into the hands of a bowler. There is no chance at all for the batter to go for singles. That is what a very good comeback from the bowler's hand. Sharad, the new man, young man from the side of a Good Luck Pusota, doing very good job. And the bowling mark of once again Sharad to Nizam, taking the guard of right and over the stumps for Nizam. This time nicely delivered, What a good delivery. Have a look at the accuracy towards the sticks was perfectly placed by the new man Sharad from the side of Good Luck Pusota. Definitely 2 dotted deliveries in a row we can see in this particular over number 3. The scorecard is 6 down. 18 on the board, loss of 1 wicket so far. Sharath is doing brilliant work in the bowling mark over here. Once again for Nizam. Sharath to Nizam this time. Yes, there is a call for catch. Meanwhile, field of fixed in the cow point region. One more blow from the side of Royal Friends Pachalampara. The big fish on the right now. Nizam departure. Celebration from the side of Good Luck Pusota. They have taken Nizam walks back to the pavilion now. Yes, the new man came into the batting mark of Fairuz Pachalampara. Definitely he's playing for his home team over here in this particular match between those teams. Once again, the young man Sharata into the attacking over number 3 here, taking the guard of right and over the stamp for Fairuz the first time. There is goes for the river sweep. Meanwhile, there is no connection at all. Meanwhile, goes for a couple of runs. There is chance of run out. And this time, suicidal. Suicidal might be. Yes, we have to wait. We have to wait for the decision which comes from Squalak. Yes, it's no doubt. A very good quick running between the wicket we can see from the both the batters. That was the riskiest one, but they were managed perfectly in this particular condition over here. A very good running between the wicket we have seen, particularly from Davudo Sangari. Have a look at the running between the wicket. Once again, Sharata to Fairuz Pachalampara. This time taking the card off right over the stumps for Fairuz Pachalampara. Very good. Nicely now. There's a chance of catch. Meanwhile, direct throw, but batsman into the inside the crease. They are safe right now. A very good collection, a very good throw, but batters are safe. That is what very good running between the wicket we can see from the both the batsmen. After completion of over number 3, the scorecard is 21 on the board. Loss of 2 wickets.
Badruddin Posota, I guess. They have started very perfectly with the bowling mark. We have seen the first over, who is spelled by Rahim Kumble, just gave 2 runs in the beginning of innings number 1. Definitely, captain brings back once again Rahim Kumble to bowl over number 4. That is what the confidence which is kept on the bowler like Rahim Kumble, the short guy, the naughty boy in the under-arm cricket. That is Rahim Kumble. Once again, getting him back into the track. Rahim taking the card off right now. This time for off. Firos on nicely driven towards the deep onside region and taken comfortable single here. Very good stroke we can see from Firoz. He faced 3 deliveries and there is no dot from the side of Firoz. Have a look at the changes in the fielding mark, because Basit knows that, Jabir knows that, Dawood Osangari is strong in the side of deep square leg, so getting the fielders into the deeper area of leg side, and that is what here they did. Nicely flick from the hands of Dawood, the fielder rushing towards the ball, and this goes for the boundary line. What a reverse from the hands of Dawood. Have a look at that. Basit as well as Jabir fixed the fielder in the deep square leg region, because the strong position of Dawood is deep square leg. But he have taken that advantages, and there was no fielder fixed very well in the deep fine third man region and placed perfectly over there. What a good stroke from the hands of Dawood. He looks for the big shot, and this time covers. This time it covers the region. What an up shot, what an hit from the hands of Dawood Osangari. As I told, the favorite place, the strongest side of Dawood is deep square leg, lofted like anything. Have a look at the connection between ball and bat. Magnificent from the hands of Dawood Osangari. 6 more run addition to the scorecard, 32 on the board. This might be going to be expensive over here. From the side of Rahim Kumble, he have bowled the first over and gave just 2 runs. That is the reason the captain bring back Rahim Kumble into the attack. But Dawood Osangari, the plan of Jabir have been changed over here. Looking for the big shot. Meanwhile, there is no connection. And directly ball moves towards the deep fine leg region and taken comfortable single here. One more addition to the scorecard. 33 on the board. Last 2 deliveries are remaining. That is what the dangerous Dawood is doing over here. Now Fidoz is in the strike. Fidoz has to give strike to Dawood, because Dawood is on fire. Dawood is on form. So definitely that mindset should be required from the side of batter here. Looking for the sweep. There is no connection at all. A side finger rising. A very good appeal from Basitullah, and straight away into the dugout here. Firoz walks back to the dugout. Firoz Dipas here. Wicket number 3 have been fallen from the side of Royal Friends Patsalampara. What a good comeback from Rahim Kumble after Dawood hitting 1 maximum, another 1 boundary for his account. Rahim have came into the good track in the line and land towards stick. That is what here lag before wicket have been given by Firoz Patsalampara and walks back to the dugout. The new batter, Mainu Patsalampara. Yes, all the players from Patsalampara, I guess they are playing for their own team. That is what the affection, that is what the love they have for their own club team. That is the Royal Friends Patsalampara. We have seen Firoz Patsalampara. Soon after that, we have seen Moinu Patsalampara came into the attacking batting order. Here our middle order batter Moinu doing perfect job giving strike to Dawood Osangari. As I told, Dawood is settled down batter over here right now. After completion of over number 4, the scorecard is 34 on the board, loss of 3 wickets. Definitely a very good score, 34, not at all bad.
Yes, sir. Now captain brings Sunil Singari into the attacking over number 5. Yes, one of the experienced campaigner of one-arm cricket, that is Sunil Singari. Now at the side of bowling mark, have a look at the changing in the forward position in the fielding. Definitely there is a changes for Moinu Paslampar here. This time goes for big shot. This time goes for big shot, and meanwhile there is no connection. There is no connection into the hands of wicket keeper Basit. Did perfect work in the behind the stump, directly in the pouch of wicket keeper here. The bowler is not letting the batsman to take a single run here. That is what Sunil came into the attacking over number 5. Captain have did very perfection bowling setup for a team like Good Luck Posota. We are enjoying the performance they have showcasing in this particular match number 1 of day number 4. That is between Royal French Pachalampara versus Good Luck Posota. Here comes Sunil once again. Third umpire. Definitely Shine Sports is doing very good work in such condition, like going for upstays and giving right declaration from third umpire. That is what the social media, that is what the live telecast help for the lot in such a condition, such a particular big match like MPL season 10, flicking the deliveries and taking one more single over here. 35 on the border. Loss of 3 wickets over number 5 is on progress. Sunil started perfectly. Now the big man Dawood into the striker. Sunil to Dawood, taking the guard off over the stumps for Dawood. There's time away from the leg stump reach, and meanwhile rushing forwards the run, and this time there is a chance. There is a chance. A finger raised up, and Dawood, the man behind French Pachalampara, walks back to the dugout. Dawood's wickets have been fallen. One more blow from the side of French Pachalampara. Have a look at that. Dawood is discussing something with the Moinu Pachalampara. He is on aggressive mode. We can see his face, lion face of Dawood Sangari. Now the disappointment, now the sadness we can see from Dawood. Walks back to the dugout. Dawood depart here. What a good performance, what a good bowling, what a good fielding, all in the control of Good Luck Posota. A very good, fine performance they have showcased in this particular over number 5. The scorecard is just 36 on the board. Loss of 4 wickets after completion of 4.2 deliveries. The call was wide. No need of going for singles. But they lost 1 wicket. That also the valuable wicket from the side of Royal French Pachalampara. Once again, for Moinu Pachalampara this time. Nicely delivered the ball into the fine leg region and taken comfortable single. The new man in the strike now, Ashik from Mother India. Yes, the tall guy joined with the Moinu Pachalampara, facing first delivery of Sunil Sangari. Definitely 37 is not a big total over here so far after completion of 4.3 deliveries. Now the tall man have to do something for his team. Have to go for big shot in this particular situation. Looks for big shot, nicely driven towards the deep onside region, goes for a couple, and this time completed couple of runs. A very good running between the wickets. We can see from the batters, the tall guy, both are tall, I guess, Moinu Pachalampara as well as Ashik Mother India. A very good running between the wicket. 2 more adding the scorecard here. 39 on the board. Very good collection by this deep onside region fielder. Given right through. Meanwhile, the quickness of batter have helped a lot to take couple of runs over here. Once again, Sunil taking the guard of right and over the stumps for the tall man, Ashika.
Nicely flick the deliveries to the long of region and taken comfortable single. That is what just rotating the strike. They are not getting right point to hit the maximums, hit the boundaries in this particular situation. Yes, timeout indication from the center. Now there is a chance for the batting side. One fielder has to come inside 30-yard circle. That's slightly giving a better chance for the batter to go for maximum over here. And this is the situation like 40 on the board after completion of 5 deliveries. They need to go for some big shots over here. Looking for the big shot this time. This time big appeal, and there is no confidence from the main official Harish Padil. And meanwhile, batter have taken single run over here after completion of over number 5. The scorecard is 41 on the board, loss of 4 wickets. Shahul Hamida into the attacking over number 6. Definitely very good 5 overs we have seen from the side of Good Luck Pasota. And the two tall guys, two tall men from the side of Royal Friends Pachalampara. That is Moinu Pachalampara as well as Ashika. Have to do some extraordinary performance in the particular last over. That is over number 6 here. The new man Shahul Hamida looking for the big shot, There is no rope for the batter to go for singles, couples and boundaries. And umpire goes for third umpire to check. Wide, I guess. Stamp, yes, to check the stamp. Definitely, it is not at all easiest thing for the official to end such a condition like hot, sunny day or Friday. It is quite difficult to take each and every decisions in the bare eyes. So definitely, that is the right thinking from Harish Padil. Directly goes to upstairs for the perfect decision. That is what the third umpire call is not out. The batter is safe inside the strike. Definitely very good decision we can hear from the side of third umpire, that which makes happiness for the team like Friends Platzenbra. This time very good line and length from the bowler here. Shahul Hamid doing perfect job in the 6th over. What a beginning of over number 6 showcased by Shahul Hamid. 2 deliveries, consecutive dotted delivery have been placed by Shahul Hamid. The batter Moinu Pachlampare completely fails in front of Shahul, the young man from the side of Good Luck Pasota. This time taking the guard off right and round the wicket for Moinu Pachlampara here. Once again, Moinu nicely flicked towards the fine leg region and taken comfortable single. Goes for a couple of. There is a chance of run out. This time, very quickness we can see once again. Umpire goes for upstairs to check whether it is run out or not. Definitely, we can see the quickness of the fielders. Have a look at the throw who is done by Rahim Kumble, I guess. What a collection, what a throw from Rahim Kumble towards the keeper's hand. Perfectly collected and given right throw without missing any minute, without missing any fraction of second. Have a look at the replay. What a collection from Basit. What a throw from Rahim Kumble. What a game we are witnessing here. Yes,
His call is out right now. Moino walks back to the dugout. Moino has to walk towards the dugout right now. What an action! What an action we have seen in this particular delivery. Beautiful throw towards the hands of Basit and have collected one big wicket from the side of French Patslampara. Moino fails in front of the young man Shavel Hamid. Two deliveries dotted, third one run out. What a delivery so far. Brilliant work in the bowling mark we can see from Shavel Hamid over here in this particular over number 6. Pitching the delivery to the ground. Once again for the new man, Abbey BC Road. Yes, there is a chance. There is a chance for the run out once again. And one more wicket. One more wicket fallen in the form of run out. That was unnecessary. Unnecessary running between the wicket. The ball with the hands of wicket keeper have given right throw to the bowler. This was suicidal. Suicidal from the batter over here from the side of Royal Friends Patslampara. What's happening from the side of Royal Friends over here? The batsmen are getting into the strike, walking back to the dugout. Regular intervals, we can see each and every wicket from the side of Royal Friends Patslampara. 2 consecutive run out we have seen in this particular over number 6. What a start from the young man from the side of Good Luck Proshoda, Shahul Hamid. Shahul Hamid. Bowling mark beautifully placed. 4 deliveries and just left 1 run in 4 deliveries. That is what. Very good comeback from the bowler. Very good comeback from the bowler. Controlled over so far here after completion of 4 deliveries. Last 2 more delivery left in this particular over number 6 here. Once again taking the guard of right and drop the wicket for the tall guy. This time there is a chance. There is a chance for the run. Now this is must understanding. Another one. Another one. Consecutive wickets have been fallen. 3 wickets in a row. What's happening here? What's happening here? I can hear voice from Mr. Abdul Rahmanji. When Dawood's wicket have been fallen, everything gone, collapsed here. Yes, once again, the second time timeout indication from the center. Definitely it is a bad start from the side of Royal Friends Patslampara. We are seeing in this last over number 6, 3 consecutive wickets in a row have been collected by the young man Shahul Hamid. What a performance. What a performance of beginning of innings number 1 for the side of Good Luck Pasota. Beautiful start in the over number 6 here. Last delivery 42 on the border. Vicky with the batting marker facing large delivery from Shahul Hamid. Goes for a big shot this time. There is no connection at all. Meanwhile, cross single here. In the form of leg by. What a good performance comes to an end. Just left 2 runs and have collected 3 valuable wickets from the side of Royal Friends Patslampara. 43 on the board. 44 is a victory target for a team like Good Luck Pursuit. As I told, the coach, Mr. Badruddin, worked a lot behind team Good Luck Pursuit over here in this particular moment. We have finished innings number 1. And moving towards the innings number 2 with the scorecard of 43 and 44 is the victory target for a team like Good Luck Pursuit. Now changes in microphone. I would like to call Mr. Abdul Rahmanji Bekura. Definitely it gives goosebumps when hearing his voice. He's having very good fan base in the underarm cricket. People love to hear his voice. People only comes to hear his commentary over here, not to watch underarm cricket. Only comes to hear his actions, his the analyzing of underarm cricket. That which gives definite strength, effort, goosebumps, and makes happy for the people. Yes, that's definitely releases stress, tension in the mind of people. Once again, hearty welcome, and I would like to call Mr. Abdul Rahmanji Bekura to analyze the upcoming innings. Thank you.
धन्यवाद प्रीतम। वेलकम डार्विन माइकल। चौथी दिन के लिए फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। आज के सुबह सुबह स्वागत किए हैं थे, चौथी दिन के लिए फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। बी पुल के बचे हुए मैच जारी हैं। 9th मैच बी पुल के यहां पर खेला जा रही है। MPL सीजन 10वीं सेलेक्टेड मन्नमकुझी की ओर से इस क्रिकेट प्रतियोगिता जा रही है। तब हमारी साथ मौजूद हैं जो डिजिटल स्कोरिंग संविधान पर कलील PM, और इसी तरह कमेंट्री बॉक्स पर प्रीतम कुंबला और डार्विन माइकल, और इसी तरह फील्ड अंपायरों के रूप में सैफुद्दीन पटेल, हरीश पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, मोहन यादी। सबको स्वागत करना चाहता हूं। और इस क्रिकेट प्रतियोगिता चौथी दिन के लिए गई हैं। सबसे बड़े प्रतियोगिता है अंडरआर्म क्रिकेट के। अंडरआर्म क्रिकेट के दुनिया में दक्षिण कन्नड़ जिला और कासरगोड जिला में सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है, क्योंकि 15 लाख 7 लाख के नगद पुरस्कार देते हुए बहुत बड़े पुरस्कार पहली बार हैं अंडरआर्म क्रिकेट में। यहाँ पर देखिए पच्छिलम बारा वर्सेस रॉयल फ्रेंड्स पच्छिलम, गुड लक फ्रेंड्स पसोड। दोनों टीम के बीच में पहले क्षेत्ररक्षक किए हैं टॉस जीते पश्चात गुड लक पसोड ने, लेकिन 2-3 ओवर के बाद बिल्कुल अपने हाथ से मैच बिल्कुल रॉयल फ्रेंड्स के तरफ गए थे। लेकिन देखिए बस एक गलती यहाँ पर बड़े परिणाम हो सकती हैं। यहाँ पर बहुत बड़े गलती किए हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट, दाऊद संगडी के विकेट। मैंने पीछे बैठकर खेल देख रही थी, तब बहुत बड़े फॉर्म पर बल्लेबाजी कर रहे थे दाऊद संगडी। उनके विकेट मिसअंडरस्टैंडिंग में आउट हुए, तब से दबाव हुए हैं। 43 में समाप्त हुए इनिंग्स। 44 इज द विक्ट्री टारगेट ओवर द विकेट। पहली गेंद बहुत खूबसूरत शॉट, झाड़ू बनाए बल्ले को, 1 रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है। 2 रन तो पूरा किए और 2 रन की मदद से खाता खोल चुके हैं आरंभिक बल्लेबाज। निजाम गेंदबाज के रूप में है। बासितुल्लाल स्ट्राइक पर मौजूद है। 9 सेकंड पर सतीश मुझगांव, और एक बार हवा पर गेंद, लेकिन कुछ क्षण तक हवा पर रुक गई थी। लेकिन दोनों खिलाड़ियों के बीचों बीच में गेंद को रोकने के लिए प्रयास किए, लेकिन कोई मौका नहीं। दूसरी गेंद पर 10 चौका। आसान के साथ रोक सकते थे इस बाउंड्री को, लेकिन 2 भी फील्डर गेंद के पीछे गई हैं, लेकिन अंतिम क्षण तक का कोशिश किए, लेकिन नाकामयाब हुए हैं। चौके के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 6 रन 44 रन को पीछा कर रही है। तो पावर प्ले में पकड़ कर रखना चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 2 गेंदों में 6 रन तो प्राप्त कर चुके हैं। क्रिकेट में कुछ भी कह नहीं सकते, वापसी आ सकते हैं। देखिए पिछले इनिंग्स में दाऊद के आउट होने के बाद कितने बड़े दबाव में है। ओवर द विकेट वासीद फिर एक बार। तीनों गेंद में इन्होंने स्वीप के ज्यादा प्रयास किए हैं, सफल भी हुए हैं। 7 रन इन्होंने बटोर लिया गया है अपने खाते पर, 7 रन, और टीम के खाते पर भी 7 रन। 3 गेंदें फेंक चुके हैं। चौथी गेंद के लिए सतीश के लिए गेंदबाजी करने के लिए निजाम तैयार है। निजाम कोडिकल उनके आगमन हुए हैं चौथी गेंद में, और इस गेंद को भी देखिए सतीश भी वही शैली पर बल्ले घुमा रही हैं। निर्देश तो ऐसे मिला होगा कि जब पावर प्ले में सभी गेंद में रन बनाते जाएं, क्योंकि 36 गेंदें हैं, 44 रन की ज़रूरत है। बीच में 1-2 बड़े शॉट मिल जाएं तब हो सकते हैं, लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। चौके तो मिल गए हैं पहली ओवर पर। अब अगली गेंद निजाम, और इस बार उल्टा बल्ले में पहली बार छक्का का है। बहुत अच्छी वापसी की, लाजवाब वापसी, और इसी के साथ रनों की संख्या अभी भी 8 रन 5 गेंदें फेंक चुके हैं। 5 गेंद में से 4 गेंद सामना किए बासितुल्लाल। 7 रन बनाकर खेल रही है, 1 रन बनाकर सतीश। फिर एक बार ओह बढ़िया गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद थी। वापसी तो बहुत चमत्कारी बनाए, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहली ओवर की समाप्ति पर 8 रन, चौका मिले, डबल मिले, फिर भी देखिए 8 रन पर यहाँ पर फंस गए हैं, और भी 36 रन की जरूरत है। 30 गेंदें बचे हैं। सत्तार की आगमन दिख रही है। सत्तार मुसोडी अंडरआर्म क्रिकेट चैरिटी एसोसिएशन के अध्यक्ष, बड़े संतुष्टि के साथ स्वागत करना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत व्यक्ति भी है, धन्य व्यक्ति है, और इस प्रतियोगिता में हर दिन
जो अपनी नाम दर्जा करती है, उनके टीम भी यहाँ पर खेल रही है। अलिफ स्टार मुसोरी काफ़ी संतुष्ट हैं। अब जो भी हो, दूसरी ओवर के लिए जा रही है हिंदुस्तानी स्कूल से नए गेंदबाज के आगमन दिख रही है। कलील न्यू बॉयज धन्य व्यक्ति और एक आ चुके हैं। मुस्तफ़ा यहाँ पर आए हैं, देखा ही नहीं, धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। हर दिन हमारे साथ मौजूद होते हैं। वेलकम मुस्तफ़ा बीएम। कलील न्यू बॉयज यूसीसीए के और एक नेता हैं, बहुत बड़े योगदान देते हैं अंडर आर्म क्रिकेट चैरिटी एसोसिएशन के। अब तैयार है दूसरी ओर फेंकने के लिए। नए गेंदबाज के आगमन हुए। फैरूज पछलंबारा की आगमन दिख रही है। फैरूज पछलंबारा सतीश के लिए। सतीश दूसरी गेंद को सामना कर रही है। अब तक एक गेंदे सामना की 1 रन बनाकर खेल रही है। 5 गेंदे सामना की है, बासित 7 रन बनाकर खेल रही है। अब फैरोज तेजी के साथ जमीन पर टपकाने के बाद झुककर खड़े हैं और ओवर द विकेट और गेंद को खेलना चाहा। अपील अपील अपील, लेकिन जिस अपील को इंकार किए, लग भाई के इशारा जरूर दिए, पैड पर जरूर लगे हैं भैया, लेकिन स्टंप के सामने पहर नहीं थी, ये दिखा रहा है अंपायर ने। अब तो तैयार है दूसरे गेंद फेंकने के लिए। रनों की संख्या बढ़ते हुए 9 रन। 1 रन अतिरिक्त के खाते पर, 1 रन सतीश के खाते पर, 7 रन बनाकर बासित खेल रही है। फिर एक बात तैयार है, दूर वाली चोट से फैरूज पछलंबारा लंबे कदमों के इस्तेमाल कर रही हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं। फैरूज काफी अनुभवी खिलाड़ी है, इस मैदान में कई बार ट्रॉफियां हासिल कर चुके हैं, पुरस्कार हासिल कर चुके हैं इस खिलाड़ी। ओवर द विकेट और इस गेंद को खेला गया है। मिड विकेट पर गेंद जाते हुए हल्के से चकमा खाए फील्डर ने जरूर। उस समय दूसरे रन के लिए आसानी के साथ वक्त बनाए। तब तक 2 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 11 ऑन द बोर्ड, 11 रन। बहुत अच्छी स्थिति को सामना कर रही है। तब तक हमारी चैंपियन स्पोर्ट्स के मालक और अंडर आर्म क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी अजहर मुट्टम यहाँ पर आ चुके हैं। हमेशा की तरह हसन पिरला भी हमारे साथ मौजूद है, अंडर आर्म क्रिकेट अंडर आर्म चैरिटी एसोसिएशन के और एक नेता है। वेलकम मिस्टर हसन पिरला, वेलकम अजहर मुट्टम। और केएस मूसा जी यहाँ पर आ चुके हैं, उनको भी बड़े स्वागत करना चाहता हूँ। यहाँ पर बीट हुए, लेकिन अंपायर की तरफ से वाइड के इशारा आए। वाइड +1, 2 रन तो फ्री में मिल गई है। रनों की संख्या हल्के हल्के बढ़ते जा रही है, 13 पर पहुंच चुके हैं। रॉयल फ्रेंड्स पछलंबारा ने कुल मिलाकर 44 रन के लक्ष्य को खड़े किए थे। तब यहाँ पर देखिए दूसरी ओवर शुरुआत अभी अभी हुए हैं, 13 रन पर स्कोर पहुंच चुके हैं। अब तैयार है लंबे कदमों के साथ गेंदबाजी करते हुए हिंदुस्तानी स्कूलन से। वाइड चेक करने के लिए जो रिव्यू मांगे हैं अंपायर ने, तीसरे अंपायर की मदद मांग चुके हैं। अब देखना होगा कि किसी के आंख में पट्टी बांध सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले के आंख में पट्टी कभी नहीं बांध सकते हैं। ये तो देखना बाकी है। दाऊद ने संदेह किए हैं, क्योंकि अगर एक डॉट बॉल आ जाए तब वो फायदा मिल सकती है, ये सोचकर इन्होंने जो तीसरी अंपायर के लिए रिव्यू मांगे हैं।
मात्र 2 रिव्यू मिलते हैं इस एक इनिंग्स में। अगर सफल हुए तो 2 बच जाएंगे, अगर अनसफल हुए तो, ना सफल हुए तो एक तो नुकसान हो जाएंगे। ये तो नियम है एमपीएल की। अब तैयार हैं, तीसरी अंपायर तो जांच रही है मोहन नैयारी। बहुत खूबसूरत मेला आपके सामने। एमपीएल सीजन 10वीं, बहुत खूबसूरत दिन है, चौथी दिन। आज जुम्मे के दिन है। 3:15 बजे शुरुआत हुए, हमेशा 3 बजे शुरुआत हो रही थी। बहुत खूबसूरत मैदान, अलग अलग मकानों की रंग रंग के फ्लैक्स बोर्ड मैदान के चारों तरफ चमक रही है। जासी पुसोर तो घुर घुर के देख रही हैं। स्वागत करना चाहता हूं जासी, गुड लक पुसोर के हॉल इन हॉल। स्वागत करना चाहता हूं, अंडरआर्म क्रिकेट के इस बड़े मेला में आए हैं। दैट्स ए लीगल डिलीवरी, कोई मौका नहीं है वाइड के लिए। वेलकम जैकी, वेलकम सर। अब तो तैयार है, जो भी हो। ऊपर वाला तो सब देख रही है, पट्टी तो नहीं बांध सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं, किसी के भी पट्टी बांध सकते हैं आंखों में। अब तैयार है फैरूज, सतीश के लिए गेंद फेंकना चाहते हैं ओवर द विकेट, और इस गेंद को खेला गया है। व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, टन टन टना टन चौका। हनीफ कुन्नी की आगमन हुए हैं। अंडरआर्म क्रिकेट चैरिटी एसोसिएशन के और एक धन्य व्यक्ति हैं, और जिला समिति के ट्रेजरर हनीफ कुन्नी। स्कोर इज 16। अब अगली गेंद लेकर तैयार है ओवर द विकेट, और इस गेंद ओहो, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, उल्टा बल्ले में खेलने की कोशिश की है। और अंडरआर्म क्रिकेट के बहुत बड़े धन्य व्यक्ति, अंडरआर्म क्रिकेट के रेस्पेक्टेड मैन, एमपीएल के राजा, प्रीमियर लीगों की राजा हनीफ उमंगा की आगमन हुए हैं। 1 मैन आर्मी ऑफ मन्नमकुजी। अब तैयार हैं, दूर वाली चोट से लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी स्कूल एंड से फैरोज पचला सतीश मुजगांव के लिए गेंदबाजी करना चाहते हैं। डॉट बॉल के साथ वापसी आए थे फैरोज ने। 16 ऑन द बोर्ड, 28 रिक्वायर्ड। ओहो, बढ़िया गेंद, व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए कमबैक फैरोज। और उसी के साथ ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 16, लॉस ऑफ, बिना किसी नुकसान के साथ। अब नए गेंदबाज की आगमन हो रही है। निजाम
तीसरे ओवर की शुरुआती कर रही हैं निजाम। कंटिन्यू जारी रखने के लिए तैयारी हो रही है। 44 रन के लक्ष्य यहाँ पर। 2 ओवर की समाप्ति पर 16 रन बन चुके हैं। 28 रन चाहिए, अभी भी 24 गेंदे बचे हैं। अब देखना बाकी है कि बल्लेबाजों ने क्या कर पाते हैं। आरंभिक बल्लेबाज दोनों सुरक्षित है, बासित सुरक्षित है, सतीश सुरक्षित है। अब बायर के कमर होने से निजाम अपनी शैली में ओवर द विकेट और इस गेंद को सिप किया गया है। शुरुआत से देख रहा हूँ निजाम के सामने बिल्कुल खुलकर नहीं खेलते हैं, उठाकर नहीं खेलते हैं, सिप के सहारा लेते हैं। हर गेंद में रन बनाना चाहते हैं, तो जानते हैं खतरनाक गेंदबाज है निजाम। अब तो तैयार है सतीश के लिए दूसरी गेंद फेंकने के लिए, दूरबालीचों से लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हुए। निजाम ओवर द विकेट और रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, हल्के से फ्लिप किए हैं। मिड ऑफ सर्किल के अंदर फील्ड लेते उनके तरफ गेंद गए, तब तक 1 रन और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 18 फॉर नन। 18 रन बिना किसी नुकसान के साथ निजाम अपनी ओवर की तीसरी गेंद लेकर बायर के कंपरोडन से अपनी शैली पर खड़े हैं। 2-3 बार टपकाते हैं गेंद को जमीन पर और अब तो तैयार हो चुके हैं तीसरी बार ओवर द विकेट। उल्टा बल्ले में खेला गया है, बहुत खूबसूरत शॉट, जबरदस्त शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर को, टन टन टना टन चौका। कोई आसान गेंद तो नहीं थी, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के हल्के से बाहर गए थे, कुछ ही बाहर गए थे। तब तक इन्होंने पावरफुल शॉट खेले हैं, पहली बार है इन्होंने उठाकर खेले हैं, तब तक चौका मिले। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 22 ऑन द बोर्ड। अब स्वीप किए हैं, समझ लिए मंजिल के दरवाजा दिख रही है, तब जल्दबाज करने की कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ते हैं। इन्होंने 1 रन हासिल किए, तब तक रनों की संख्या बढ़ते हुए 23 फॉर नन। उनकी 23 रन 0 पर बिना किसी नुकसान पर। अब अगली गेंद निजाम अपने ओवर की अगली गेंद लेकर रक्षात्मक तरीके के साथ खेलने के प्रयास किए हैं, तब तक करीबी मामला हो सकती थी। लेग बाई के इशारा किए हैं, उसके मतलब है कि पैड पर खेले हैं, कोई बल्ले पर नहीं आए थे। इसके लिए हल्के से आवाज़ भी सुने थे। जिया पैवलिका की आगमन दिख रही है, धन्यवाद। स्वागत करना चाहता हूँ अंडर आर्म क्रिकेट चैरिटी एसोसिएशन के और एक धन्य व्यक्ति हैं, धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। हर दिन यहाँ पर आ जाती हैं, उनके टीम भी यहाँ पर खेल रही है, CSC पैवलिका। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ओवर समाप्त हुए हैं, 3 ओवर की समाप्ति पर 26 रन बिना किसी नुकसान के साथ। बहुत खूबसूरत जो ऑप्सी दिख रही है, देखिए दूसरी इनिंग्स खेलते हुए बहुत खूबसूरती के साथ जो पीछा करते हुए नज़ारा है। 26 26 after completion of 3 over, 18 to go, 18 to get। अगली मैच यहां पर खेला जाएंगे। और अच्छी गेंद, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी गेंद थी। दाऊद संगड़ी कप्तान के आगमन दिखे हिंदुस्तानी स्कूल से। अब आने वाली मैच है 10वीं मैच, 11वां मैच चैंपियन स्पोर्ट्स हाई फ्लैश दुबई के बीच में। और चैंपियन स्पोर्ट्स में पहली दिन में खेला गए थे हकीम सुरिंजे आज एब्सेंट है, उनके जगह पर नए खिलाड़ी आए हैं। अयास के आगमन हुए। अयास जन्नम
आज के दिन चैंपियन स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा जाएंगे। वेलकम अयास। यहाँ पर खेला गया है लॉन्ग ऑफ पर 1 रन और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 27 रन। 17 मोर रन रिक्वायर्ड आउट ऑफ 16 डिलीवरी। 16 गेंद में 17 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब दाऊद संगड़ी तैयार है लंबे कदमों के साथ ओवर द विकेट। अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयारी कर रहे हैं दाऊद। उनके सामने है बासित। पहली 2 गेंद को सामना किए थे सतीश। पहली गेंद चकमा का आए थे, दूसरी गेंद में अच्छी शॉट थे 1 रन। अब अगली गेंद बासित उल्टा बल्ले में खेला गया हवा पर गेंद और इसी के साथ बड़े मछली अपनी जाल में फंसा दिया गया है। पहली विकेट के पतन बासित उल्लाल डिपार्ट्स बैक टू द पवेलियन। शानदार शॉट थे लेकिन के गेंद के नीचे थे। कृष्ण कुमार संगाड़ी उन्होंने आसानी के साथ इस कैच को पकड़े हैं। बहुत अच्छे विकेट। देखिए 3 गेंद में सिर्फ 1 रन। अब तो हल्के दबाव तो डाल चुके हैं गुड लक के बल्लेबाजों के ऊपर, क्योंकि आरंभिक बल्लेबाज आइकॉन खिलाड़ी को कप्तान ने आउट किया रॉयल फ्रेंड्स के। दाऊद संगड़ी गेंदबाजी के लिए आए तो पहली गेंद में ब्रेक थ्रू मिले हैं। बिल्कुल जरूरी वाली इस विकेट थे, इस जोड़ी को तोड़ना चाहते थे। अब नए खिलाड़ी जाबिर मंजेश्वर कप्तान है। कप्तान के लिए गेंदबाजी कर रही है। पहली हिंदुस्तानी स्कूल एंड से पहली बार इनको मौका मिले हैं दाऊद संगाड़ी को। मात्र एक खिलाड़ी को 2 ओवर फेंकने के लिए मौका मिलते हैं। ओवर द विकेट। व्हाट अ शॉट। गेंद तो हवा पर है, नीचे फीलर है और कैच छोड़ दिया गया है। यह तो अजीब बात है भैया, क्योंकि इस ओवर बिल्कुल चमत्कारी बनाते जा रही थी। तब अगर जाबिर के विकेट मिलते तब 100% भी यहां पर दबाव में आ जाती थी गुडलक बसोर। देखिए कैच छोड़ो यानी कि मैच छोड़ो, ये देखना होगा। इस कैच छोड़ने की परिणाम क्या होगा ये देखना होगा। अब तैयार हैं दाऊद संगाड़ी दूर वाली चोट से ओवर द विकेट। अंपायर को घोष करते हुए हिंदुस्तान स्कूल एंड से जाबिर भी तैयार हो चुके हैं। ओवर द विकेट। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बिल्कुल अच्छी गेंद, सफल गेंद। व्हाट ए डिलीवरी। 29 15 मोर रन रिक्वायर्ड आउट ऑफ 13 डिलीवरी। अगर कैच नहीं छोड़ते, सही सलामत पकड़ते, तब और भी दबाव में आ जाती थी। अब अगली गेंद दाऊद संगाड़ी जाबिर के लिए अपनी ओवर की अंतिम गेंद लेकर ओवर द विकेट। और इस गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑफ में, जगह बनाए। गेंद तो सीधा जा रही है, सीमा रेखे के करीब फील्ड हुए, थ्रो हुए, तब तक 2 रन। तो 2 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 31। 13 मोर रन रिक्वायर्ड आउट ऑफ 12 डिलीवरी। 12 गेंदों पर 13 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। धन्यवाद। वेलकम मिस्टर उमंगा। बारह गेंदों में 13 रन चाहिए तो मैच को जीतने के लिए। यहाँ पर देखिए पिछले ओवर तो बहुत खूबसूरत ओवर थे। अगर दूसरे कैच भी पकड़ते हैं तब वो बहुत बड़े इस ओवर में बहुत बड़े दबाव डाल सकते थे गुड लक के ऊपर। अगले मैच के लिए टॉस के लिए आ जाइए। चैंपियन स्पोर्ट्स और हाई फ्लैश दुबई के कप्तान, दोनों कप्तान आ जाइए भैया। अगले मैच खेलने के लिए तैयारी हो जाइए। चैंपियन स्पोर्ट्स के कप्तान और उसी तरह हाई फ्लैश दुबई के कप्तान। गिरीश मुजिंगांव
हरीश मुजिगांव के छोटे भाई राइफल्स के तच्ची युवक खिलाड़ी हैं, कप्तान दोनों युवक खिलाड़ी हैं। अब नए गेंदबाज हैं विकी सुरामबाइल, लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट। अच्छी स्वीप की है, जादू शॉट के लिए हैं, तब तक 1 रन। अब तो यही ज़रूरी है, कोई बड़े शॉट की ज़रूरत भी नहीं है, जानती है सतीश। मेरे ख्याल में इसी मैदान में इन्होंने 100 के ऊपर मैच खेल चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कप्तान बनकर खेले हैं इन्होंने, सतीश ने। इस टूर्नामेंट पर इनको खरीदा गया है ऑक्शन पर। अब तैयार है लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट विकी टू जाबिर। जाबी इस गेंद को भी स्वीप किया गया है, वाइड स्मिथ विकेट पर गेंद गए, तब तक 1 रन। 2 रन के लिए तोड़ना चाहते थे लेकिन मना किए, और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 33 ऑन द बोर्ड। 11 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 10 डिलीवरी। 10 गेंदों पर 11 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब तैयार है विकी, सफल गेंदबाज है। कोई भी टीम में मौका मिलते हैं, अपने मौके, अपने योगदान समझते हैं, अपनी जवाबदारी समझते हैं। एक ही घर के 2 खिलाड़ी है, विघ्नेश और विकी। विघ्नेश तो आने वाली मैचों में खेलने के लिए तैयारी कर रही हैं, बाहर है, और विकी तो इस मैच में खेल रही है। अगली गेंद लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट, और इस गेंद को स्विप किया गया हवा पर गेंद, लेकिन कोई फील्डर नीचे नहीं थी, इस वजह से निश्चित रूप में 1 रन के लिए मौका मिले, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस 34 रन, देखिए 3 गेंदे सामना कर चुके हैं और भी 9 गेंदे बचे हैं। 10 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, कोई बड़े स्कोर की जरूरत भी नहीं, यहाँ पर बड़े शॉट की जरूरत नहीं है। जाबिर मौजूद है, बड़े बल्लेबाज है। नॉट सेकंड पर सतीश, बहुत बड़े क्लासिकल बल्लेबाज। दाऊद संगडी काफ़ी कोशिश कर रही है, कप्तान है, पूरी तरह फील्डरों के ऊपर नज़र लगाते हुए आगे पीछे करते हैं। जब लॉन्ग ऑफ के फील्डर को अंदर की तरफ लाए गए हैं, सर्कल के अंदर की तरफ, और थर्डमैन खुद खड़े हैं, पगली स्लिप में फील्डर है, शॉर्ट फाइन लेग में है, और वाइड स्मिथ विकेट है, लॉन्ग ऑन है। अब अगली गेंद उल्टा बल्ले में खेलना चाहा, ओहो, ये देखिए बिल्कुल बड़े मछली अपनी जाल में फंसा दिया गया है। विकी टेक द विकेट, जाबिर डिपार्ट। एमपीएल खुश है, सारी अंडर आर्म खुश है। देखिए उमंगा काफी खुशी नजारा है आज के दिन में। जो भी हो, यहाँ पर विकी प्रायश्चित कर चुके हैं। कुछ देर पहले जाबिर के कैच छोड़े थे इन्होंने, तो मैंने कहा कैच छोड़ो आने की मैच छोड़ो, लेकिन विकी कहा मैंने प्रायश्चित कर चुका हूं, उसी खिलाड़ी को मैंने आउट किए हैं। अब लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है, नए बल्लेबाज है। उल्टा बल्ले में खेलने के प्रयास, यहां पर विकेट कीपर पहुंचते ही गेंद के ऊपर 1 रन तेजी के साथ उड़कर पूरा कर चुके हैं। बाय बाय, विकेट कीपर की गलती है भैया। यहां पर विक्की ने प्रायश्चित किए थे, विकेट हासिल किए थे, डॉट किए थे, लेकिन विकेट कीपर तो नहीं पकड़े हैं। जो भी हो, 1 रन तो दौड़कर पूरा किए, रनों की संख्या बढ़ते हुए 35, लॉस ऑफ 2 विकेट। 9 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 7 डिलीवरी। 7 गेंदों पर 9 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। पहली दिन में 2-3 मैचों में अबव 50 स्कोर बन गई थी, 3-4 मैच में, और उसके बाद पूरी तरह बिलो 50 है। पिच कुरेटर हरीश नल्लिकुंदू T20 बहुत बड़े पिच बनाई है, धन्यवाद देना चाहता हूं। अब अगली गेंद विकी, सतीश AK-47 से निकलता हुआ गोली की तरह गेंद तो सीमा रेखे के बाहर गई है। यह तो शैली है सतीश की, टन टना टन चौका।
अजहर बिच्छू के आगमन हुए हैं। स्वागत करना चाहता हूं अंडर आर्म चैरिटी एसोसिएशन के और एक धन्य व्यक्ति हैं। अंडर आर्म चैरिटी एसोसिएशन के सारी नेताओं ने आज के दिन हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए जिया पैबलिका, हसन पिरला और हनीफ कुन्नी, खलील, अजहर और सत्तार ऑलरेडी मौजूद है, पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अजीज़ मुसोड़ी की आगमन दिख रही है, धन्यवाद देना चाहता हूँ। कबीर भैया वेलकम सर। अंडर आर्म क्रिकेट के सबसे पुराने कमेंट्रेटर यहाँ पर आ चुके हैं, स्वागत करना चाहता हूँ। मुन्ना बुपाई तो ठीक है भाई है, कबीर भाई आ जाइए, तशरीफ रखिए। कबीर भैया बैठिए। जो भी हो बहुत बड़े धन्य व्यक्ति हैं अंडर आर्म क्रिकेट में। एक ज़माने में कबीर भैया के बिना कोई अंडर आर्म क्रिकेट नहीं होते थे। माइक्रोफोन के पीछे कबीर भैया की चेहरा रहते थे। उस ज़माने में कोई सोशल मीडिया नहीं थी कबीर भैया। सोशल मीडिया के बिना बहुत बड़े कमेंट्रेटर के रूप में जाना जाती थी। अब तैयार है 39, 5 रिक्वायर्ड, 6 डिलीवरी, 6 गेंदों पर 5। आखिरी ओवर, अच्छी गेंद खेलने के प्रयास में पैड पर टकराए, तब तक 1 रन के लिए दौड़ा जा रही है और इस 1 रन की मदद से और 4 रन की जरूरत है। 5 गेंदे बचे हैं, 40 लॉस ऑफ 2 विकेट। अब तैयार है, 5 गेंदे बचे हैं, 4 रन की जरूरत है। गेंदबाज है मूसा पठान। मूसा पठान के योगदान दिख रही है हिंदुस्तानी स्कूलन से। मेरे ख्याल में इन्होंने जो बहुत अच्छी गेंदबाज है, ऐसी स्थिति पर ओवर द विकेट और अच्छी गेंद खेला गया है। देखिए बिल्कुल सामने है गेंद, फील्डर की तरफ पहुंचते ही रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज है, क्योंकि रहीम कुंबला और सतीश कुंबला 2 दौड़ने वाले घोड़े हैं मैदान पर। दौड़ने में नंबर 1 है दोनों। अब देखना बाकी है कि वो 40 के खिलाड़ी है रहीम और सतीश, तो जानते हैं बहुत बड़े घोड़ा है दौड़ने में। रनर ऑफ अंडर आर्म क्रिकेट, दौड़ने वाले खिलाड़ी है दोनों। अब अगली गेंद ओवर द विकेट, रहीम उठाकर खेला है, बिल्कुल खाली जगह पर खेलते हुए गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर। टन चौका और इसी के साथ गुड लक पसोड को बहुत बड़े जीत दिलवा कर गई है रहीम और सतीश। धन्यवाद देना चाहता हूं, कंग्रेचुलेशन, गुड लक पसोड, थैंक यू। रॉयल फ्रेंड्स पचलंबारा। आने वाली मैच है हाई फ्लैश दुबई चैंपियन स्पोर्ट्स बंदियोड। 2 टीम के बीच में मुकाबला हो रही है। तब अब वक्त है मैन ऑफ द मैच पुरस्कार की समय है। अब मैन ऑफ द मैच पुरस्कार की तरफ जाना ही होगा। यहाँ पर अतिथि के रूप में कौन आएंगे देखना बाकी, इंतजार कर रही है। अब मैन ऑफ द मैच की तरफ जाएंगे। മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് അണ്ടർ ആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ സന്തത സഹചാരി എബോ 50 കളിക്കാരൻ കൂടിയാണ് ഗുഡ് ലക്ക് പസോട്ടിന്റെ ഹോൾ ഇൻ ഹോളാണ്. അണ്ടർ ആം ക്രിക്കറ്റിൽ എന്നും സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം നാച്ചു പസോട്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ക്യാഷ് അവാർഡും കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അജു പസോട്ട് നൽകുന്ന, ഷാഹുലിന് നൽകുന്ന 500 രൂപ, സതീശന് നാച്ചു പസോട്ട് നൽകുന്ന 500 രൂപ. ഇത് അജുവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ജാസി ഇത് വന്ന് വാങ്ങുക. ഈ 2 ക്യാഷ് അവാർഡും കൂടി നൽകണമെന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മികച്ച ഒരു
ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് ഇന്നും ഇതാ മുറ തെറ്റാതെ തന്നെ ഈ ടൂർണമെന്റിന്റെ ശില്പി എന്ന് തന്നെ പറയാം. അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിനെ എന്നും നെഞ്ചോടടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം MPLന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ഷമീം കൽപ്പാറ അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി തന്നെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി തന്നെ പ്രധാന വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വെൽക്കം ഷമീം കൽപ്പാറ. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ചിലേക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട്. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വേദിയിൽ goes to ബാസിത്തുല്ലാൽ. മിന്നുന്ന ബൗളിംഗ് പ്രകടനം, മിന്നുന്ന ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം, തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാക്കിക്കൊണ്ട് ഗുഡ് ലക്ക് ഷോട്ടിനെ ജയഭേരി മുഴക്കുവാൻ ഒരു വശത്ത് ആ കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താൻ പോലെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നയിക്കുന്ന ജാബിറിന് ഒത്ത സന്തര സഹചാരി ബാസിത്തുല്ലാൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച്. നാച്ചു പസോട്ടിൽ നിന്ന് പഴയകാല കളിക്കാരൻ ഗുഡ് ലക്ക് പസോട്ടിന്റെ ഇന്നും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എബോവ് 50-ൽ. അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് നാച്ചു പസോട്ട്. അതേപോലെ ബാസിത്തുല്ലാൽ. ക്യാഷ് അവാർഡും കൂടിയുണ്ട് സതീഷിന്, ക്യാഷ് അവാർഡുണ്ട് ഷാഹുൽ ഹമീദിന്. ആ രണ്ട് ക്യാഷ് അവാർഡുകളും കൈമാറണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അജു പസോട്ട് നൽകുന്ന ക്യാഷ് അവാർഡ് 500 രൂപ. അതേപോലെ നാച്ചു പസോട്ട് നൽകുന്ന 500 രൂപ. സുകേഷ് മിയാപ്പദവ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരു കാലത്ത് ഒരു ടൂർണമെന്റും അദ്ദേഹം വിട്ടുപോയിരുന്നില്ല. ഏതൊരു ടൂർണമെന്റിന്റെയും ഭാഗമായിരുന്നു സുകേഷ് മിയാപ്പദവ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് വിട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ടും MPL എന്ന അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ വലിയ മേളയിൽ അദ്ദേഹം വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതിൽ അഭിനന്ദനം അർപ്പിക്കുന്നു. ആയുരാരോഗ്യം നേരുകയാണ് സുകേഷിന്. താങ്ക് യു. ഇവിടെ ഇതാ അടുത്തതായി വരുന്നു. ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൽകുക. റഹീം കുമ്പളയുടെ ഒരു 500 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, വീണുപോയിട്ടുണ്ട്. അത് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ആ പാവത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സതീഷ് മുജിങ്കാവിനുള്ള ക്യാഷ് കൊടുത്തില്ല, ജാസിന് കൊടുത്തു. നാച്ചു പസോട് നൽകുന്ന സതീഷിനുള്ള ക്യാഷ് നൽകിയോ? കിട്ടി എന്നറിയിക്കുന്ന റഹീം വളരെ സന്തോഷവനാണ്. സതീഷ് മുജിങ്കാവിനുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ്, അതേപോലെ ഷാഹുൽ ഹമീദിനുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ് അജു പസോട്ട് നൽകുന്ന ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഷാഹുലിനുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അടുത്തായി മത്സരം, വേറൊരു മത്സരം, വേറൊരു കമൻട്രിയേറ്റർ, കാസർഗോഡിൻ്റെ സംഭാവന, അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ സുന്ദരമായ ശബ്ദം, ഡാർവിൻ മൈക്കിൾ വരുന്നു. ആദ്യ പന്ത് തന്നെ നേരെ ലോങ് ഓഫിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ 1 റൺസ്, 2 റൺസ് ഓടുകയാണ്. ഓടി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ ഓവർ ടു ഡാർവിൻ. താങ്ക് യു അബ്ദുറഹ്മാൻ ബേക്കൂർ. 4-ാം ദിവസത്തിൻ്റെ 2ാം മത്സരത്തിലേക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട MPLന്റെ മനോഹരമായ വേദി. സ്ട്രൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഓൺ ദിസ് ഒക്കേഷൻ, സ്ട്രൈറ്റ് ഇൻ ടു ദി എൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫീൽഡ്. തച്ചി, ദ മാൻ മേക്സ് നോ മിസ്റ്റേക്സ്. തച്ചുടക്കാൻ ശ്രമിച്ച അബിയെ തച്ചി പിടികൂടുന്നു. തകർച്ചയോടുകൂടി ഒരു തുടക്കം ചാമ്പ്യൻസ് സ്പോർട്സ് ബന്ദിയോട്. ആദ്യ 2 പന്തുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ 2 റൺസിന് 1 എന്ന നിലയിൽ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ബന്ദിയോട്. വാട്ട് എ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് ബൈ ദ ബോളർ. A cricket extravaganza we are witnessing here in Mannamkuzhi, MPL 2026 season 10. We are really blessed with the presence of Shamim Zaman Kalpara, the proud sponsor. We are giving extent gratitude and huge shout out to Shamim Zaman Kalpara. Thank you very much for making this event wonderful and colorful with your wonderful support.
What a start for Shakir Jaki. Welcome Hayas to MPL. Joins as a icon player. Hakim was replaced. And Hayas comes in as a new icon for the team. Champion Sports, Bandiod, and straight away off the mark with that single. 3 runs on card in first 3 balls. Super piece of starting proceedings. On the other side, and lovely delivery, nicely. Oh, directed. Oh man, what a cunning accuracy from Bala. Ichilangodi, beauty looks to be. Outstanding fielding effort. Satar there and Bala there. Aggressive fielders. They were into the short cover and mid of region. Such an eccentric vibe here in this starting session. Jackie once again, beautiful way. The man trying to execute a rolling delivery, but this time it is perfectly land right on the channel. Just allowed a travel for the batters in the form of bye. Perfectly coordinating over this, turning out to be 5 runs for the loss of 1 and moving to the last ball of the over number 1. Beauty that generate on the track. Fantastic over comes to an end from Shakir Jaki, the icon player from High Flyers Dubai. Started the bowling operation in style with the icon player. 5 for 1 after 1. A discussion in the middle before starting for the second over. First over done fantabulous way by Shakir Jaki, the top class all-rounder cricketer. He's having his best level form in consecutive years in Mangalore stage. And here it is, the man, it just showcases brilliant for the team High Flyers Dubai. For this prestigious, most prestigious cricket carnival in Andhram cricket. MPL 2026, Mannamkuzhi Premier League. Rafi Chilangod is coming with the over number 2nd. On the other side, we can see Giri Mujangao and Hayas. The batters are standing there. Both have scored as singles and they were off the mark. But this time, they need to play and build a partnership here. They lost the first wicket and trying for a safe shot. Not gets the right control behind that section. It was perfectly organized delivery from the bowler Rafi Nas. And just allowed a single travel. A steady start by the batters. But effective start that already produced by Jaki, who is always fantabulous in the front line as a batter, as a bowler. The established superstar in Andhram cricket, that is Shakir Jaki. 6 for the loss of 1. Giri Mujangao. The man have a lot of capability to clear the distance in any kind of big stage. Trying to loft over the cover. Lovely. Absolutely a top quality cricketing shot by Giri Mujangao. How well the man plays it over the infield. There was a fielder standing to the short cover, but he lofted and lifted and placed it over the fielder. That's a quality from Giri Mujangao. Especially just maintaining the timing perfection behind that stroke. That looks fabulous. Absolutely. This kind of shot in the front line, that gives a lot of boost for the player to play a long innings. Champion Sports Bandiod
is looking for a comeback with a champion strike batter, Giri Mujangao. It's just announcing his arrival with that fabulous boundary. Double digit on card with that boundary. And double confident that gets by the team with that boundary. Here is Rafi. Coming again, coming with around the wicket. Tried again through the onside. He was looking for, but this time onto the pads. Superbly delivered. Good comeback by Rafi. He's a confident bowler. Always knows that how to back in the process. We have seen his quality in power plays, in consecutive matches for the team. High flyers. The man is ready to fly high along with high flyers Dubai. Hayas on strike. Everybody eagerly waiting to know the talent and potential of Hayas in Mannamkuzhi. You have seen a lot of cricket of Hayas. A lot of tournament in Karnataka. But this time, as an icon player, newly joined icon player of Champion Sports, Bandiot, there is lot of responsibility and duty upon the shoulder of Hayas for sure. And Giri Mujangao is releasing the pressure from the new icon player with some shot of the authority, maintaining the power play in power pack way. That's always the style of Giri Mujangao. Whenever the stage, whichever the time. That's again drives it. That one beats the fielder, but there is a protection. No protection over there. It was electric shot. Perfectly timed it once again. Fumbles indoors. Infield we have seen a fielder. Outfield it was a clean protection, but both of the fielders made a mistakes that produced a boundary. Important boundary for Giri Mujangao. The man who touches two shots, two attacking shot that turned into a result in goal for the team champions. Champion Sports Bandiot, 16 for 1. Moving to the last ball of the power play. Rhythm is bringing back. Momentum shifting time this is. And we know that Shakir Jackie have one more over left. That looks to be a confident one. That looks to be a game-changing one. Believes by the camp of high flyers Dubai. But this time, Giri Mujangao is treating with some boundaries. Such a batter. Such a caliber of a product. Nicely ball. Right on the money was tried. Oh, this time. Beautifully passed. There will be a leg by signal. Anyway, they get some productive runs in this over. 12 fruitful runs came from this second over. End of 2, 17 for 1. Champion Sports Bandiot. 17 റൺസുകൾ 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ തുടക്കത്തിലെ വീണ വിക്കറ്റ്. But Giri is maintaining the rhythm superbly. 17 for the loss of 1 after 2 overs. Over after over, every player gathered on the middle of the ground and they were discussing the things in consecutive gaps. This will be an important time. There is a lot of choices in bowling option for the team. High flyers Dubai. A lot of quality choices, quality bowlers. Two overs done, 17 for 1. Here comes Nasir Arimala. Captain is ready to shuffle the bowlers. Tachi is just shuffling his resources in the front line. You have seen a brilliant over from Jackie, but Captain decided to keep Jackie towards the end. Maybe a good tactics, but Giri in right on top of his form. Here is Nasir Arimala.
coming with over the wicket in front of the right-hand batter, Giri Mujengav. It was phenomenal from the other end. But in these evening conditions, the northern end will be. Oh man, what a beauty! Absolutely getting a big fish in the nets. Fantastic delivery from Nasir Arimala. That brings an informed weapon. Complete silence, pin drop silence in the camp of Champion Sports. What a way to announce his arrival by Nasir Arimala in this 4th day of Mega Cricket Carnival. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വെടിപൊട്ടിക്കുന്നു നാസിർ അരിമല. Wicket number 2 down, 17 for 2, Champion Sports Bandiod. In at number 4, Ashwit Kasargod joins a very matured all-rounder cricketer in recent years, and who can lift the game high and handsome way. The player who have a lot of potential. A complete all-round package from Champion Sports Bandiod. That is Ashwit Kasargod. Joins along with Hayas. Hayas is staying on other end as a stand-byer in a silent way so far, watching all the actions happening on the other side. We have seen a crackers from Giri Mujengav. But Nasir was start phenomenal way. It just deposit in the right channel and produce the wicket. Little bit misunderstanding over there. We have seen in the first delivery. The calculation went wrong from the batter. And you miss high hit type of a delivery by Nasir Arimala that produce important breakthrough. The captain's decision got right. Because Nasir Arimala, he brings Nasir Arimala this time. What a fabulous way, switches the place and fantastic way finds a boundary. That showcasing his quality. Hayas, you beauty. How is Hayas gone for a boundary for 4. Player from Mannamkuzhi comes and announcing its quality of a stroke. Right hander suddenly turn as a left hander and makes and produce a boundary in style. Such a quality. 22 for 2. Game is hitting back. Now trying to place that one. Easily the bat is moving between the wickets. This is a perfect plan from Nasir Arimala. The man keeps the delivery a little bit away from the arc of the batter. Previous delivery, he was going for a reverse stroke, but a fielder plays in wide is third man. And the man who just keeps the line of the delivery outside of the off stump. That's a brilliant tactics. Now Ashwin trying for a lofted shot, but not gets a connection behind that stroke in proper way. Just moving between the wickets. Intention is good from the batters at this stage. They lost 2 wickets, but they were trying for some attacking shots. Hayas is playing a gem of an innings, I can say, in the top of the order, watchfully giving the treatment. Oh, that is juicy type of a delivery, but there is a fielder who makes no mistakes. Big wicket in the junction of the innings. Hayas Ennam is going back. What a surgical double strike in this over by Nasir Arimala, who produced another wicket, who produced another breakthrough. High flyers hitting back in the channel with another magnificent wicket of Hayas. Icon player is going straight away, whacking back to the pavilion. Wicket number 3 down, 24 for the loss of 3 after 3. Successful over comes to an end from Nasir Arimala. ഇരുപത്തിനാലിന് 3, 24 for the loss of 3 after 3. Now the captain thinks for high flyers Dubai, it's a time to tightening the screws with more powerful. That's why the captain decided to go with Shakir Jaki is a key weapon.
Santosh Bela joins as a new batter along with Ashwit Kasaragod. Little bit tough time for the batters. Half stage looks to be 24. Not a bad score. But they lost 3 wickets in the front line. Jackie comes with a beauty of a delivery. Nicely. Ankles on the pads and just a bat is crossed between the wicket for single. One more over by Jackie, who has started with a nice way in front of champion Sports Bandiod. Santosh Bela on strike for the first time. The tall man, lot of power, always known as a powerful hitter. But this is the time to make the innings in sense. Nicely lofted. Little bit leading edge looks to be, but is comfortably land over there. There is no problem. Just takes a safe single and off the mark with that single by Santosh Bela. Slowly but steadily, the innings is setting by Ashwit Kasaragod. And this man is joined. Oh, wow, wonderful athleticism from Is the soil Fahad. unresponsive? Just once. It was an absolutely a masterful performance by the wicketkeeper. Well, Ashwat is need to go back, isn't it? കിനാവുകൾ ചാലിച്ചെഴുതുന്ന പാട്ടുമായി ഹനീഫ് ഉമ്മങ്ങ വീണ്ടും വേദിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കിനാവുകൾ പൂക്കുന്നൊരു ടൂർണമെന്റ്, അതാണ് MPL. പല കിനാവുകൾ 14 ടീമുകളുടെ മനസ്സുകളിൽ അത് വിരിയുമ്പോൾ അവസാനം ഏത് ടീം ഈ കനക കിരീടവുമായി കിനാവ് കണ്ട സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മടങ്ങുമെന്ന ചോദ്യം നിൽക്കുകയാണ്. 26 for 4. Nicely opened the face of the bat and played it to the straight region. Quickly Bala comes and gives it a perfect throw. "27 runs on card." Nicely ball. What a delivery. What a typical Jackie special right on the middle. The man who just giving some breaker for the scorecard of a champion Sports Bandiod with his staggering performance that bringing some defensive mood for the team. Absolute peach of a delivery once again by Jackie Shakir, who just implements such a fabulous way. 2 overs of outstanding spell comes to an end from the masterful all-rounder cricket from Mangalore. End of the over number 4, 27 for 4. 27-4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ബന്ദിയോട്. You are watching the first innings of the second match of this day. 27 runs on card, 27 റൺസുകൾ, 4 വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായ പ്ലാനിംഗ്, കൃത്യമായ ആസൂത്രണം അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ. Jackie leading the attack, and we have seen outstanding 1 over from Nasir Arimala that brings double breakthrough, and that puts the team High Flyers Dubai in the front seat. So far so good for the bowlers, but 2 overs of cricket remaining from this innings. It is the time to step on the gas for the batters.
Naimunu Star and Santosh Bela. Both the batters are in the middle. And here is Bala Ichilangod coming into the attack with the penultimate over of the innings. Nicely directed. It was a slower delivery and played it through the onside region. Watchfully gives the treatment and straight away finds a single easily moving between the wicket by the batters. You have seen consecutive matches, anything above 40-45 will be a challenging score in this Mannamkuzhi track. For this edition of MPL, that gives a lot of authority for the bowlers. You have seen a lot of new face of bowlers from Kasaragod. Trying to high in hard and right in the ends of the field. That produced another wicket. Anjamate wicket nashtapadunnu. Five down, 28. Nicely delivered. Good piece of work once again. Fahad is giving his 100% as a wicket keeper. Diving and stopping. Working fantastic way. Just like a very well-oiled vision. 28 for 5. 9 balls of cricket that left from the innings. Sandhu the batter just lofted that one and there will be a field. Tachi Musodi, the captain, comes and grabs it successfully. Wickets are coming and down in certain interval. It's all working inside of High Flyers Dubai. 28 for 6. Time out the indication we have seen. നോടെല്ലാം സലാം ചൊല്ലി മടക്കുന്ന ബോളേഴ്സ് ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായിയുടെ ഇന്നിംഗ്സിനെ കോരിത്തെരിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടം. 28 for the loss of 6 by champion sports Bandiod. Nizamuttam joins the left hand, the powerful left hand comes down the order. It is exactly the time to showcase your power. That exactly demanding by the team champion sports Bandiod in this stage. Nicely played. That is clever cricket by newly joins batter Nizamuttam, straight away off the mark and takes a single. 29 runs on card and moving to the last ball of the over, number 5. This is also turning out to be a fantabulous over for the bowling side. Bala Ichilangod, who just making some noise, will grab 2 wickets, trying for a reverse stroke.
attempting for a sweep shot in a reverse action, but not gets a connection in proper way. Just for a single, the bat is crossed between the wicket. End of a successful 3 runs over. And he grabs 2 wicket as well. End of 5. 30 runs for the loss of 6. 30 റൺസുകൾ 6 വിക്കറ്റുകൾ. Comes Isham Kannur, the product of IFC, coming with the last over of the innings number 1. Nemo and Nizam, the combo on the other side, and what a beauty of a delivery to start, and this time easily the batter moves between the wicket. Looks to be a little bit tight, but comfortable single taken by the batters. Appeal from the non-strikers, and but not allowed anything. It was completely safe and clear. 31 runs, 5 balls left. .32 runs, and we are running in the final over of the innings number 1. Complete domination we can see. That's a beauty. That's a beauty of a delivery from the bowler Isham. What a wonderful tournament for his. Just showcasing his talent. Such an outstanding bowler. Generating space in consecutive time. Through the onside region, there will be a protection, and Tachi is very quick over there. It will be a chance. Yes, it is. There gets a wicket in form of run out. Such a superb way. Timeout indication once again for the second time of this innings.
Mannamkuzhiyude cricket utsavam, the biggest cricket festival here in Mannamkuzhi. MPL edition 10 is progressing. We have one more guest is coming to this ground. I kindly welcome Khalid Ennam, the proud sponsor of Ennam Mangalore. I kindly welcome you to the stage of Mannamkuzhi Premier League. Welcome Khalid sir. Your presence gives the tournament standard. And thank you for being here. And thank you for making this tournament colorful with your wonderful presence. And down the ground, that is terrific out of the ground for 6 runs. Absolutely picked up the length and treated superbly out of the ground. It is a towering 6. Neimu, such a star in Bandiod and ready to showcase his caliber here in Mannamkuzhi. 39 on card, a ball to go from the innings number 1. Finally gets a wonderful connection. A demand one more from this big weapon. Isham YFC on the other side. Having fantastic 4 deliveries in this front stage. But the 5th one treated and dispatched out of the ground for a super 6 by Neimu New Star. Here comes the last ball. Tried again, trying for a sweep shot, but not gets the connection over there. Fahad is brilliant. A flying Fahad we have seen in so many times in this innings. How well the man making some scenes here for the team. High Flyers Dubai in such a standard way. End of the innings number 1. 40 runs on card. 41 to chase for the team. High Flyers Dubai. Champion Sports Bandiod in the first innings 40. And 41 to chase for High Flyers Dubai. അതുപോലെ അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പിനുള്ള സമയം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ CSE പൈവളിക ഗുഡ് ലക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് പസോട്ട് ഇരു ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. 2 ടീമിൻ്റെയും കളിക്കാർ സൈനപ്പിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയം ആയിരിക്കുന്നു. CSE പൈവളിക ഗുഡ് ലക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ് പസോട്ട്. ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ആവേശം 4ാം ദിനത്തിലേക്ക് കത്തിജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് പടർന്ന് പന്തലിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ വിവിധ വ്യക്തികളാൽ അനുഗ്രഹീതമായ MPLന്റെ വേദി. We have Shamim Zaman Kalpara, the proud sponsor of MPL 2026, and we have Khalid Ennam, the great person from Mangalore, the sponsor of Ennam Mangalore, and he was joined here. And thank you very much Khalid Ennam and Shamim Zaman Kalpara for being here, and your presence will be setting the standard of the tournament high and handsome. Thank you very much, and it's the time to change the voice. Welcome back, Preetham Kumbala. Yes, thank you, Michael Darwin. Definitely, we have enjoyed by analyzing of the first innings was very superb. And the target is 41 is the target for team like Team High Flyers Dubai. Once again, I would like to welcome all the dignitaries those who presented for this particular day number 4 MPL season 10 2026. We are witnessing the second match of the day number 4 here. That is the match between High Flyers Dubai as well as Champion Sports Bandioda. Definitely we have concluded innings number 1 and moving towards the second innings over here with the total scorecard of 41 is the target for the against team like High Flyers Dubai. Yes, definitely
A very standard tournament we are witnessing in this particular day number 4. The Friday started at 3 o'clock. Finished the first match and moving towards the second match of the day. The openers are from the side of High Flyers, that is Shakir Jaki, as well as Fahad from the side of High Flies Dubai. Yes, have we go. Have we go. The first delivery. Ashwit Kars good. The trump card bowler from the side of Champions Pros taking the right guard over there for the batter Shaki Jaki. First delivery for Shaki this time. Nicely delivery towards the deep fine leg region. Meanwhile, balls goes to the boundary line. Now the first welcome boundary from the side of Shakira. What a connection! What a connection towards the deep square leg region. Perfection with the bat and ball. They started with boundary here from the hands of Shaki Jaki for High Flyers Dubai. What a start! What a magnificent stroke have been placed by Shakir. Robot, the robot of one-time cricket. That is one and only Shakir Jaki. Good start, good start. One side we have the icon from the side of High Flyers. Another one we have Ashwit Kasaragod for the side of Champions Sports. Once again Ashwit Kasaragod to Shaki Jaki. This time there is no connection at all. Meanwhile the pumble by the wicket keeper and goes for the single run here. Definitely in the form of a slag by. Definitely one silly mistakes can lead for the singles as well as couple of runs. That mistake here gave one run here. 5 on the board right now. First over is in progress. 41 is the victory target for team like High Flyers Dubai. A low scoring game we can see in the second match of day number 4. Once again taking the guard up right and up. Over this time for the first time for Fahad. This time nicely swept over the fine leg region. Ball moves to the another one boundary. Have a look at the same stroke towards the deep fine leg region and collected one more boundary for the team. One side Fahad, another one side Shakid. Same stroke from the both the batters. What a match. What a start from the hands of High Flyers Dubai. That is what they are doing in the beginning stage of over number 1 here. Two tall guys, two trump cards, two talented, magnificent batter from the side of High Flyers. Doing perfect job in the starting of over number 1. Once again Ashwita to forward this time for delivery of first over here. Nicely swept, slightly adds to the bat, moves, goes to the covers and taken comfortable single here. One more addition to the scorecard, 10 on the board after completion of 4 deliveries. Last 2 more delivery left in this particular over number 1. Ashwita once again for the icon man from the side of High Flyers Jaki Shakir. Here the single hand sweep for the fine leg. Once again boundary into the over the region there. One more four addition to the scorecard. Have a look at that. Have a look at the single hand connection with the ball and bat was perfectly placed by Shaki Jaki. That is the magnificent stroke we can see, particularly from Shakir here. Have a look at the connection straight away, placing the delivery to the deep fine leg region where there is no fielder fix from the side of Champion Sports here. What an expensive over in the beginning of over number 1 here. Once again Shakira. Once again sweep toward the fine leg this time. Inside the 30-yard circle, fielder fixed perfectly, just left 1 run. The addition of scorecard 15 on the board after completion of over number 1. Very good start from we can see from the batter here. Fahad as well as Shakir have did perfect role. 3 boundaries have come in this particular over number 1. This might be a bit expensive or when we compare to the side of Champions Pros, they have given low target of 41. Now already the scorecard is 15 on the board. Loss of no wickets over here. Yes, here we can see the fielders fixed in such a different positions. Getting into the 30-yard circle, the fielder fixed in the mid-off region. Short mid-wicket, short cover point.
A deep third man region. Long on, long off. Have a look at the positioning of fielding here. Short third man, short fine leg behind the wicket keeper. Definitely very good fielding position we can see from the fielder. Yes, I would like to call Farooq from CSC. Please come immediately to signing point. Yes, once again our reverse sweep. They remain while very fixing in the fielding mark. Just left single run. One more addition to the scorecard here. 16 on the board. The new man enter with the bowling mark. Captain bring Hayas into the attacking over number 2. Definitely 16 on the board. Very good start we can see from High Flyers Dubai this time. Nicely delivered. A big bumble with the wicket keeper. Meanwhile, there is chance of run out. Very quickness. A lazy running by Fahad we can see. That would have been a danger for the man of Fahad, but unfortunately the ball lands safely. There is no damage from the side of High Flyers. Once again, Hayas to Shakir Jaki going for the sweep. Meanwhile, there is no perfection with the bat. Satisfied with the single here. One more addition to the scorecard. Have a look at the delivery. The Hayas icon man from the side of Champion Sports. He knows that what is the ability of Shakir Jaki. Meanwhile, using perfect deliveries in front of Shakir and restricting the batsman to go for big shot here. Once again, nice drive to the deep onside region and taken comfortable single. Just rotating the strike. Very good comeback we can see from the side of Champion Sports. The icon came into the attacking over number 2. Hayas doing perfect job in the particular over number 2. Once again, for Shakir Jaki. Hayas taking the guard off right and over the stumps for Shakir. This time goes for big shot. Ups in the air. And this might going for the maximum. What a night. Maximum from the hands of Shakir. Shakir Jaki is on fire right now. What a connection between ball and bat was perfectly placed towards the deep onside region. It is out of the park. Out of the pavilion. What a night. What a maximum from the hands of Shakir Jaki. The scorecard jumped towards 25 on the board. What a batting we can witness by this particular man, the tall guy, the robot of underarm cricket. That is one and only Shakir Jaki for you. Another one. Huge stroke. This time one bounce into the boundary line. What a magnificent batting from the side of Shakir. One bounce into the boundary. 4 more addition to the scorecard after completion of music is enjoying by the owners of High Flyers. We can see Mr. Hassan Pella is enjoying over there in the dugout. Definitely that which gives happiness for them because just after completion of over number 2, the scorecard is 29 on the board. What a magnificent batting we can see from the openers from the side of High Flyers. Jaki, Shakir doing fabulous job over here in the batting marker. What a good start. For the team like High Flyers. 41, this lowest score. They are going to target. They are going to reach in this particular match between those teams. What a good start we can see. This time Captain Giri Mujingawa comes into attack, taking responsibility to himself. This time straight away into the stakes. Have a look at that. Belts have been fallen. That is the accuracy towards the stick was perfectly from the captain's hand. Girish have taken responsibility to lead his team in this particular over number 3. Had placed first delivery, first wicket for Girish. Now the first man from the side of High Flyers walking back to the dugout. Fahad departed.
Captain brings Tachi Musori here. Dangerous man from the side of High Flyers Dubai. Definitely it is one of the very good combination for Shakir Jackie. Both are very well-known batter in the under-arm cricket. And of the captain himself trying to get his team into the track by taking first wicket in the first delivery of third over. Fahad walks back to the dugout. This time once again second delivery of from the side of Girish. This time slightly away from the off-stump region. Raised a hand and given wide here. One more score added to the scorecard in the form of extra. Third over is in progress right now. Tachi Musori once again this time away from the leg stump region. One more addition, consecutive extras. Definitely that makes big damage for the fielding mark over here. But just 41 is the target. Now 31 on the board after completion of 2.1 delivered. Nicely deliveries towards the cover point region. Taken comfortable single here. Yes, Tachi knows that. Another one side, the trump card icon man. The robot of under-arm cricket. Shakir Jackie is present. So no need to go for big shot. Just taking singles and giving strike to Shakir Jackie is more than enough to get the score. That is what he's doing over here. Once again, Shakir goes for single hand, but there is no chance. Once again extra. 1+1, 2-run addition to the scorecard. The captain is missed completely his line and lands towards stick. We have seen 3 wides, 3 extras from Giri Muchingkau. This time appeal, finger raised. Another one wicket for Girish Muchingkau. Captain takes a second wicket from the side of high players. This time Tachi departs. Yes, the next match between good luck pursuit takes CSC Paivaliki. Captains of both the teams, please report for the tossing of upcoming match. That is good luck pursuit as well as CSC Paivaliki. What in a good bowling from Greece. The captain came into attacking over number 3, but a bit of pumble in the middle by Greece. Have left 3 consecutive extras, but he recovered perfectly here. Nicely driven towards the shot onside region and taken comfortable single. Yes, the batsman is doing perfect job giving strike to Zakir Shaki. Already we have seen 3 boundaries, 1 maximum from the hands of Shakir, that which takes the scorecard of 35 on the board. So far Girish so well here. Looking for the big shot this time, single, and there is a chance for catch. And this time bumble from the fielder once again. Going for the couple of from. Have a look at the collection by Shakir. Sweeping the shot in a single hand. The power was not good enough. A fielder rushed towards the catch, but unfortunately he couldn't able to control that one. Meanwhile, one more live for Shakir Jackie. What a fabulous innings you have built over here in this particular situation. Yes, once again they are driving towards a deep fine leg region and comfortable taken single. Yes, definitely he's a one-handed batsman. He no need 2 hands. He can drive, he can blast maximums, boundaries in a single hand. That is what robot works here in this particular situation. The robot of under-arm cricket. One and only, that is Shakir Jackie. What an innings we are witnessing in this particular over. Number 3 is completed. The scorecard is 38 on the board. A loss of 2 wickets. Definitely high flyers are driving on the seat right now. ഉപദേശം കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞ സാറേ, പക്ഷെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. നിനക്ക് കേരളത്തിലെ പിള്ളേരെ അറിയില്ല. Definitely enjoying music, and this gives
Very good energy for the players, very good energy for the managers, coach and owners of both the teams. In between, our music is definitely makes very good changes in the minds of the people. Once again, moving towards the match here. Shakir Jackie looking for the big shot in this reverse sweep, but this time directly into the pads of the batter. Meanwhile, one more addition in the form of leg by 39 on the board. Fourth over is in progress. The captain brings back Hayaz into the attacking over number 4. Yes, the icon man Hayaz is up. There is a catch call and very good effort. Very good effort from the fine leg fielder. But Nizam couldn't able to collect that one. One more live for the batter here for Nasir Arimala have got one more live. What an dive have been taken by Nizamutam. This time there is going for a reverse sweep. There is no chance for the batter Shakir Jackie to connect the ball perfectly. Meanwhile, one more dotted delivery here in this particular over number 4. Just one run is required to win the victory over here in front of champions. There's Sam lofted nicely. What an innings comes to an end. A boundary over here. This is a victory. A victory shot from the side of Shakir Jackie. What an innings you have been witnessed over here in this particular match number 2. Brilliant performance we can see from Shakir Jackie, the robot of Anjram cricketer. Congratulations team High Flyers Dubai for your fabulous win against champion sports. What a valuable performance. What a beautiful performance he has showcased for a team High Flyers Dubai. 5 boundaries, 1 maximum for his personal account. Yes, I'd like to call Mr. Muhammad Manikot offering 2,000 cash award for Shakir Jackie for his brilliant performance in the last previous match against Champion Sports. What an innings he have built in this last match. 5 boundaries as well as 1 maximum he have lofted for his team, and he finished the match with a style. Single-handed man lofted in the ground and got the victory for a team like Team High Flyers Dubai. That is what we are waiting for Shakir Jackie for the presentation box. Yes, we have dignitary Ami Paivaliki. Yes, Ami Paivaliki is presenting Man of the Match award for Shakir Jackie for his brilliant performance in the last previous match against Champion Sports. What an innings. And cash award also presented for Shakir Jackie. I'd like to call Mr. Muhammad Manikot, sir. Please come forward
to the presentation box to hand over your cash award of 2,000 rupees. Mr. Mohammad Manikod welcomes you, sir. Shaki Jackie deserves this for his valuable performance. Yes, I would like to call Mr. Mohammad Manikod, sir. Please be present in the presentation box to hand over a cash award for Shakir Jackie. Yes, definitely this have gives goosebumps. This have gives support. This have gives energy for the batter performer. That when the people giving such a kind of presentation for the good performance, definitely you deserve Shakir Jackie for the last match. Now the changes in microphone. I would like to call Mr. Rahman Abdul Rahman Jibekur for upcoming match. Thank you. थैंक यू डीजे, थैंक यू प्रीतम कुंबला। आज के दिन के तीसरी मैच यहाँ पर शुरुआती हो रही है। शानदार मैन ऑफ द मैच पुरस्कार के बाद इस तीसरी मैच के लिए वापस जाना होगा और हमारे साथ आगमन हुए हैं इस प्रतियोगिता के लिए आज के दिन हारिस कन्नूर, YFC कन्नूर के मालिक भी हैं, आ चुके हैं। उनको स्वागत करना चाहता हूं। और इसी तरह बहुत धन्य व्यक्तियों ने यहाँ पर अब तक हमारे साथ मुलाकात की है। धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी धन्य व्यक्तियों को। अब तैयार हैं अम्मी पैवलिका के आगमन हुए हैं। अम्मी पैवलिका को भी इस प्रतियोगिता के लिए स्वागत करना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत योगदान अंडरआर्म क्रिकेट के लिए देने वाली हैं और उनके अब नए मैच गुड लक पसूट वर्सेस CSC पैवलिका और अचात्मक तरीके के साथ खेला गया है। रियाज यन्नम ते आरंभिक बल्लेबाज और चम्मू अरिमला आरंभिक बल्लेबाज के रूप में। पहली गेंद को सामना किए थे रियाज यन्नम, अंडरआर्म क्रिकेट के बहुत खूबसूरत जो गेंदबाज हैं और ऑलराउंडर हैं, बहुत खूबसूरत ऑलराउंडर के रूप में जाना जाती है। अब तैयार हैं दूसरी गेंद लेकर लंबे कदमों के साथ जाविद और इस गेंद को उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन इलाके पर गेंद जाते हुए। तब तक के फील्डर ने आकर गेंद को रोका गया है। तब तक 1 रन और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 2 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार जाबीर रियाज एनम के लिए दूर वाली 400 विकेट बाहर के कमरोडन से अच्छी गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारा लगकर गेंद तो तैरमैन पर गई है। तब तक हल्के हवाज भी सुने हैं क्योंकि कुछ ही क्षण तक कुछ टाइम तक हवा पर रह गई थी गेंद। बिल्कुल पीछे हटकर खड़े हुए थे बल्लेबाज फील्डर ने, इस वजह से कोई मौका नहीं मिले। 3 गेंदों पर 3 रन। बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बैटिंग और फील्डिंग सबसे अच्छे मैच के शुरुआती हो रही है। 3 गेंदे फेंक चुके हैं, 3 रन। अब अगली गेंद अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट देख रही हैं आप, MPL सीजन 10वीं आज के दिन के तीसरे मैच। अब अगली गेंद ओवर द विकेट, उल्टा बल्ले में खेलना चाहा, अपील की है और इसी के साथ चेम्मो आरिमाला डिबार्श।
फिर एक बार तैयार, विकेट चटकाने के बाद अब काफी आत्मविश्वास बढ़ गई है मेरे ख्याल में गेंदबाज के। अब तो नए खिलाड़ी आए हैं, अक्षय पैवलिका ओवर द विकेट। अक्षय, इस गेंद को स्वीप किया गया है, तब तक फील्डर मौजूद थे, हाथ से फिसल गई गेंद, तब तक 1 रन वाइड के इशारा किए हैं। स्वीप करने के लिए कोशिश किए थे लेकिन कामयाब नहीं हुए हैं, तब तक गेंद तो लेग स्टंप के काफी बाहर गए थे। वाइड +1, रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 5 ऑन द बोर्ड। 5 रन खाते पर मात्र एक विकेट पतन हुए हैं। चम्मू अरिमला स्फोटक खिलाड़ी के नुकसान हुए हैं। पहली बार है एक टीम टॉस जीते पश्चात पहली बल्लेबाजी करते हुए देख रही है। ये तो बहुत बड़े विशेषता है इस एमपीएल के। अब अगली गेंद ओवर द विकेट जाबिर, अच्छी गेंद उठा कर खेला है, जगह बनाए, कवर क्षेत्र पर गेंद तेज रफ्तार से जाते हुए, फील्डर पीछे है यहां पर। हो फील्डर तू जाकर सीमा रेखा के बाहर गई, गेंद तू अंदर की तरफ बच गई। इसको कहते हैं कि पूरी तरह मेहनती वाली खिलाड़ी है। वाह भाई वाह, क्या नजारा थी। देखिए ये देखिए, रोकने के लिए कोशिश किए, अपने आप को संभाल नहीं पाए, मैदान से बाहर जाकर फील्डर गिरे हैं, गेंद अंदर की तरफ घुस गई। रेफाई, कितने साल हुए इन्होंने खेल रही है। अब अगले गेंद ओवर द विकेट, और इस गेंद को स्वीप किए हैं, फील्डर मौजूद है, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाया, बाएं हाथ में गेंद को वापस दिए, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 100, टोटल स्कोर इज 9 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। खूबसूरत ड्राइव कहते हैं, फील्डिंग में जितने भी तारीफ करूं उतना कम होगा। रिफाई मंजेश्वर, कहीं बार इनको जो बेस्ट फील्डर के रूप में चुना गया था इसी मैदान पे बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता में, बहुत बड़े खिलाड़ी भी हैं। अब तैयार हैं दूसरी ओवर फेंकने के लिए, नए खिलाड़ी के आगमन हो रही हैं। तब स्ट्राइक पर मौजूद है अक्षय, नो स्ट्राइक पर रियाज यन्नम। सबसे अच्छे टीमों से 2 टीम आमने सामने खेल रही है। गुड लक पुसोट अब तक हार नहीं माने हैं। रहीम कुंबला की आगमन दिख रही है हिंदुस्तानी स्कूलन से, छोटे से रनअप के साथ जमीन पर भारी भारी पर टपकाने के बाद ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए चाहते हैं अक्षय के लिए। और लेग स्टंप पर बीट हुई, बहुत अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी। खेलने के प्रयास में अक्षय ने वहीं पर गिर पड़े हैं। कोई खतरा तो नहीं है, रन भी नहीं है यहाँ पर, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। रनों की संख्या अभी भी 9 पर है। अब अगली गेंद दूर वाली चोट से रहीम कुंबला, हिंदुस्तानी स्कूलन से जमीन पर भारी भारी पर टपकाने के बाद अंपायर को क्रॉस कहते हुए तैयार है अक्षय के लिए। अक्षय, ओ अच्छी शॉट, मिड विकेट पर खेला गया है, तब तक ही 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 10 ऑन द बोर्ड। मात्र 1 विकेट गवा दिया गया है। बी पुल के 12वां मैच यहां पर खेला जा रही है। टोटल 21वां मैच, 22वां मैच यहां पर खेला जा रही है। तीसरी मैच 21वां मैच खेला जा रही है। अब अगली गेंद तैयार है रहीम कुंबला, उनके सामने रियाज नम, पावर प्ले चालू, ओवर द विकेट। व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए डिलीवरी। देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी करते हुए रहीम कुंबला ने अपनी योगदान तो पिछले 1-2 साल से देख रहा हूं, जो पहली खाली फील्डर के रूप में योगदान दिए थे अंडरआर्म क्रिकेट में रहीम कुंबला, पूरी तरह मैच्योरिटी बन गई है, पूरी तरह ऑलराउंडर बन गई है। गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, ओवर द विकेट। फिर एक बार लेग स्टंप के बाहर फील्डर मौजूद, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाए, थ्रो किए, तब तक अंपायर का इशारा है वाइड और 1 बाई। 2 रन तो फ्री में मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 12 ऑन द बोर्ड, 12 रन। अब अगली गेंद लेकर तैयार है
लंबे कदमों के सहारा नहीं लेते हैं, बिल्कुल छोटे कदमों के सहारा लेते हैं हिंदुस्तानी स्कूल एंड से जमीन पर टपकाने के बाद। और इस गेंद दे देखिए कितनी शानदार शॉट, ब्यूटीफुल कवर ड्राइव, फील्डर मौजूद थे, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाए, तब तक का दूसरी रन पूरा कर चुके हैं। तीसरी के लिए कोशिश किए थे लेकिन अक्षय तो तैयार नहीं थे, ना खुश है अक्षय से रिया से नम। 2 रन के सहारे के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 14 ऑन द बोर्ड, 14 रन। बहुत अच्छी तरह जा रही है CSC पैवली का, अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे पुराने क्लबों से एक है CSC पैवली का, बहुत खूबसूरत योगदान देते हैं। अब अगली गेंद ओवर द विकेट अंपायर को गोर्स करते हुए अक्षय इस गेंद को ड्राइव किए हैं मिड ऑफ सर्कल के अंदर फील्डर, लेकिन 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा कर चुके हैं और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 15 ऑन द बोर्ड, 15 रन। मात्र 1 विकेट गवा दिए हैं जम्मू मला की। अब अगली गेंद लंबे कदमों के सहारा तो नहीं लेते, छोटे कदमों के सहारा, फिर भी देखिए गेंद कितने अच्छे फेंकते हैं जमीन पर बारी बारी पर टपकाने के बाद ओवर द विकेट। अच्छी गेंद फ्लिप किए हैं, गेंद को शॉट खेले हैं, वाइड मिड विकेट फील्डर मौजूद थे सर्कल के अंदर, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाया रिफाई ने। तब तक ओवर की समाप्ति 16 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर। अच्छी गेंदबाजी के मजा रखी है गुडलक पसूट के गेंदबाजों ने। गुडलक पसूट अब तक हार नहीं माने, जीत कर आगे बढ़ रही है। 3 मैच खेल चुके हैं, चौथी मैच यहाँ पर खेल रही है। CSC पैवली का तो 3 मैचों में 1.5 मैच जीते हैं, एक तो टाई हुए थे, एक तो जीते थे, एक तो हार गए थे। अब देखना बाकी है, इस मैच में कम बैक करना बिल्कुल जरूरी है CSC पैवली को, और इसी तरह आगे बढ़ने के लिए जीत अनिवार्य है यहाँ पर गुडलक पसूट को। दिन बदल गई, पहली दिन खेले थे 3 में 3 जीते थे, आज के दिन पहली मैच जीत चुके हैं, 2 में 2 जीत कर गए, तीसरी मैच भी जीत चुके हैं आज के दिन। अब तो चौथी मैच अब खेल रही हैं, पहले दिन तो 2 मैच खेले गए थे, आज भी अच्छी दिन है गुडलक पसूट के लिए। CSC पैवली के लिए देखना बाकी है कि आज के दिन कैसे है। नए गेंदबाज के आगमन हुए हैं, न्यूमैन जाबी। जाबिर कंटिन्यू जारी रखने के लिए ओवर द विकेट, और इस गेंद को स्विप किया गया है, गेंद तो जा रही है स्क्वायर लेग फील्डर की तरफ, तेजी के साथ गेंद को उठाए और पास दिए, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 17 ऑन द बोर्ड, 17 रन। स्क्वायर लेग पर, फाइन लेग पर बाउंड्री के करीब रहीम मजिरपल्ला को खड़े किए, रहीम कुंबला को वाइड मिड विकेट पर खड़े किया। 2 रहीम बहुत बड़े दौड़ने वाले फील्डर हैं। अब अगली गेंद ओवर द विकेट जावेद, अक्षय झाड़ू बनाए बल्ले को, लेकिन बल्ले पर नहीं आए गेंद, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। अच्छी गेंद पे के हैं जाबिर, बायर के कमरोडन से अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार है। फिर एक बार दूर वाली चौक से लंबे कदमों के साथ बायर के कमरोडन से अंपायर हरीश पटेल को छोड़ते हुए ओवर द विकेट, और इस गेंद को हवा पर खेला गया है, और इसी के साथ कैच आउट, विकेट नंबर 2 डिपार्ट, अक्षय इज बैक टू द पवेलियन। देखिए कितनी शानदार गेंद थे, इस गेंद को जगह बनाना चाहते थे, स्वीप के सहारा लेना चाहते थे, लेकिन गेंद तो टॉप पे जुए सीधे 3rd मैन सर्किल के अंदर फील्डर थे, उनके हाथ पर गई, तब तक आउट। नए खिलाड़ी रियाज कुंजतुर। डीजे 17 लॉस ऑफ 2 विकेट, नए बल्लेबाज के आगमन दिख रही है, नो
स्टार कुंजतुर की शान और मान, अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे बड़े सितारा हैं कासरगोड जिला की। अब जाबिर के सामना करने के लिए सबसे बड़े अनुभव खिलाड़ी है, अबू 42 के खिलाड़ी है, यानी कि अबू 40 में हमेशा खेलती है, इन्होंने अच्छे खिलाड़ी के रूप में जाना जाती है। और मतलब विकेट और गेंद बढ़िया गेंद थी, लेग स्टंप पर बीट हुई। कितनी शानदार गेंद देखिए, रियाज के लिए पहली गेंद थी। दोनों रियाज मौजूद है, एक दक्षिण कन्नड़ा जिला के रियाज एनम और स्ट्राइक पर रियाज न्यू स्टार। ओवर द विकेट फिर एक बार जाबिर दूर वाली चुप से लंबे कदमों के साथ बायर के कंपर से गेंद लेकर तैयार होते हुए ओवर द विकेट। और इस गेंद को खेलना चाहे, हाँ गेंद तो गई है मिड विकेट पॉइंट पर। तब तक का एक रन लगबाई के इशारा किए। किसी नमूना में भी यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करना है, यहाँ पर स्ट्राइक तो रोटेट किए हैं, एक रन भी मिले हैं। आरिफ के आगमन हो चुके हैं। आरिफ एचन आज चकाचक चिकना बनकर आए हैं। आरिफ एचन रपिचा की मालक, मैनेजिंग डायरेक्टर 20 क्षमा कीजिए 18 for 2, 1 more ball to go। वो तो विकेट जाबिर। रियाज बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को सामना किए। देखिए एक रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखे हैं। ओवर नंबर 3 कंप्लीटेड, स्कोर इज 19 for 2। 2 विकेट नुकसान हुए हैं। अक्षय और चम्मू अरिमला 2 विकेट पतन हुए हैं। आज भी हमेशा की तरह सिद्दीक कडेला हमारे साथ आ चुके हैं। इस एमपीएल को के साथ में मिलकर इन्होंने सिर्फ कडेला नहीं, जो कूपन भी बेचते हैं, इन्होंने बहुत सारे कूपन भेजे हैं। कौन भाग्यशाली है ये देखना बाकी है। 2 व्हीलर कौन लेकर जाएंगे 100 रुपये में। आरिफ कितने खरीदे हैं, कितने टिकट खरीदे हैं? नहीं खरीदे हैं, एक खरीदे तब आपको ही लग जाएंगे, भाग्यशाली आप ही रहेंगे। जो भी हो अब तो तैयार है। शरत इचलंगोट और इस गेंद को खेला गया है, कुछ क्षण तक हवा पर रुक गई थी गेंद, पटने के बाद धीमी हुए थे। इस गेंद के गति तो जल्दी समझ नहीं पाए रियाज एनम ने। एक रन तो निश्चित रूप में मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए 20 ऑन द बोर्ड, 20 रन सीएससी पब्लिका के खाते पर, यानी कि 19 गेंदों पर 20 रन बना लिया गया 2 विकेट के नुकसान पर। शरत इचलंगोट फिर एक बार लंबे कदमों के साथ हिंदुस्तानी स्कूलन से गेंदबाजी करते हुए खूबसूरत योगदान दिए हैं शरत ने। और वह विकेट देखिए, शानदार शैली है, खड़े खड़े जमीन पर टपकाने के बाद अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेग स्टंप पर बीट हुई। तब तक अंपायर ने कहा कि वाइड है, वाइड और एक बाई। इसमें एक प्लस पॉइंट है कि रियाज एनम वापस स्ट्राइक पर आ चुके हैं। 2 रियाज खेल रही है। रियाज न्यू स्टार तो अभी अभी आए हैं, नए खिलाड़ी है। रियाज एनम तो सेटल डाउन बल्लेबाज है। अब देखना बाकी है कि आने वाली गेंदों में कैसे सामना करेंगे। बड़े शॉट तब तक नहीं खेले हैं, गर्जन नहीं देखे इनके बल्ले से। आप देखिए शानदार गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, उठाकर खेलने के प्रयास किए हैं, सही संपर्क तो नहीं हुए, मिड ऑफ पर गेंद गई। तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 23, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब तैयार है शरत रियाज सीनियर के लिए। गेंदबाजी कर रही है शरत लंबे कदमों के साथ हिंदुस्तानी स्कूलन से। अब चमके बिल्कुल बाहर, जाने दिए विकेट कीपर की तरफ, वाइड के इशारा किए शरत के दूसरी वाइड। नाखुश है विकेट कीपर और सारे खिलाड़ी, मनोज भी नाखुश है। देखिए क्या टीम बनाई है, जो रहीम कुंबला, रहीम मजीरपल्ला, मनोज संगड़ी, सतीश मुजिंगांव, बासी तुल्लाल, शरत,
व्हाट अ मैच। सुनील वसंगाड़ी, चौके लगाना मुश्किल है मेरे ख्याल में, क्योंकि वो ऐसे सारे अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे अच्छे फील्डर मौजूद हैं। और इस गेंद को खेला गया है, मिड ऑफ में गेंद गई, तब तक शरत ही फील्ड किए, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 25 क्वार्टर सेंचुरी पर पहुंच चुके हैं। अब तैयार है शरत, लंबे कदमों के साथ हिंदुस्तानी स्कूल से टपकाने की शैली देखिए, खूबसूरत है इनके। ओवर द विकेट, और अच्छी गेंद उठा कर गला है, गेंद तो जा रही है फील्डर की तरफ, एक मात्र 1 रन। इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 26। शरत चौथी ओवर की प्रगति पर गेंदबाजी कर रहे हैं, 4 गेंदें फेंक चुके हैं, 5वें गेंद लेकर तैयार है। 26 ऑन द बोर्ड। रियाज स्ट्राइक पर मौजूद है, रियाज न्यू स्टार, रियाज कुंजतूर। अब विकेट शरत, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, 1-1 रन के लिए चाहते हैं रियाज भी, और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 27, 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तालमेल के साथ दोनों खिलाड़ी खेलते हुए, रियाज यन्नम आरंभिक खिलाड़ी अभी भी मौजूद है। अब अगले गेंद लेकर तैयार है, लंबे कदमों के साथ शरत, शरत टू रियाज यन्नम। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद उठा करके ला है, फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन की तरफ, हल्के से चकमा खाए थे, लेकिन दूसरे के लिए कोई मौका नहीं, रिफाई मंजीशर थी वहां पर फील्डर, मात्र 1 रन, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर, 28 ऑन द बोर्ड, 2 मोर ओवर लेफ्ट, 12 बॉल लेफ्ट। अब कितने तक दरकार रखेंगे ये देखना बाकी है, कितने मंजिल यहां पर खड़े करेंगे देखना बाकी है। 12 गेंद 28 रन अब हो चुके हैं। अब 12 गेंद में मेरे ख्याल में अगर 15-17 रन आ जाए, और इस फैसले कैसे सफल होंगे देखना बाकी है। उनका इरादा ये होगा कि अगर 45+ रन बन जाएं, तब यहां पर सेशन, पहली सेशन के आखिरी वक्त है, तब हवा की रफ्तार कम होते जा रही है, फ्लडलाइट की रोशनी के लिए इंतजार ही कर रही है, तब यहां पर 45+ बहुत अच्छी स्कोर होगा। ये तो कैलकुलेट है जो CSC पे लिखा की। अब तैयार है नए खिलाड़ी सुनील, सुनील वसंगाड़ी। ओवर द विकेट, और इस गेंद को भी रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, टाइगर ऑफ वसंगाड़ी, टाइगर ऑफ अंडरआर्म फील्डर के रूप में मौजूद है। 1 रन, और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 99 ऑन द बोर्ड। 11 गेंदे बचे हैं, सुनील वसंगाड़ी के हाथ में गेंद है, सुनील के 5 गेंदे बचे हैं। स्ट्राइक पर रियाज न्यू स्टार, रियाज कुंजतूर मौजूद है, न्यू स्टार सीनियर, रियाज सीनियर, रियाज जूनियर। अपील, लेकिन जिस अपील को इंकार करते हुए 1 रन तो निश्चित रूप में मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए 30 पर पहुंच चुके हैं, 10 गेंदे बचे हैं, 10 बॉल लेफ्ट, ओनली 30 रन इन स्कोर कार्ड, यानी कि 30 रन है सिर्फ। अब देखना बाकी है कि आने वाली 10 गेंदों में कितना रन बटोर सकते हैं। ओवर द विकेट, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है, गेंद तो ताजी जा रही है, फील्डर, फील्डर तो पीछे जा रही है, कोई मौका नहीं, पहली बाउंड्री, टन 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 चौका। यहां पर कोई मौका नहीं,
गेंद गई सीधा सीधा लॉन्ग ऑन मिड विकेट के ऊपर, टन टना टन छक्का, दर से उमंगा छक्का। देखिए सुनील आ गई तो हाल बदल गई बल्लेबाज की, पूरी तरह आक्रमणकारी बन गई है। अब अगली गेंद ओवर द विकेट, सुनील सुनील टू रियाज, फिर एक बार हवा पर गेंद, कोई मौका नहीं, कोई मौका नहीं, गेंद गई है सीधे सीधे, टन टना टन छक्का। वाह भाई वाह, व्हाट ए कमबैक। कि बस एक ओवर दुनिया बदल सकते हैं तो क्रिकेट के कहावत है। छक्के लगा दिए 2, चौके लगा दिए 1, तब रनों की संख्या रेस के घोड़े के जैसे दौड़ रही है, 46 पर पहुंच चुके हैं। अब हैट्रिक के लिए मौका है, सुनील है सामने, रियाज नम आजकल के हीरो, अंडरआर्म क्रिकेट के आजकल के हीरो ही है रियाज नम। अब अगली गेंद ओवर द विकेट, अच्छी गेंद उठा करके ला है, लेग स्टंप पर थी गेंद, एक रन तो तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है। रहीम कुंबला के हाथ से गलती हुए छक्का खाए, तब तक 2 रन, रनों की संख्या बढ़ते हुए 48 रन, यानी कि 48 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। मैंने कहा था कि 3 ओवर में 19 रन थे, तब इन दोनों ने कुछ ना कुछ समझ कर खेले हैं, क्योंकि मिडिल ओवरों में सिंगल सिंगल डबल के साथ इनिंग्स को आगे बढ़ाए। 5वीं ओवर आ गई है, पूरी तरह आक्रमणकारी बन गई है। टॉस जीते पश्चात पहली बैटिंग करने वाली पहली टीम है एमपीएल में, पहली मैच है एमपीएल में। अब देखिए 48 पर पहुंच चुके हैं गुड लक पसोड को सामना करते हुए। CSC पाइवली का 20 रन के बड़े ओवर, इसलिए कहता है कि बस एक ओवर दुनिया बदल सकते हैं भैया। यहां पर 20 रन के बड़े ओवर मिल गई, पूरी तरह चकाचक बनाई है रियाज ये नम। अब नए ओवर की शुरुआत ही कर रही है, तब गेंदबाज आए हैं बॉलर शाहुल हमीद। अब सेल्फी निकालने के समय आ गए हैं। हमारी रपिचा की मैनेजिंग डायरेक्टर आ गए हैं, हारिफ एचएन, सेल्फी निकाली। अब तैयार है अराउंड द विकेट, पहली गेंद, अच्छी गेंद थी, अच्छी गेंद थी। यहां पर ड्राइव करना चाहते थे, लेकिन बल्ला और गेंद के बीच में कोई संपर्क तो नहीं हुए। रियाज नम कह रहे कि भैया बड़े भाई मुझे मौका दे दे, क्योंकि मैं फॉर्म पर बल्लेबाजी कर रहा हूं, तब मुझे मौका दे दे, ये कह रही है। अब अगली गेंद अराउंड द विकेट, अच्छी गेंद उठा करके ले हैं, लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर गेंद गई, तब तक फील्डर मौजूद थे। 1 रन और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 1 शॉट 50, 49, 4 मोर बॉल लेफ्ट, 4 गेंदे बचे हैं। रियाज आक्रमणकारी मूड पर बल्लेबाजी करते हुए, और टाइम आउट के घंटी बज चुके हैं। एक खिलाड़ी अंदर की तरफ आना चाहिए, घंटी बज चुके हैं अंपायर की तरफ से। शॉट फाइन लेग डीप से अंदर की तरफ आए हैं। अब अगले गेंद लेकर तैयार है, तीसरे गेंद लेकर दूर वाली चौसी अराउंड द विकेट, और उल्टा बल्ले में खेला गया, हवा पर गेंद, और कोई खतरा नहीं। अच्छी गेंद, बहुत खूबसूरत गेंद थे। फिर एक बार अराउंड द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए, अच्छी गेंद उठा कर खेला है, मिड ऑफ सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद थे, उनके हाथ पर गेंद गए, तब तक
एक ही मात्र एक रन, और इस एक रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 50 ऑन द बोर्ड। पचास रन पूरा हो चुके हैं। अब अगली गेंद लेकर तैयार है दूर वाली चोट से अराउंड द विकेट। फिफ्थ टाइम इन दिस ओवर, लेग स्टंप के बाहर और इसी के साथ वाइड और स्टंप आउट। क्रीज से बाहर निकालकर खेलना चाहते थे, तब लेग स्टंप के बाहर वाइड के रूप में गए। विकेट कीपर ने कोई संकोच नहीं किए, इन्होंने रियाज सीनियर को पास भेज दिया गया। कहीं मैच के बाद एबो 50 स्कोर दिख रही है यहाँ पर, 51 ऑन द बोर्ड। कल के दिन 50 के ऊपर रन कम मैच में आए थे। आज के शुरुआत लो स्कोरिंग मैच, कल से भी पहले दिन जो 60 तक गेंदे जो स्कोर कार्ड गए थे, और उसके बाद जो लो स्कोरिंग मैच ही जा रही है। नए बल्लेबाज के आगमन दिख रही है। न्यूमैन शुहाइब पैवली के, आजकल के लोकल हीरो ऑफ पैवली का, क्योंकि बहुत अच्छे खेलते हैं। आजकल बहुत सुनते हैं इनके नाम, गर्जन बहुत है इनके बल्ले की। अब तैयार है बॉलर शाहुला अराउंड द विकेट। अच्छी गेंद उठा कर चला है, गेंद तो लोगों पर गई। तब तक मात्र एक रन, और इस एक रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 52 ऑन द बोर्ड। 52 रन। आखिरी गेंदे बचे हैं। रियाज स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं। बड़े शॉट के लिए बिल्कुल कोशिश तो करेंगे। रियाज की जेसी नंबर 32 है, और उनके इंडिविजुअल स्कोर भी 32 है। अराउंड द विकेट। अच्छी गेंद थी, यहां पर एक रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया। लगवाई है, तब 32 में रह जाएंगे। रियाज एनम, उनके जेसी नंबर 32, उनके इंडिविजुअल स्कोर 32 है। आप देख रही हैं एमपीएल सीजन 10वीं, आज के दिन के तीसरी मैच। अगली मैच के लिए हस्ताक्षर के लिए तैयारी हो जाइए। रॉयल फ्रेंड्स पचिलंबारा, फाल्कन फाइटर्स कदम्बा, दोनों टीम के सदस्यों ने हस्ताक्षर की पुस्तक खुले रखे हैं। तब हमारे सदस्यों को भेजे वहां पर, जो काउंटर पर हस्ताक्षर की काउंटर खुले रख चुके हैं। यहां पर देखिए, आने वाली दिन बहुत बड़े बड़े व्यक्तियों ने, बड़े बड़े सेलिब्रिटियों ने आने वाले हैं इस प्रतियोगिता के लिए। एमपीएल सीजन 10, एमपीएल सीजन 10 में पूरी तरह रंगीन बनाते जा रही है। हर दिन रंगीन बनाते जा रही है। तब देखना होगा कि कौन कौन आने वाले हैं। कल के दिन यहाँ पर रंगीन बनाने के लिए हमारी साथ मौजूद होंगी आजकल के दक्षिण कन्नड़ा जिला के बहुत बड़े कमेंट्रेटर, जूनियर कमेंट्रेटर जसवीत कन्नड़ का, यानी कि आजकल तो कर्नाटक के बहुत बड़े मशहूर हो गए। ये 13 साल के लड़का है जसवीत कन्नड़ का। कल के दिन रंगीन बनाएंगे हमारे यहाँ पर, जो अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में यहाँ पर आ रही है। और इसी तरह कहीं लोग, कहीं धन्य व्यक्तियों ने यहाँ पर आने वाली है। धन्यवाद देना चाहता हूं। And good evening, cricket lovers. Welcome to the second innings of this exciting
Match between CSC Paivaliga versus Good Luck Pasot. We have seen a wonderful run chase by Good Luck Pasot in this afternoon against Royal Friends Pachilambara. They were chased the target of 43 in comfortable way, but this time a little bit better score to chase 54 runs of a target in 36 balls of a innings. Riyaz Ennam, who just coming into the attack straight away, the man who loves to start the bowling operation, setting the right fielders in right position to start the power play in a power pack way. On the other side, the openers Basitulal and Sadish Mujangao. The openers stands for the team. Here we go, the first ball, played it superbly behind the square leg. What an effort over there. But we need to check that one for sure, or what? Perfectly the man maintained. Yes, it is. Have a look at that one in replays. Fantastic Chammu Arimala. See that one. See that one. Oh, Chammu. Well, there is a boundary check. Yes, it was looks to be very tight. ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പ്. ഡഗൌട്ടിൽ കളിക്കുന്ന ടീമിൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സ് അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇരിക്കരുതെന്ന കാര്യം അറിയിക്കുന്നു. ഡഗൌട്ട് ഒന്ന് കളിക്കുന്ന ടീമിൻ്റെ പ്ലേയേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമായി റിസർവ് ചെയ്തതാണ്. അത് പ്ലേയേഴ്സിനായി വിട്ടു നൽകണമെന്ന് കാണികളോടും മറ്റുള്ള ടീമിൻ്റെ കളിക്കാരോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് പച്ചിലമ്പാറ, ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാർ. Fantastic effort we have seen from the batter and the fielder as well. Basitulal, it was played towards the onside region. It was behind the square leg. And what a chase. Absolutely fabulous way the man Chammu was covered some yards and comfortably comes in, but it need to be checked. And 4 runs is the result. When we check that one, TV umpire gives a boundary for 4. Basitulal start in style. But what an effort by Chammu Arimala. That kind of effort will boost the confidence of the bowler for sure. Such a start. Such an excellent way, picks up and gives a treatment by Basit. Absolute peach of a delivery that gone past and looks to be tight, but easily and comfortably the bat is moves between the wicket in form of bye. No connection on this occasion. It was furiously fast delivery from Riyaz Ennam. We have seen a competition that started with Icon versus Icon. Basit Ulal, who generated a boundary to start for the team. Good luck Pasod, but what a way. Gives the replay by Riyaz Ennam. Such a strong all-rounder. Game is straight away on in high voltage way here in Mannamkuzhi. It is Sadish Mujangao on strike. Trying for a safe shot, and this time a clever move looks to be from the batter. Works it single between the wicket by the batters. Safely doing the job that exactly the team demands. Good luck Pasod in the front line. Especially the overs of Riyaz Ennam will be a crucial. It will be going to check. Is it a wide or what? That is going to be checked by TV umpire. Tighty game, an important game for both teams in B cluster of MPL 10. It's a fair delivery. That's a call from TV umpire. Every perfect delivery is that will gives a lot of goosebumps to the camp of defending side.
Nicely, that's an excellent one. Right on target, right on money. Ria Sennam, you beauty. Such a superstar in Andram cricket. Such an impeccable quality with stellar talent. The staggering genius from Mangalore, Ria Sennam, is ready to conquer against the batters of Good Luck Posod here in Mannamkuzhi. 6 runs on card from first 4 balls. Basit is a perfection. 1, 2, 3, 4 bounces and rises away towards the fence into the mid-wicket fence for a boundary for 4. Basit Dullal, the Manu genius. Have a look at the placement by Basit Dullal. The game is completely taking in single-handedly in the front stage by Basit Dullal. In front of Riaz, brings 2 boundary in the first over. That's showcasing the quality of Basit Dullal. Moving to the last ball of the over. He's done well. He's done really well. In swing a one from Riaz Sennam. That's not giving any kind of chance. A tighty but produce 10 runs in the first over of Riaz Sennam. That gives a better start to chase the dreams for the team. Good luck Posod. End of the over. 10 without loss. 10 റൺസുകൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ CSC പൈവളികയ്ക്കെതിരെ Good Luck Posod, they need 44 from 30 balls of next cricket. Interesting game of cricket. Electrifying atmosphere. The galleries are coming and filling slowly. You have seen a completely packed Mannamkuzhi in the last night. And now we are in the 4th day of this mega cricket carnival. Historical tournament. 22 lakhs prize money for the finalist. 2 motorcycles, electronics, smartphones. So many accolades and gifts. First over done, decent way by the batters. 10 runs came from the first over. Here is his Nasaf Pachilambara. Is a dangerous snake from Pachilambara coming into the attack with the over number 2 in power play. Sadish Mujanga on strike. Beauty, bang, bang, bye-bye. Tata, bye-bye. Straight away the man says, hi, hello, I am here. A bold sentence from Nasaf Pachilambara. Completely nashipikunu Nasaf. He is a genius, killer. The word is absolutely shooting. Furiously fast, that removed the fuse from the center. Outstanding piece of a delivery to start by the snake of Pachilambara, Nasaf. Jabi New Boys. Captain comes into the middle. That's high and hot. Oh, Jabi always loved to keep you high, but this time, high voltage, that generating on the other side. Successful 2 deliveries by Nasaf Pachilambara. It looks to be in the slot. That was a juicy type of length. Forcefully gives by Nasaf Pachilambara to bring a trap in front of Jabi New Boys. He just coming to crunches the ball towards the mid-wicket, but goes into the long-on region and comfortable hands of the fielder. Makes a successful story here. A combined effort.
Well. What a return by the team CSC Paivaliga. Hitting hard on the surface and searching and producing the wickets. Nasaf Pachilambara, who just giving and showcasing, presenting his wicket-taking ability of quality. Riya Sennam was treated with 10 runs. Two wickets in 2 balls. What a tremendous start by Nasaf. New batter comes in, Rahim. Nasaf Pachilambara on a hat-trick. What a bowler. A dream start. Shot over the infield, over to the covers, and there will be a protection. Chambu is really cooked, but the batters are really electric between the wicket to complete a couple of runs. Rahim, the man who just started superbly, need to go a long innings. Basitullah standing on the other side. Bowled him! That's a ripper of a delivery. That's a talk casher from Nisaf Pachilambara. He's talking loudly. Oh, can you hear me? Nisaf Pachilambara making a statement in bold Italica. Bang, bang. See that one, ladies and gentlemen. This man is a destroyer. Have a look at the delivery. Oh, rolling rocket. You beauty. You better. You genius. The name Nasaf Pachilambara, you can trust in the trouble time. Absolutely cracker, jacker, poker delivery. Three wickets. He is setting an agenda. He is bringing absolute goosebumps. Bowling at his level best when Nasaf comes with the over. That we are witnessing here in Mannamkuzhi. Absolute superstar in bowling action. Special product for power play. Reverse rock straight away into the hands of the fielder. Shafi there, but no. It will be easy on the other side for the batter. 13 for 3. You can see a one-man show of a bowling performance by Nasaf Pachilambara. Just coming with the last ball of the over, number 2. It was hard to react for the batters on this occasion. Nasaf is hitting the right surface and that producing the breakthrough. Here comes the last ball of the over. Another beauty. What a supercalifragilisticexpialidocious over comes to an end from Nasaf Pachilambara. The man taking this stage into the different planet. Taking Mannamkuzhi out of the earth. Setting it into the moon, into the orbit. What a over. Stellar. Stupendous. End of 2. 13 for 3. Magical bowling, mercurial magical bowling we witnessed. And here it is. Fielders are spreading into the different parts of the ground. Everybody is enjoying. We have seen some quality sixes in the previous innings by Riya Sennam. But we can enjoy the bowling performance as well. Nasaf Pachilambara, the killer of fun drum cricket, is just giving goosebumps. Well. Oh.
നീണ്ട ദിവസങ്ങളിലെ മത്സരം വലിയ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കളിക്കാർ മൈതാനത്ത് പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന MPL Senior Riaz is going out from the field, and we will hope that will be back in soon for the team. CSC Paivalige is a champion bowler, a superstar from Kunjatur. $13 for 3 and moving to the over number 3. Riaz comes nicely separated towards the backward region and takes a single. Easy way, Rahim. Just bringing another single for the team. Good luck, Persaud, but at trouble time over there. Good luck, Persaud. They were in a little bit trouble. Need to play a crisis type of innings. Basitulal standing and keeping the hopes and dreams on the other side. But this over is very crucial. Or trying to loft. It's a beauty once again from Riaz. What a delivery that was, completely beaten. Nothing chance he created to freeze the arm for Basitulal. Another beauty, a terrific delivery from a terrific bowler. Just bringing and presenting its variation in front of such a star, Basitulal, who scored 2 boundaries in the first over, but bowled him, another ripper, banger, boom, blasting onto the wooden sticks. Absolute majestic bowling presentation by CSC Paivalige. It is a quality. Have a look at that one. Oh, you gun. Riaz Ennam, you are really a gun. Russian made AK-47. 4 down, 15 for 4. And Shakespeare. Looks better than Christopher Nolan. Looks better than Srinivasan. Absolutely a majestic bowling script. 5 fabulous deliveries from Riaz Ennam. And here comes the last ball of the over. One more successful one. This is turning out to be for the bowlers of CSC Paivalige. Drives it through the onside region. There will be a rocketed onto the onside region through the ground. Let's produce a boundary for 4. One man who keeps all the rhythm on the other side. End of the over number 3. 20 runs for the loss of 4.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 18 balls of cricket, 34 runs. That's what required by the team. Good luck for Sort. First half of this innings, that was done under superbly by the bowlers, especially Nasaf. The killer was absolutely killed. And he grabs 3 wickets. Here is the young man, Azim Dinar, coming into the action for this action-packed second innings. On the other side, Manoj Hosangadi, Basit Ali. These two need responsible to build and play a long innings for the team. Good luck for Sort. This is very important partnership. This is very important wicket for the team to chase the dreams. 34 from 18. Basitullah already gets a rhythm of strokes that giving a lot of hops. Azim Dinar coming. Sweep shot, that's a perfect coordination. Perfectly directed by Manoj Sangadi, coming back for second, the senior player. It just directed nicely and played for a couple between the wickets. One good partnership, that demanding by Basitullah on the other side. And this is the exact one that believes by the camp of good luck. In a different way, that is a clever movement. Perfectly, watchfully giving the right treatment through the merit of the ball by Manoj Sangadi, and takes a single. Good start for this over by the batting side. Takes a 3-run. Here is Basit on striker's end. The icon player from the team. Good luck for Sort. Premeditated for the reverse stroke by Basit on this occasion. But no chance that given by the bowler. Azim Dinar just working with the perfection. A dot ball in the middle. That gives a lot of confidence to go in the process. 3 balls well passed. Taking there on time. And happy to see that Riaz Kunjatur is back on the field for the team CSC. There will be a wide check going on here. We have Saif Padil as a TV umpire. ആവേശകരമായ ക്രിക്കറ്റ് മണ്ണങ്കുഴി പ്രീമിയർ ലീഗ് അതിൻ്റെ 4ാം ദിനം. ബി ഗ്രൂപ്പിലെ മത്സരങ്ങളുമായി ലീഗ് സ്റ്റേജിലെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ടീമുകൾ കടക്കുമ്പോൾ ആവേശകരമായ പൊരിഞ്ഞ പോരാട്ടത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന മണ്ണങ്കുഴിയുടെ മൺതരികൾ കോരിത്തരിക്കുന്ന പോരാട്ടവുമായി ബി ഗ്രൂപ്പ് അതിൻ്റെ ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടർ സ്റ്റേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഘട്ടം. എ ഗ്രൂപ്പിലെ പിക്ചറുകൾ ഏകദേശം ഒരു ക്ലാരിറ്റി വരുന്നു. ഫെയർ ഡെലിവറി ഈസ് എ കോൾ ഫ്രം ദി TV umpire. That's a beautiful one from Azim Dinar. Keeps it roll and keeps it away from the batter's sack. Azim Dinar is ready to conquer against the batter. Beautiful way the man is produced some excellent deliveries that blocking the chance of the batter. 14 balls, 30 runs required.
Interesting game of cricket you are watching here in Mannamkuzhi. Well ball, very good delivery. Strong appeal from the wicket keeper. Leg by signal received from the center. There will be the batter's cross between the wicket for another time. This is in form of leg by. 25 on card. Moving to the last ball of the over number 4. Things are controlling really good way by the bowling side. They were making it perfectly. Nicely struck. That's an absolute visual treat from this man Basitulal. Such a serious star who just making and changing the complexion of the game. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസിങ്ങിനുള്ള സമയം കൂടിയാണ്. റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് പച്ചിലമ്പാറ, ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാർ. Captains, please report for toss. And now here in this game, 25 required from 12 balls. 2 overs remaining. 25 runs required. നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട 4ാം ദിനം മറ്റൊരു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വം കൂടി ചേരുകയാണ്. MPLന്റെ പ്രധാന വേദിയിലേക്ക്, MPLന്റെ ആവേശത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. HN ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത് നഗറിൻ്റെ അനിശ്ചിതനായ സെക്രട്ടറി KS സത്താർ അവരുടെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി MPLലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Riya's new star is coming into the action with the penultimate over. Nicely played through the onside region by Manoj Sangadi. Takes a single. Oh, there will be a collapse. Little bit confusion there. The fielders comes, joins, and they will produce a second chance for coming back.
1 run converted into 2. A gifted run in the fields. Moves on 31. This is very important phase of this game. Important over of this game. Beautiful one that rests in the hands of the wicket keeper without giving any kind of chance for the batter. Fabulous rolling delivery by Riaz. The legend of Kasaragod and Ram bowling. Riaz is working wonderfully. Nicely open the face of the bat, but not gets a right timing perfection behind that stroke. Just moving between the wicket. First takes a single. It is working wonderfully. Very well controlling the innings by the bowling side. They put a very good target in front of Good Luck Pasot. And they were working CSC, Paivalige. They were working in the field and grabbing success in consecutive time. Surely we can say the second over of Nasaf Pachilambara, that was changes the complete complex of the game. But Basitullah is standing. Basit went for a big shot and through the onside region. Protection in the deep and good piece of work in the deep by the fielder. But easy two between the wicket for the batters of Good Luck Pasot. 8 balls of cricket, 20 runs required. Fabulous game of cricket. Expecting a close encounter. The upcoming 2 deliveries of Riaz New Star will be crucial for the team Good Luck Pasot. Watchfully left, but that is right in the tram line. Absolutely a clinically well perfect delivery from Riaz. Not giving any kind of chance. Just marginally inside from the guideline of the tram line. Fabulous. That comes from experience. That is Riaz Kunjatur. Moving to the last ball. Another beauty. This is such a terrific, fiery, faster delivery from Riaz Kunjatur. He completes the over in style with an absolute majestic way. End of the over, number 5. 35 for the loss of 4. 19 required from the final 6 balls. പത്തൊൻപത് റൺസുകൾ വേണം മത്സര വിജയത്തിലേക്ക്. 6 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വം കൂടി നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. കലീൽ മാസ്റ്റർ എത്തുകയാണ് കുമ്പളയിൽ നിന്നും. അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. കായിക മേഖലയെ അത്രത്തോളം നെഞ്ചിലേറ്റിയ ഒരു പ്രധാന വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ്. കാസർഗോഡിൻ്റെ കായിക വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണായകമായ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കലീൽ മാഷിന് മണ്ണൻകുഴിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. Time out is the call from the umpire. That means one more fielder need to stand inside the ring. And we are moving to the last ball of the innings. Meanwhile, the match. 19 required from 6. CSC won the toss and they elected to bat first earlier. And they put a big score on the board. Now Basit Ali, the man from Ullal, who is the big weapon, who is ready to conquer against Akshay Paivaliga, the final over bowler for the team CSC. Akshay comes and Akshay start as you like. A dot ball to start the proceedings, that giving the things are tighten and tougher to the team Good Luck Pasot. 5 balls of cricket left, 19 required.
Oh, struck that one beautifully, but straight to the field and it goes. Celebration started in the camp of CSC Paivalige. That was a stylish innings of Basitulal comes to an end. Wicket number 5 down, 35 for the loss of 5. 4 പന്തുകൾ അവശേഷിക്കുന്നു ഈ മത്സരത്തിൽ. ആവേശകരമായ MPL-ന്റെ വേദിയിലേക്ക് മറ്റൊരു പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വത്തെ കൂടി ഞങ്ങൾ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. നാസർ ഉപ്പള എന്ന വ്യക്തിത്വത്തിന് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം. തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് MPL-ന്റെ പ്രധാന വേദിയെ ഗംഭീരമാക്കാൻ 4ാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നാസിർ ഉപ്പളയ്ക്ക് ഹൃദയംഗമായ സ്വാഗതം. സാദരം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നാസിർ ഉപ്പള ടു ദ സ്റ്റേജ്. 4 balls, 19 required. High in the sky, high and hard. No, it is in the hands of the same field. Jammu Aribala not make mistakes on this type of occasion. Completely having all the control. Another catching practice for Jammu. Have a look at that one. Easily taken. Another wicket down. 6 wicket down from the side. 35 for 6. Now the game is completely under the custody of CSC Paivalika. New batter joins is Sharath, the bowling all-rounder joins. The man from Ichilangot, but having all the control by Akshay CSC Paivalike. Back-to-back 2 wickets. And Akshay on a hat-trick. Can he get the milestone? The star batting all-rounder is doing a death over for the team. Appeal from the wicket keeper. When past the wicket keeper, there will be the bat is crossed between the wicket in form of a leg by, and make suring the stage for the team CSC Paivalika. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് വിജയിച്ച ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാർ, they were elected to bowl first. Another fantastic delivery. We have witnessed fabulous, magical, mercurial magic of bowling in this second innings from CSC Paivalika. Last ball of the match. Need to load it again. The bat is crossed between the wicket. Every run counts. Wide was the call. That's why Akshay need to load it again. Asking something from the fielders. Big discussion happening in the middle of the ground between umpires and the fielding team CSC. The senior players are joining in the discussion. Finally, it ups to TV umpire. Decision goes upstairs. We need to check that delivery completely.
till the start to the end. Wide was the call. That is the confirmation of a call, but we need after that something happened. It's a run for sure. The confirmation from TV umpire. Manoj already started the run. That's why it will be count for sure. Last ball of the match. Safely the game. Giving a lot of a boost in the run rate as well for the team. CSC Paivalige. A victory plus run rate is a dream. And the team CSC Paivalige having it comfortably, and what a way to close the encounter. Wonderful victory by CSC Paivalige. They were back in the process of MPL season 10. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സമനിലയോടുകൂടി തുടങ്ങിയ ടീം പിന്നീട് വിജയം ഒരു പരാജയം രുചിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും 4ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വിജയവുമായി തിരിച്ചെത്തുകയാണ് CSC Paivalige. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏകപക്ഷീയമായ രീതിയിലേക്ക് എതിരാളികളെ ഒരു വലിയ തോൽവിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ട നസാഫ് പച്ചിലമ്പാറ മത്സരത്തിലെ താരമാവുകയാണ്. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. I kindly requesting Khalil Marsh Kumbala to the presentation podium to give away the player of the match award. And the player of the match award goes to 1 over, only given away 3 runs, and he grabbed important 3 wickets in the front line. Especially batting team, chasing team in a മികച്ചൊരു സ്റ്റാർട്ട് ലഭിച്ച ഘട്ടത്തിൽ 3 വിക്കറ്റുകൾ എടുത്ത നസാഫ് പച്ചിലമ്പാറ player of the match award അർഹനാവുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ റിയാസ് എനം, വെൽക്കം യു ഓൺ ടു ദ പോഡിയം ടു റിസീവ് ദ ക്യാഷ് അവാർഡ് ഫ്രം CSC Paivalige മാനേജ്മെന്റ്. 2 താരങ്ങൾക്കും ക്യാഷ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. നസാഫ് പച്ചിലമ്പാറ റിസീവിംഗ് ദ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് ഫ്രം ഖലീൽ മാസ്റ്റർ. കാസർഗോഡിൻ്റെ കായിക മേഖലയ്ക്ക് നിർണായകമായ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി താരങ്ങളെ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി കൂടിയാണ് ഖലീൽ മാസ്റ്റർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നു നസാഫ് പച്ചിലമ്പാറ, ദ കില്ലർ ഓഫ് അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ 500 ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഫോർ നസാഫ് പച്ചിലമ്പാറ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫേർഡ് ബൈ ദ ടീം ഓഫ് CSC Paivalige. And he is receiving a special gift from MPL. A lot of award, accolades, a big moment. It is a moment to cherish and celebrate. Thank you very much, Khalil Master. And Nasaf is receiving cash prize from CSC Paivalige management. Congratulations for your brilliant performance. And now I welcome the all-rounder who makes the first innings deliciously with his top quality batting performance. We have seen 2 sixes from Riaz, and he receiving the cash prize from CSC Paivalige management. Congratulations Riaz, congratulations Nasaf, and congratulations CSC Paivalige. Better luck next time for the team. Good luck Pasot. That's it from the match. And change in the voice. Pritham Kumbala back. Thank you, Mr. Darwin. We enjoyed a lot last match between those teams.
And we have seen a CSC Paivalike. What a game have been witnessed over here in this last match between those teams. Have a fabulous innings comes to an end over here. And moving towards the new match, the match between Royal Friends Pachalampara takes a Falcon Fighters Kadambar here. Falcon on the toss and elected to field first. The first delivery from the side of Naufal Gori, the icon man from the side of Falcon Fighters here. Taking the guard of right and over the stand for the new man. A very good delivery. Meanwhile, slightly away from the off-stump region. Now one more extra into the card here. Started with the extra. The line was not good enough towards the sticks. Slightly away from the off-stump region that made into the extra in the beginning of over number first. Now once again looking for the big stamp. Big shot, but this time what an effort from the hands of Karthik Kumbale. The short man, the talented player of Andram cricket. Karthik doing very good work in the behind the stumps. What a good start. What a good start from the side of Naufal Gori, the icon. Is doing perfect job in the beginning of over number one here. We have Musa Patan as well as Nizam and the crease. Nizam on the strike and non-strikers, and we have Musa Patan. A very good opening combination from the side of Royal Friends Pachalampara. We have seen last previous match they have played very nicely, have collected total partnership about 29 runs together. And this time the same opening have been introduced from the side of Royal Friends Pachalampara. Once again facing this time looks for the big shot. Meanwhile, Frida fixed perfectly. This is the first wicket. A big wicket. The icon man from the side of Royal Friends Pachalampara walks back to the dugout. What a start. What a start. Beautiful start from the hands of Naufal Gori. The icon have been taken. Icon's wicket on this first over itself. Good start we can see from the side of Falcon Fighters Kadambar. After completion of 3 deliveries have been taken. Two deliveries have been taken. One valuable wicket of icon man of Royal Friends Pachalampara. What a start. What a start from the hands of Naufal Gori. This makes a big damage for Royal Friends Pachalampara in this initial stage of over number one. Yes, now Dawood comes as a one down along with the Musa Patan here, captain. Definitely having that pressure, definitely having that responsibility to lead his team right now, because already one man walked back to the pavilion. Dawood having all the responsibility right now. Nicely flicked towards the short third man region and taking comfortable single here. A nice plan, nice strategy behind Dawood. Just flick the delivery towards the short third man region and taking comfortable single over here. That is what a very good bowling mark we can see from Naufal Gori so far. Did perfect job over here. Looking for the big shot. Nice cover drive towards deep region. Have a look at that. Have a look at the drive from Musa Patan. Back foot towards the cover drive. What a magnificent stroke from the hands of Musa Patan. That leads to the boundary over here. 4 more addition to the scorecard. A very good stroke. Very good stroke. And that leads to the boundary. 4 more addition to the scorecard right now. Definitely Musa as well as Dawood Singari having good understanding between each other. They are very good experienced campaigner of Andram cricket. Definitely they have to do something for their team. Here once again a very good length and line towards the tick was perfectly placed. Meanwhile Karthik have been restricted the ball a very fine way. That is what Karthik is doing a perfect job in the behind the stumps as a wicket keeper here. Once again, now for Gori 2. Musa Patan looks for the big shot. Apps in the air. This time there is no fielder rushing towards the ball. Meanwhile, one bounce
Meanwhile, very good running between the wicket here. Very good quick running between the wicket. We can see the couple of runs adding to the scorecard after completion of. Yes, very good start we can see from the batter as well as bowler. The completion of over number 1. The scorecard is 8 on the board. Loss of 1 wicket here. A very good start we can see from both the marker. Both the teams have been playing balancedly over here. 8 on the board. 1 wicket they have lost. And we have completed 1 over so far. Definitely very good spectators gathering here to watch, to witness this particular match between those teams. We have to witness so many matches in this floodlight day number 4. And now captain brings Shravan into the attacking over number 2. Shravan, one of the kind bowler from the side of Falcon Fighters Kadambar, taking the guard of right over the stumps for Dawood Dosangari, captain into the strike right now. Shravan to captain this time, taking the guard for Robert over the wicket. Nice delivered, nicely delivered. What a delivery from the hands of Shravan here. Accuracy, that accuracy directly went into the hands of Karthik Kumble. There is no chance for the batter. There is no row for the batter. Go for a big shot in that particular delivery. Once again for Dawood here. Looking for the reverse sweep. This time there is no connection. Meanwhile, a ball hitting towards the pad. Yes, definitely ball hitting towards the pad and goes for the single here. One more single addition to the scorecard. 2 beautiful delivery have been placed by Shravan here in this second over. Once again, Shravan facing towards Musa Patana. Second over is in progress. 4 deliveries are remaining in this particular second over here. Looking for the big shot. There is a catch is called. Meanwhile, a very good cover driver. And there is a bit of fumble in the fielding department. That advantage is taken by the batter and completed couple of runs here. Yes, silly mistakes. Small mistake makes big impact in scorecard that we have seen in this last delivery. Nicely flicked the delivery towards the covers region. The fielder couldn't able to collect perfectly. That leads to the couple of runs here. Once again, Shravan to Musa Patan. This time looking for the fine shot in the deep fine leg region. Meanwhile, fielder fixed perfectly. Chimmy Periyadka, the captain of Falcon Fighter, nicely stopped that one. There is no chance for the batters to go for a couple of runs over here. So far, nice over here from the side of Shravan. Let us go for the very good stroke from the hands of Dawood here. Have a look at that fancy stroke. Have a look at the fancy action stroke from the hands of Dawood. Slightly driven towards the deep fine leg region and collected 4 runs here as a boundary. 4 more runs adding to the scorecard. 16 on the board. Loss of 1 wicket. Last deliveries remaining in this particular over number 2. 5 deliveries have been completed. Yes, definitely Dawood is having that confidence. Dawood is having that experience in the under-arm cricket. As a captain, he have to do for his team something over here. Nicely sweep towards the deep region and taking single call for a couple of from there. Is a chance of run out this time. Completed. The throw was not quite good enough towards the wicket keeper's hand. If that throw was good towards the wicket keeper's hand, there will be a big chance for the keeper to take the wicket off batter here. Here completing over number 2. The scorecard is 18 on the board. Loss of 1 wicket. Yes, a very good balancing start from both the teams. That is Falcon Fighters Kadambar as well as Royal Friends Pachilampara. Very talented batters in the middle right now for Royal Friends, because they have that caliber, they have that experience by playing lot of underarm cricket.
throughout the district, not only in the Kasaragod, outside the Kasaragod, like Dakshin Kannada, they are playing for the plenty of years, and that is what they are witnessing over here in this particular tournament of MPL season 10. It is a festival of Ram cricketer and selected Mannamkuzhi Arts and Sports Club presented a beautiful tournament over here under the leadership of Mr. Anif Umanga. Yes, once again moving towards the delivery here, looking for the big shot this time. A very good stroke towards the deep onside reach, and the fielder perfectly collects that. What a collection, what a running collection by the fielder. Not letting the batter to go for a couple of runs, satisfied with single here. That is what quick action in the fielding mark we can see from the side of Falcon Fighters Kadambara. Very good start, very good beginning of third over from the side of Mohammad Ijaz. Comes to an attack with the over number 3 here. Looking for the square reverse sweep. Meanwhile, ball hitting towards the pad in the form of single. And one more added to the scorecard. 20 on the board, loss of 1 wicket. Have a look at the comeback from the bowler direct towards the pad of the batter. There is no connection at all with the bat and ball. Meanwhile, ball hitting towards the bat and going for the single run here. This time, Musa Patan is on striker. Yes, deliberated delivery is not ready in the striker. Musa Patan is not ready on the striker. That goes for deliberated one. Yes, we can see the fielding positions over here. Nicely placed, nice delivery in. Very good comeback in the line and length with the bowling mark from the young man Ijaz for the side of Falcon Fighters Kadambar here. Showing his brilliant performance, showing his very talented performance in the bowling mark here. And this time looking for the big shot, nicely driven to the onside edge. Another one boundary for Musa Patan. Have a look at that, placing the delivery in between the fielders where there is gap or where there is not fielder fixed very perfectly, hitting the ball towards that region and getting the boundary. That is what Musa Patan is doing for the team like friends Pachlampara here. Definitely mind-blowing batting from Musa here. It goes for the big shot this time in the hands of wicket keeper. That is what very good comeback we can see from Ijaz here. So far, 5 deliveries have been completed. 24 on the board. Loss of 1 wicket. 1 more to go in this particular over number 3. This time lofted ups in the air. This is called for the catch. There is a beautiful catch. Beautiful catch, the blow from the hands went, and once again Chemi Pariadka able to control that catch, and this time the big man walks back to the pavilion. Depart, Musa Patan depart from the ground right now. What a catch, onside the deep onside region. Have a collection, have a look at the collection from Chemi Pariadka, who is settled in the deep region. Have a look at that, punched from the hands again, and he controlled himself and taken comfortable catch. Have a look at the replay. Have a look at that fabulous catch from Chami Pariadka. Captain collected perfectly. Second wicket have been fallen from the side of Friends of Pachlampara here. Over number 3 completed. The scorecard is 24 on the board, loss of 2 wickets. Yes, the Fairoz Pachlampara introduced in the side of batting mark here for Royal Friends Pachlampara. The captain brings now Tausi Bakrabail. Tausi Bakrabail came into the attacking over number 4. Captain given responsibility to Tausi here. Brings Tausi into the attacking over number 4 for Davud. Facing the first time, taking the guard off right and round the wicket for the batter here. Very good delivery, goes for the big shot. Meanwhile, there is Apil from the behind the stumps.
But go a ball hitting to the pad and going towards the fine leg region. Meanwhile, collects one single run over here. A very good appeal from short man Karthik Kumble. Doing very good job in the behind the stumps, working perfectly there. There is no connection at all from the batter towards the ball here. Once again for the new man, Fido Pachalampara goes for reverse sweep, nicely flicked towards the deep region and taken comfortable single. That is what Fido Pachalampara has to do, because another one side we have the captain Dawood Sangari. He can go for big maximums in any time of the match. That is what Firo's having, that mentality. Firo's having that strategy to give strike to Dawood Sangari. Yes, this time away from the off stump region. Wide call from official. One more extra adding to the scorecard in the form of wide. Extras definitely have to minimize. Extras definitely makes damage for the team, like Team Falcon Fighters Kadambar. Once again, Tausi Bakrambai taking the guard, and for this time for Dawood, very good. Fine line and length to a stick was perfect. This time Dawood went for the reverse sweep. He couldn't able to judge that particular delivery, who is bowled by Tausi Bakrambai. Meanwhile, that got beaten. Dotted delivery over here. Very good comeback from Tausi. Looking for the big shot. There is no perfection with the bat and ball. Meanwhile, rushing towards the single run. Very good single run. Very good running between the wicket. Very good bowling from the bowlers. And everything is going just perfectly here in this particular MPL Season 10. That is what high voltage tournament of 2026. One and only MPL Season 10. Brilliant match we are coming across in this particular day number 4. 28 on the board after completion of 3.4 deliveries. Once again, Tausi Bakrambai to Firoz Pachalampara. Looking for the big shot. Nicely one to the onside region, and there is 1, 2, 3, 4 into the boundary line. What a night! What a massive stroke! Rocket stroke from the hands of Firoz Pachalampara. Yes, definitely easy ball. How to punish by the batter. That is what here Firoz is doing. The previous delivery that he's witnessed, just taking the single and given strike for Dawood. This time the perfect pitching delivery, lofted nicely towards the onside region for the boundary. Nice delivery, nice connection with the bat, slightly moving towards the fine leg region and completing a single run, going to give a strike for Dawood Sangari. That is what he is doing. Over number 4 completed over here. 33 on the board. Loss of 2 wickets. A very good understanding between each players. That is Dawood Sangari as well as Firoz Pachalampara. Doing very perfect job in the batting mark for the side of Royal Friends Pachalampara so far. Completion of over number 4. The scorecard is 33 on the board. Loss of 2 wickets. A balancing match between those teams. Definitely 2 overs are remaining. A very talented batter is on the strike. Around 15 to 20 runs is more than enough to build a good total target for the against team. Captain is on crease. For the captain, Firoz Pachalampara is supporting from another end. That definitely makes very good partnership between those players. Once again, a captain brings Naufal Gori into the attacking mark here. Nicely delivered. There is a chance of stamping, but meanwhile the batter couldn't come outside the line over here. He fixed inside the line. That is what he knows, that behind the stump the dangerous man is sitting. Karthik Kumble, the short guy, he won't miss any chance. He is one of the lightning striker in the behind the stumps. Yes, once again, now fall this time. Very good delivery. What a piece of delivery from the hands of Naufal Gori. There is no chance. There is no row for the batter to go for a very good stroke here.
Completely dotted one, completely mesmerizing delivery from Naufal Gori. We can see in the over number 5. Two deliveries dotted, nicely flicked towards the fine leg. Meanwhile, fielder rushing towards the ball, taken comfortable collection. Shravan, who is fixed in the fine leg region, and came into the short fine leg region and taken comfortable collection over here. Meanwhile, rotated strike by the batters. One more addition to the scorecard. 34 on the board. Loss of 2 wickets here. Once again, now fall to captain. Taking the guard of right. No, the stamps for the Dawood here. There is not at all perfection with the bat here. Not at all perfection with the bat. We can see the player rushing towards the ball. That is what unity which they have created in between themselves. That what we can witness in particular team like Falcon Fighters. For one ball, each players are rushing. That is what the unity between the people over here they are witnessing over here in this particular match here. Once again, Affal to this time a nice delivery into the sticks. Have a look at the belts have been fallen into the ground. Wooden sticks have been fallen into the ground. One more wicket have been fallen here from the side of Royal Friends Pachalampara. Fairoz walks back to the pavilion. Fairoz innings comes to an end here. Fairoz departed and going to sit in the dugout here. Very disappointed moment for the team like Royal Friends Pachalampara. As I told, captain bring back the Naufal into the attacking over number 5. That is what the strategy plan behind of captain Chemmi Periyarka, well-known, experienced and cricketer. He's having that knowledge, he's having that strategy, he's having that tactics he's using in this particular situation. That is what he brings back Naufal into the attacking over number 5. He did perfect job. He cleared his responsibility and he have taken valuable wicket from the side of Royal Friends Pachalampara. 3 wickets have been fallen, 35 on the board. Last one more delivery left in this particular over number 5. Just left 2 runs. In this particular over. Very good delivery comes to an end here. Over number 5. We are closing 35 on the board. Loss of 3 wicket. What a magnificent, electrifying delivery have been bowled by Naufal Gori in this 5th over. Just left 2 runs and have taken valuable wicket from the side of Royal Friends Pachalampara. Fairoz walks back to the pavilion. Definitely, this is a tremendous over. Comes to an end. That makes a very good advantage for the team like Falcon Fighters. Kadambar here. Last 6 delivery left in front of Dawood Sangadi, the captain of Royal Friends Pachalampara. We know the ability of Dawood Sangadi. The favorite ground of Dawood. He knows the each and every corner of the ground. He knows that each and everything about the ground of Mannamkuzhi. So he can go for the big shot. We have to wait and watch what Dawood is going to do in this last over. Now the captain brings Sahad into the bowling mark. Sahad Kadambar to Dawood Sangadi from the side of Royal Friends Pachalampara. Like taking the guard of right and over this time for the Dawood. This time lofted nicely towards the deep region. This time one bounce boundary, I guess. Yes, it is one bounce boundary. What a connection from Dawood Sangadi. As I told the beginning of last over, Dawood knows each and every part of this particular Mannamkuzhi ground. He can go for the big shot any minute in this particular situation. That's what he's showing in this last stage of over number 6. First delivery, one bounce boundary into the onside region. 4 more runs adding to the scorecard. 39 on the board. Loss of 3 wickets. Yes, batter goes for the third umpire. Definitely to check whether it is 6 or 4, I guess.
Have a look at the shot selection from David Singadi straight away to the deep onside reach and one bounce over there. I guess now we have to wait and watch for the decision from the third umpire whether it is 6 or whether it is 4. Definitely third umpire Mr. Mohan Negiyadi is working behind of that to take right decision by the use of live telecast which is presented by Shine Sports. Definitely this kind of live telecast will gives right position here. The call is for a boundary, one bounce boundary into the boundary line. 4 more addition to the scorecard. The scorecard is 39 on the board. What a good welcome boundary from the side of David Singadi in this last final over of first innings. Sahad once again to David Singadi taking the card up right and over the stamps, pitching to delivery to the earth and in front of David Sam. Looking for the big shot. This time nicely driven towards the mid-wicket reach and fielder fixed it perfectly. There is no chance at all for the batter to cross the single run over here. That is what very good comeback from Sahad Kadambar. What a comeback. What a line and length towards stick was placing perfectly. Once again, Sahad to David Singadi here. Yes, David is not set. He knows that he has to go for big shot because just 38 on the board. 39 on the board. We are in the final over. Looking for the big shot this time. Ups in the air and underneath the fielder. Weeks perfectly. There is no mistake from the deep region fielder. Collects perfectly. Sending back Dawood into the dugout. That is what Sahad did perfect here. Perfection makes a very good wicket into the pavilion. What an understanding by fielder as well as bowler. He came into the attacking over number 6, gave one boundary in the initial delivery, and have taken revenge and sending the batter Dawood Singadi, the captain of Royal Friends Pachalampara, into the dugout. That is what the revenge have been taken by the bowler. The young man Sahad Kadambar have been taken a valuable wicket from the side of Royal Friends Pachalampara here. 4 wicket have been fallen right now. 4 wicket have been fallen right now from the side of Royal Friends Pachalampara. So far, a very good comeback from Sahad Kadambar. Yes, timeout indication we can see from the middle. Definitely that could have been a chance for the batter to go for big shot, but it is not just easy to go for big shot in such a condition like floodlight. It is quite difficult in this particular moment of last. This one nicely delivered, nicely over. There is no chance for the batter. Very good comeback after giving one boundary in the initial over number 6. He have come back, did perfectly. That is what the young man Sahad Kadambar, the responsible person from the side of Falcon Fighter, is doing in the last final over. Nice sweep from the batter here towards the fine leg, taken comfortable single, rotated the strike. The scorecard moves to 40 on the board, loss of 4 wicket. Last one more delivery left in this particular final over. Yes, last delivery left in this final over to conclude innings number 1. A very good spell have been bowled by Sahad Kadambar. Just 5 runs left in this last over number 6, and have taken valuable wicket of Dawood Singadi. Very good bowling so far from Sahad Kadambar. Once again, Sahad taking the guard of right and over the stumps. This time for Ashik Mother India. Yes, taking the guard of right and over the stumps, pitching delivery to the ground and in front of Ashik. This time goes for a big shot. There is no connection at all. What a super piece of
keeping by Karthik. One more wicket have been fallen from the side of Royal Friends Paslampara. Quick action from Youngblood. That is Karthik Kumble. What an innings comes to the end over here. The scorecard is the scorecard is 40 on the board. 41 is a victory target for a team Falcon Fighters Kadambara. Very good innings comes to the end here. Perfectly played by the team Falcon Fighters Kadambara. Yes, very good news. Just now we heard the champion district match football champion, that is the owner team of Uppala, Citizen Uppala. Congratulations team Citizen Uppala for winning district football champion trophy. On this occasion, the own team of Uppala, I would like to congratulate the team Citizen Uppala. Now the changes in microphone, I would like to call Mr. Abdul Rahman Jibikur to analyze the upcoming innings. Thank you. थैंक यू प्रीतम, थैंक यू डार्विन माइकल। फाल्कन फाइटर्स और रॉयल फ्रेंड्स पचलंबारा के बीच में आप मैच देख रही हैं। पहली पारी समाप्त हो चुके हैं। पहली पारी समाप्त होने पर 39, 40 इज द विक्ट्री टारगेट, 41 इज द विक्ट्री टारगेट, 40 ऑन द बोर्ड, 41 इज द विक्ट्री टारगेट। अगली मैच के लिए हस्ताक्षर के लिए तैयारी हो जाएं। अगली मैच खेला जाएंगे YFC कन्नूर चैंपियन स्पोर्ट्स के बीच में जोरदार मुकाबला होगी। आने वाली मैच है MPL सीजन 10वीं की चौथी दिन आए हुए सभी दर्शकों को फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। बहुत बड़े मेला है, अंडरआर्म क्रिकेट के सबसे बड़े मेला जारी है। अब तो देखना होगा कि कौन बनेंगे चैंपियन, कौन बनेंगे लाखपति। यहां पर आने वाले दिनों में पता चलेंगे। संडे के दिन सुपर संडे, अंडरआर्म संडे बनाएंगे, तब किसके फोटो छापेंगे जो स्टेटस के रूप में, ये देखना बाकी है। किस टीम के फोटो ज़्यादा से ज़्यादा छापेंगे जो स्टेटस में, देखना बाकी है। अब तैयार है, 41 इज द विक्ट्री टारगेट। गेंदबाज है निजाम गेंदबाज है। स्ट्राइक पर शमी रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, तब तक कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। अच्छी गेंद थी, बिल्कुल रोलिंग डिलीवरी थी। फिर एक बार दूसरी गेंद लेकर तैयार है, दूर वाले चौक से वध विकेट। और इस गेंद ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर गई, अंपायर के हाथ उछाला और कहा कि वाइड है, अतिरिक्त गेंद है। रनों की संख्या बढ़ते हुए और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, तब तक कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। एक रन वाइड में मिले हैं। फिर एक बार निजाम, दो गेंदें फेंक चुके हैं, तीसरी गेंद फेंकना बाकी है। बायर के कंबरोडन से अपनी शैली में गेंद फेंकने के लिए तैयार है, दूर वाली चोट से वध विकेट। अगली मैच के लिए तैयारी हो जाई है YFC कन्नूर और चैंपियन स्पोर्ट्स। यहाँ पर देखिए विकेट कीपर छोड़ते हुए गेंद, विकेट कीपर के पीछे की तरफ गेंद गई, तब तक अंपायर ने कहा कि लग पाई है। उनके कोई कसूर नहीं है विकेट कीपर के, क्योंकि पैड पर खेले थे, तब वह पैड लगकर जब शॉर्ट फाइन लग पर गेंद गई, तब तक एक रन। और इस एक रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 2 ऑन द बोर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 डिलीवरी। 3 गेंदें फेंक चुके हैं। फ्लड लाइट की रोशनी बहुत खूबसूरती लग रही है मैदान पर। मैदान के कोने कोने पर यानी कि बुंडलिन के चारों तरफ चमकते हुए रंग रंग के अलग अलग मकानों के फ्लैक्स बोर्ड।
और इस गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर थी, बहुत अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी। वाइड चेक करना चाहते हैं अंपायर, वाइड चेक करना चाहते हैं, थर्ड अंपायर के लिए फैसला सुनाने के लिए यहाँ पर विनती की है। रनों की संख्या अभी भी 2 रन, और इस गेंद के हाल क्या होगा ये तो पता चलेंगे कुछ ही देर के बाद। അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പ് പുസ്തകം തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. YFC കണ്ണൂർ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. രണ്ട് ടീമിൻ്റെയും മത്സരാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സൈനപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. डेस्फैट डिलीवरी, अच्छी गेंद थी यहाँ पर। अब तैयार है दूसरी, और एक बार गेंद लेकर तैयार है। दूर वाली चोट से ओवर द विकेट, अंपायर को कोशिश करते हुए ओवर द विकेट, और इस गेंद को उठा कर खेला है। गेंद तो जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ, फील्डर मौजूद, तीनों ने गेंद को तेजी के साथ उठाए। तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 3 ऑन द बोर्ड। और इसी के साथ पहली ओवर के बहुत खूबसूरत संपन्न हो चुके हैं। 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 3 रन और कोई विकेट नहीं। यहां पर फाल्कन को बनाना है 41। यहां पर बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की है, पहली इनिंग्स में शानदार गेंदबाजी की है। 40 रन पर लपेट लिए, लेकिन 41 रन यहां पर पहली ओवर पावर प्ले में सिर्फ 3 रन बिना किसी नुकसान के साथ खेलते हुए। नए गेंदबाज है, और इस गेंद को उठा कर खेला है। गेंद तो जा रही है, और इसी के साथ सीमा रेखे के बाहर टन टनाटन चौका। जरूरी वाली शॉट थे फाल्कन कड़मार के लिए, और इस शॉट के साथ चौका मिले हैं। चौके की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए रेस की घोड़े के जैसे दौड़े हैं, सीधे 7 पर जाकर रुके। व्हाट ए शॉट! फैरोज पच्चिलंबारा गेंदबाज के रूप में दूसरे ओवर के रूप में यहां पर आगमन हुए हैं। उनको चौके लगाकर स्वागत किए हैं फाल्कन कड़म्बार के बल्लेबाज ने। नौफल गोरी अंडरआर्म क्रिकेट के बहुत बड़े ऑलराउंडरों से एक है। गोरी यंग बॉयज पांडेश्वर के सबसे पुराने खिलाड़ी,
आइकॉन खिलाड़ी के रूप में फाल्कन कडम्बार के लिए खेलने के लिए यहाँ पर आए हैं। अपनी योगदान तो बहुत अच्छी तरह दे रही है इन्होंने। खेल कुछ देर के लिए रुक चुके हैं। किस वजह से बातचीत हो रही है ये नहीं जानते हैं। जो भी हो अंपायर फैसला सुनाएंगे। ऑफिशियल्स अपनी क्या प्रॉब्लम है बता दीजिए।
അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് മറ്റൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2026 ഏപ്രിൽ മാസം 18-ാം തീയതി മുതൽ 23-ാം തീയതി വരെ നീണ്ട 5 ദിവസക്കാലം മഞ്ചേശ്വരം പഞ്ചായത്ത് മിനി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂ ബോയ്സ് മഞ്ചേശ്വരം ആതിഥ്യമരുളുന്ന ലെവൻസ് അണ്ടർആം പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. 14 ടീമുകൾ മാറ്റുരക്കുന്ന ലെവൻസ് അണ്ടർആം പ്രീമിയർ ലീഗ് ടൂർണമെൻറ്റിൽ ജേതാക്കൾക്ക് 2.5 ലക്ഷം രൂപയും റണ്ണേഴ്സപ്പിന് 1.5 ലക്ഷം രൂപയും ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൽകുന്ന ഈ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റിലേക്ക് ഏവരെയും ഞങ്ങൾ സദർശം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്, ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ മാസം 18 മുതൽ 23 വരെ. ഇവിടെ ഇതാ മത്സരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ബൗണ്ടറി നേടിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ സ്ട്രൈക്ക് എൻഡിൽ നൗഫൽ ഗോറി. അടുത്ത പന്തുമായി ഫൈറൂസ് പച്ചിലമ്പാറ. അറൗണ്ട് ദ വിക്കറ്റ്. ഓ, മനോഹരമായ ഷോട്ട് ഇവിടെ. ഓഹോ, നൗഫലിൻ്റെ എന്നുമുള്ള അതേ ശൈലിയിലുള്ള ഷോട്ട് തന്നെയാണ്. 2 റൺസ് കൂടി പൂർത്തീകരിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ 9. മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് ഫാൽക്കൻ കഡംബാറിൻ്റേത്. ആദ്യ ഓവറിൽ 3 റൺസുമായി ഒന്ന് പരുങ്ങിയെങ്കിലും പവർ പ്ലേയുടെ 2-ാം ഓവറിൽ ബൗണ്ടറിയും ഡബിൾസും എടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചുവരവിൻ്റെ സൂചന നൽകുന്നു ഫൈറൂസ് തൻ്റെ ആവനാഴിയിലെ 3-ാമത്തെ അസ്ത്രം. നൗഫൽ വീണ്ടും ഇതാ മനോഹരമായ ഷോട്ട്. ഇപ്രാവശ്യം ഫീൽഡറുടെ കൈയിലേക്ക് നേരെ. ഒരൊറ്റ റൺസ് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. സ്കോർ ബോർഡ് ശരവേഗതയിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ 10-ൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. 3 പന്തിൽ 7 റൺസ് സ്വന്തമാക്കുന്നു നൗഫൽ ഈ ഓവറിൽ. അടുത്ത പന്തുമായി ഫൈറൂസ് ടു ഷമി പെരിയെടുക്കാം. ഫൈറൂസ് തയ്യാറാണ്. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എൻഡിൽ നിന്നാണ് പന്തെറിയുന്നത്. അടുത്ത പന്തുമായി തൻ്റെ ശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം ഓവർ ദ വിക്കറ്റ് പന്തെറിയുന്നു ഷമി പെരിയെടുക്കെതിരെ. ഷമി മികച്ച ഷോട്ട് ലോങ്ങോട് ഭാഗത്തേക്ക് ശരവേഗതയിൽ തടുത്തിടുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കണ്ണ് തുറന്ന് ചിമ്മുന്നതിനിടയിൽ ഇതാ ബൗണ്ടറി കിടക്കുന്നു. മനോഹരമായ ബൗണ്ടറി. ഫാൽക്കനിന് അത്യാവശ്യമായ ബൗണ്ടറി തന്നെയാണ് 2-ാം ബൗണ്ടറി ഈ ഓവറിൽ നേടിയതെങ്കിൽ സ്കോർ ബോർഡ് ശരവേഗതയിൽ ചലിക്കുകയാണ്. 14-ൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. 4 പന്തിൽ നിന്ന് 11 റൺസ് നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ടോട്ടൽ സ്കോർ 14. അടുത്ത പന്തുമായി ഫൈറൂസ്. ഷമിക്കെതിരെ വീണ്ടും ഷമി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. ലോങ് ഓൺ ലോങ് ഓഫ് ഭാഗത്തേക്ക്. ഒരൊറ്റ റൺസ് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. ഇനിയും ഒരു പന്ത് അവശേഷിക്കുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിൽ 15. 41 വിജയലക്ഷ്യം. 41 ലക്ഷ്യം. ഇവിടെ 2-ാമത്തെ ഓവറാണ് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓവറിൽ പിറന്നത് 12 റൺസ്. 5 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവസാന പന്തിലേക്ക്. ഇവിടെ ഇതാ ഫൈറൂസ് പവർ പ്ലേയിൽ അവസാന പന്ത്. നൗഫൽ ഗോറി എന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻ ഇവിടെ ഇതാ ഉയർത്തിയടിക്കുന്നു ശരവേഗതയിൽ. പന്തിനെ തടുത്തിടുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പന്ത് ബൗണ്ടറി ലൈനിനരികിൽ വെച്ച് പിടിച്ച് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചികഞ്ഞു നോക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ബൗണ്ടറി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അമ്പയർ തീരുമാനം 3-ാമത്തെ അമ്പയറിന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. That's a double. മികച്ച ഫീൽഡിംഗ് തന്നെയാണ് അവിടെ നടത്തിയതെങ്കിൽ 2 റൺസ് മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. ബൗണ്ടറി എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ച ആ പന്തിനെ മികച്ച രീതിയിലാണ് സേവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ മികച്ചൊരു സേവ് തന്നെയാണ്.
2 റൺസ് സേവ് ചെയ്യുന്നു. ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിൽ ഇവിടെ ഇതാ അതിനെ കണ്ടെത്തുന്നു. 2 റൺസ് മാത്രം. സ്കോർ ബോർഡിൽ 17. രണ്ട് ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ കാർഡിൽ 17. വിക്കറ്റൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ മികച്ച ഒരു തിരിച്ചുവരവ് തന്നെയാണ്. അവസാനം എറിഞ്ഞ ഓവറിൽ പിറന്നത് 14 റൺസ്. പവർ പ്ലേ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റുന്നു ഫാൽക്കനിൻ്റെ ഓപ്പണർമാർ. നൗഫൽ, ഗോറി, അതേപോലെ ചെമ്മി പെരിയെടുക്ക എന്ന അവ്യഖ്യാത താരം. അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ 4ാം ദിവസത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മുഴുവൻ കായിക സ്നേഹികളെയും ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരിക്കൽ കൂടി അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഇതാ 3ാമത്തെ ഓവറിലേക്ക് ബോളർ വരുമ്പോൾ നിസാം വീണ്ടും പന്തെറിയാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. തൻ്റെ കോട്ടയിലെ ആദ്യ ഓവറിൽ പിറന്നത് വെറും 3 റൺസ്. വിക്കറ്റ് നേടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും दोस्तों आप देख रही हैं एमपीएल की सीजन 10वीं चौथी दिन यहाँ पर फाल्कन कडम्बार और रॉयल फ्रेंड्स पे चला मारा और इस गेंद को खेलना चाहती थी. बहुत अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेकिन अंपायर ने कहा कि वाइड है और इस वाइड की मदद से निजाम ने अपनी दूसरी ओवर कोठे की फेंकने के लिए आए. तब तक का पहली गेंद में वाइड निकले हैं. अब अगली गेंद दूर वाली चोट से ओवर द विकेट अंपायर को घोष करते हुए तैयार है नौफल के लिए. और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है. मिड विकेट पर गेंद जाते हुए मात्र 1 रन मिले हैं और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 19 ऑन द बोर्ड. 19 रन. स्ट्राइक पर नौफल आए हैं 10 रन बनाकर खेलते हुए. अब अगली गेंद और इस गेंद को स्वीप किए करना चाहते थे, लेग स्टंप के काफी बाहर गई, वाइड. दूसरी वाइड इस ओवर में. स्कोर कार्ड 20 पर पहुंच चुके हैं, 20 पर बिना किसी नुकसान के साथ. अब अगली गेंद दूर वाली चोट से निजाम और इस गेंद को खेलना चाहा, लेग स्टंप पर फिर एक बार गेंद. अंपायर ने इशारा की है वाइड +1. तीसरी वाइड. मेरे ख्याल में निजाम के खोटे की पहली ओवर में इनके ऊपर नजर लग गई है. पहली ओवर में सिर्फ 3 रन थे. अब देखिए दूसरी ओवर. दूसरी ओवर फिर एक बार वाइड. ये तो नजर लग गई है इनको, क्योंकि इतनी शानदार गेंदबाज, इतनी
23 4 रन। अब अगली गेंद निजाम ओवर द विकेट, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। बल्लेबाज ने समझ लिया कि अब तो आसान लग रही है, मंजिल दिख रही है, दरवाज़ा खटखटा रही है मंजिल की, अब तो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जानकर इन्होंने 3 वाइडे मिले हैं, तब तक इन्होंने शांत स्वभाव से खेले हैं। अब अगली गेंद ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, लेग स्टंप पर बीट हुई, तब तक रनआउट के लिए खतरा यहाँ पर, लेकिन नहीं। एक रन तो तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया, बाइक इशारा किए, विकेट कीपर के गलती से रन मिले हैं, और इस एक रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 25 यानी कि क्वार्टर सेंचुरी, 16 मोर रन रिक्वायर्ड। तीसरी ओवर के प्रगति पर गेंदबाजी कर रही है निजाम कोडिकल, बायर के कंबरोडन से गेंदबाजी करते हुए दूर वाले छोर से, और इस गेंद को कट करना चाहते थे। गेंद तो कई है, ऑफ साइड पर गेंद आए थे, लेग स्टंप पर गेंद गई, ऑन साइड पर गई, तब तक बाइक इशारा किए, विकेट कीपर के गलती से फिर एक रन, रनों की संख्या बढ़ते हुए 26 यानी कि 26 रन। तैयार हैं फिर एक बार दूर वाली चोट से लंबे छोटे कदमों के साथ निजाम टू चेमी, और इस गेंद को कट करना चाहा, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट, लेकिन कोई खतरा नहीं, कोई रन नहीं, वापस आ चुके हैं, और इस वजह से कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं, डॉट एंड डिलीवरी। अब अगली गेंद दूर वाली चोट से ओवर द विकेट, निजाम टू चेमी, नौफल, क्षमा कीजिए, नौफल, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेलना चाहा, अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद उछाल के साथ इस गेंद आए थे, कोई खतरा नहीं, कोई रन नहीं। 3 वाइड फेंकने के बाद अच्छी तरह ऑफ से आए, 2 तो डॉट बोलते 22 में रन मिले थे, और इसके बाद कितनी शानदार ऑफ से आए, देखिए रनों की संख्या अभी भी 26 लोसो बिना किसी नुकसान के साथ। चम्मी और नौफल सुरक्षित है मैदान पर, 41 इज द विकेट टारगेट। अगली मैच खेला जाएंगे, यहाँ पर टॉस के लिए तैयारी हो जाइए, YFC कन्नूर और चैंपियन स्पोर्ट्स के कप्तान। इस मैच में पहली पारी खेले हैं रॉयल फ्रेंड्स पचिलंबाना, 40 रन बनाए, 41 रन के लक्ष्य को कड़े किए। तो फाल्कन कडम्बार ने दूसरी पारी खेलते हुए तीसरी ओवर समाप्त हुए, 3 ओवर की समाप्ति पर 26 यानी कि 26 रन शून्य पर। अब 3 ओवर बचे हैं, 15 रन की जरूरत है, 18 गेंदे बचे हैं। अब तो स्कोर कार्ड पर अपनी बाती अच्छन वापस आ चुके हैं। हमारी जो डिजिटल संविधान पर स्कोरिंग संभाल रही है महरूफ, अब नए गेंदबाज के आगमन हुए हैं, मूसा पठान ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, काफी मुश्किल से इस गेंद को पकड़े हैं, वाइड के इशारा किए हैं, विकेट कीपर काफी पीछे खड़े हुए थे, फिर भी इन्होंने काफी मुश्किल से इस गेंद को रोका गया। तब तक 1 रन वाइड के रूप में, रनों की संख्या 27। अब अगली गेंद दूर वाली चोट से लंबे कदमों के साथ, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ दखल दिया गया है। 1 रन तो निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किए, दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है, और 2 रन भी पूरा किए, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, नौफल और चम्मी के बीच में, और 2 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 29 ऑन द बोर्ड, 12 मोर रन रिक्वायर्ड। सिर्फ 12 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। खेल देख रही हैं आप, फाल्कन कडम्बार वर्सेस रॉयल फ्रेंड्स पचिलंबाना के बीच में ओवर द विकेट, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ गेंद जा रही है, तब तक मात्र 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 30 ऑन द बोर्ड, 30 रन खाते पर। अब सिर्फ 11 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, 15 गेंदे बचे हैं। फिर एक बार तैयारी है, 2 गेंदे फेंक चुके हैं, 16 गेंदे बचे हैं। देखिए कितनी शानदार कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने, कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 31 ऑन द बोर्ड, 31 रन। अब सिर्फ 10 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए, 10 रिक्वायर्ड। अब अगले गेंद, और इस गेंद को सिप करना चाहते थे, गेंद तो हवा पर गई और अंपायर की तरफ मुड़ कर देख रही है, और इसी के साथ आउट, विकेट पतन हो चुके हैं। कैच आउट चेक करना चाहते हैं, दूसरे अंपायर के टीवी अंपायर के फैसले के लिए सुनाए। कैप्टन आ जाइए अगले मैच के लिए, YFC कन्नूर कैप्टन
और उसी तरह सामने वाली टीम है चैंपियन स्पोर्ट्स के कप्तान वाईएफसी कन्नूर के और चैंपियंस के 2 कप्तान आ जाइए। आ गए हैं गिरीश मुजगांव और नजीर चिरगोली। और इसी के साथ नॉट आउट कह रही है, कोई दिक्कत नहीं, बल्लेबाज सेफ है। सर स्कोर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, स्कोर तो नहीं मिलेंगे भैया। अब तो 2 टन डिलीवरी, अब तैयार है अगली गेंद लेकर। ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही है मूसा पठान और इस गेंद को खेला गया है मिड विकेट की तरफ। गेंद जाते हुए फील्डर मौजूद है, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाई। तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 32 ऑन द बोर्ड, 9 रन रिक्वायर्ड। चैंपियन ऑन द टॉस और इस गेंद खेलना चाहते थे लेग साइड पर, गेंद गई ऑफ साइड पर। तब तक 1 रन तो दौड़कर पूरा किए, क्षमा कीजिए अपील किए और आउट भी दिए हैं। और इसी के साथ पहली विकेट के पतन। नौफल गोरी आउट, पहली विकेट के पतन हुए, उनके जगह पर कार्तिक कुंबला। कार्तिक कुंबला के आगमन दिख रही है, केएफसी कुंबला के योगदान है। अच्छी शुरुआती देकर आए हैं आइकॉन खिलाड़ी ने नौफल गोरी। अब तो कार्तिक कुंबला लिटिल मास्टर ऑफ अंडरआर्म क्रिकेट धीरे धीरे मैदान के बीचों बीच में जाते हुए चम्मी के साथ मिलकर वापस अपनी अपनी जगह पर जा रही है। बॉल लेफ्ट, 9 रिक्वायर्ड। 12 गेंदे बच्चे हैं, 9 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। अब तैयार है गेंदबाज बॉलर विकी और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। 1 रन तो निश्चित रूप में दौड़कर पूरा किए, दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है। यहां पर रन बिटवीन द विकेट काफी तेज। ओ हो, दोनों खिलाड़ियों के बीच में हल्के से एक्सीडेंट तो हुए हैं, देखना बाकी है कि कुछ खतरा है क्या, ये तो देखना बाकी है।
That's a wide. 35, 6 more run required. विकी फिर एक बार तैयार है. दूर वाली चोट से लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट बाहर के कमर उड़न से. और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला है. गेंद तो जा रही है सीधा सीधा सीमा रेखे के बाहर. जरूरी वाली चौके लगाएं. और इस चौके के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 39. ओनली 2 रन रिक्वायर्ड. वाइड. ओके 40 स्कोर इस लेवल. सिर्फ 1 रन की जरूरत है फाल्कन को जीतने के लिए. बढ़िया जीत यहां पर बड़े मार्जिन के साथ जीत गई है यहां पर फाल्कन ने. अब अगली गेंद विकी अच्छी गेंद थी और भी 10 गेंदे बचे हैं. सिर्फ 1 रन की जरूरत है. और गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया थे लेकिन गेंद गई है ऑन साइड पर. और इसी के साथ बहुत बड़े जीत बहुत बड़े मार्जिन के साथ फाल्कन कडंबार ने जीत लिया गया है. Shake it up, shake it up. ഇനി നേരെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് വേദിയിലേക്ക് കടക്കാം. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് വേദിയിൽ ആരാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന് അബൂബക്കർ വടകര മണ്ണങ്കുഴി മേഖലയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മംഗലപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകൻ അബൂബക്കർ വടകര നൽകുന്ന മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം. Man of the match goes to Naufal Gori. ഡെക്കൂർ അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പ്. ഡഗൌട്ടിൽ നിന്ന് ചെയർ എടുത്തുകൊണ്ട് ആരും പുറത്തേക്ക് പോകരുത്. ഡഗൌട്ടിൽ ചെയറുകൾ നിർബന്ധമായും അത് പ്ലെയേഴ്സിന് വേണ്ടി റിസർവ് ചെയ്തതാണ്. അത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.
പ്ലേയേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കണം, പ്ലീസ്. Now we can see that in the presentation podium. Now Falgori receiving the Player of the Match award. What a performer. Wonderful all-rounder cricketer who displayed a wonderful talent. And that brings the game for the team Falcon Fighters. Congratulations, buddy. As all set, YFC Kannur versus Champion Sports Bandiod. Champion Sports won the toss and decided to bowl first. All things are almost set right in the ground for starting the action. Openers in the middle, Captain Nazir Shirgoli, along with the icon player Harshad Bajal. A devastating combo comes as the openers for the team YFC Kannur. On the other side, Hayas is getting ready to start the operation of the bowling for the team Champion Sports Bandiod. Icon player from Champion Sports Bandiod Ayas is coming. And on the other side, the captain Nazir Cherigoli going for a improvisation of a sweep shot and straight away off the mark with that single. First ball, first run for the team YFC Kannur, for the captain of YFC Kannur. Always Nazir Cherigoli is a front face of YFC Kannur in Kasaragod and GCC countries as well. Straight away up on the scoreboard. They were sending up to bat first. Hayas, the icon player. Beautiful delivery. That's a beautiful swinging one. Right on the track. Not gives any kind of opportunity for the batter. Left-hander, dangerous customer, Harshad Bajal, who just moves within the wicket for a single. Both the batters are off the mark in consecutive singles for the team YFC Kannur. Premeditated for the onside shot by Nazir Cherigoli, but this time not gets a connection in a proper way. Well, it's a by signal received. Good piece of a bowling performance that's showcasing in the front line by Hayas. Newly joined icon player for the team Champion Sports Bandiod. They were searching a victory. 3 consecutive loss for the team. But this is the game they need to coming back in the action of MPL. Desperately they need to bring a victory here to coming back in the actions of this tournament. They have resources. They have quality products. Trying to execute in the right way.
That were exactly required for the camp of champion sports Bandiod. Here is another beauty. Lovely little delivery from Hayas. Just making magical things in the front line. A big competition right in the middle. Left-hander Gabbar. Harshad Bajal on strike. The most devastating hitter. On the other side, Hayas is having the ball beautifully on the track again. This is sensational Hayas, who just generating pace and controlling the big weapon in a silent way in the first over. So far, so good by Hayas, the bowler. Moving to the last ball of the over. Arshad Bajal goes down the ground and there is no fielder. One bounce or what is it? Yes, it is. It's gone for a boundary for 4. What a stroke it was. Have a look at the connection from Harshad. Bang is always keep you in high. Just in front of the boundary rope it was landed and gone past the boundary for 4. End of the over, 7 without loss. YFC Kannur. Fabulous way the matches begin. Fabulous 5 deliveries by Hayas, but in the end, Arshad Bajal just clears his intention. A lovely way the man generate a shot of authority to the down the ground for a boundary. And now moving to the over number 2nd. Ashwit Kasaragod is coming with the over number 2nd. On the other side, Nazir Chergoli on strike. Skipper of YFC Kannur. Ashwit is setting and changing a little bit field placement. Is an aggressive bowler. Always a front choice for all teams. Especially the man who was excellent in power play overs. Discussing the thing along with senior campaigner Abi behind the stumps. This is very crucial game for the team champion sports Bandiod. They need to bang. Ashut is coming with over the wicket in front of the right hander Nazir Chergoli, the star batter. Oh, that was straight back. Oh man, it was looks to be close. A powerful bullet arms of Ashut gives it into that strikers in. Wicket keeper puts it down. Oh, that was gives a lifeline. It was looks to be would have been a chance. Escaped by Nazir Chergoli. Fabulous way the man started the over. Fantastic rolling delivery. That not give any kind of room to freeze the arm. Ashwat is always keep you in tight. That kind of a caliber he has. Another beauty. Another beauty. Tight in line. Tough to react. This is magical Ashwat or what? Going to upstairs. Checking for wide. TV umpire, please report. Third umpire, please report. We have a wide checking. Third umpire, please report. Back-to-back fantastic delivery to start the action by Ashwat. And we are checking the second delivery. Yes, we have Saif Padil. Comes to the box to check that one.
Arshad Bajal and Nazir Chergoli, the batters were standing on the middle of the ground. A very big productive run machines for YFC Kannur. Already white ball is the confirmation from TV umpire. Adya ball run ഒന്നും അനുവദിക്കാതെ എറിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പന്ത് അത് വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അശ്വത് is getting ready. Previous one was gone away. It was called a wide. Nazir Chergoli picks up that one and through the covers region. Oh, looking for second by the batters. Arshad Bajal calls and Nazir responded. It was hard and tight. A super shot from Nazir, but absolutely goes like a rocket straight to the fielder. Puts it down. Another chance. Couple of runs in an ease way for the team YFC Kannur. Good start in first 8 ball. They grabs 10. Going in a reverse action. Not gets a control behind that stroke. It will be a chance or what? No. Quickly coming back. Hurt is beating. Arshad Bajal is searching the opportunity to go between the wickets. He's a kind of player who is always energetic and electric. It will be a wide check once again. Saif Padil. Another ball looks to be very tight and it goes upstairs. Everything is checking and making really well by the umpires. They were providing the clarity of decisions. അതിനിടെ കാണികളോട് ഒരറിയിപ്പ്, ഒരു ഗിവ് അവേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മണ്ണൻകുഴി പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ ഭാഗമായി. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: സെലക്റ്റഡ് മണ്ണൻകുഴി ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക, MPL എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ബൈജൂസിൻ്റെ സ്മാർട്ട് ടാബ് സമ്മാനമായി നൽകുകയാണ്. ഗിവ് അവേ ആയിട്ട് MPL സീസൺ 10ൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെലക്റ്റഡ് മണ്ണൻകുഴിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക, MPL എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ആവേശകരമായ മണ്ണൻകുഴി പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ 4ാം ദിനം. ബി ഗ്രൂപ്പിലെ ടീമുകൾ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടുകൊണ്ട് ആവേശകരമായ ഒരു പോരാട്ടം കാഴ്ചവെക്കുന്ന അതുല്യമായ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു മനോഹാരിത സമ്മാനിക്കുന്ന രാത്രിയെ കാത്തുകൊണ്ട് ആരാധക വൃന്ദങ്ങൾ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മൈതാനത്തേക്ക് മണ്ണൻകുഴിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി നല്ലവരായ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളെ ഞങ്ങൾ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് MPLലേക്ക്. ഇറ്റ്സ് എ വൈഡ് കോൾ. Second time in this over. Goes way outside from the gate line by Ashwit. Was just trying to keep that one away from the arc of Nazir Chergoli. It was a good plan for sure, but goes way wide in consecutive time. Ashwit comes again and this time through the offside region. Nicely struck it by Nazir Chergoli. Well, he just showcasing his disappointment after playing that shot. He wanted something bigger and he's always like pace. And Ashwit is a pace bowler who just generating some extra bit of pace. And Nazir always love pace. 12 on card, 3 more balls to go from this power play.
YFC Kannur just start in a steady way. The big weapons, they were still finding some extra bit of huge shot. We have seen one boundary from the blade of Harshad Bajal, the top class all-rounder cricketer from Mangalore. The big, huge fan base cricketer. That's nicely bowled. Keeps it once again away from the channel. Magnificent bowling display from Ashwit Kasaragod, the front line bowler. Just giving it superbly on the track and restricting the batters really well with his control. 2 more balls to go from this over. This is a clever start from Ashwit. Lovely way, drives it, that one beats infield and it will be a long chase for the fielder who just comes but no chance over there. Ball races away towards the fence for a boundary. Through the widest long off region, Nasir finds his first boundary for 4. 17 on card. Moving to the last ball of the power play. Both the batters, they were finds boundaries. Good piece of a start. A decent start for YFC Kannur. Keeping the wickets in hand inside the power play. Batters were just ready to rule the kingdom. Working wonderfully. A calculated cricket. Nicely lofted, that one catches the call. The fielder going in a reverse gear from the circle and grabs it successfully. A successful ball to conclude the over number 2 by Ashwit Kasaragod. Picks up the big fit. A very well fit Nazir Cheragoli, who just walking his own way to the dugout. What a wicket this is. A precious one for the team champion Sports Bandiod. End of the over number 2, 17 for 1. ആദ്യ വിക്കറ്റ് വീഴുന്നു. പവർ പ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 ഓവറുകളിൽ 17 റൺസുകളുമായി കൃത്യമായൊരു തുടക്കം നേടിയെടുത്ത നസീറിന്റെ വിക്കറ്റ്. അത് നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ആധികാരികമായി അടുത്ത ഓവറുകളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ ബൗളേഴ്സിനെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഉറപ്പായും ഒരു വിജയം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ടീം ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ബന്ദിയോട്. തിരിച്ചുവരവുകളുടെ ചരിത്രം ഒരു പിടി കണ്ട അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഐതിഹാസിക ചരിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഐതിഹാസികമായൊരു ടൂർണമെന്റ് MPL നടക്കുമ്പോൾ is active. 2 overs passed over there. Hayas is back into the attack. The key bowler, icon player from the side, just seriously involving and setting the fielders in the right position when the power play over. Fielders are spread into different parts. Sarjan, the new man, joins in at number 3 for the team YFC Kannur. In the non-strikers end on the other side, Harshad Bajal on strikers end. A strong guy, strong left-hander. A lot of fabulous shot collection having by Harshad. Strong onside, offside player. But Hayas is a big weapon who can change the complete complexion of the game coming into the attack. Oh man, you just done absolutely a gold. Arshad Bajal, staggering genius, going for a 6 runs. What a cracker jacker it is. Is a left-hander or right-hander? Somebody have a confusion. But Arshad Bajal can play in both way. As a right-hander, as a left-hander.
Arshad Bajal is a master. Ladies and gentlemen, this man is a special product. When comes with a wooden piece of a bat, this man is from out of the planet. Arshad Bajal. How many times we have seen that kind of shot? Nicely played over there. Switches once again. And it was a little bit cut off the pace delivery from the bowler. And nicely directed by Arshad Bajal and takes a single. This is a very good cricket that's showcasing in the front line by Arshad Bajal for YFC Kannur. The man who just setting the tune and composing a really good music. What a cricketer. Hayas are ready to coming with another plan. Need to change the plan. Sarjan on strike. Make sure his fielders are in the right position. Planning something special. Yes, we can see with that attacking fielding placement, he is searching for the wicket that desperately demands. Nicely works it over there through the onside region by the man Sarjan. Cleverly rotate the strike and straight away off the mark with that single. Nicely jet the delivery and nicely works it through the onside region and takes a single and gives a strike rotation for the important man, the Gabbar of Underarm cricket, Arshad Bajal. Arshad as a right-hander, the genuine left-hander, comes as a right-hander. David Warner of Underarm cricket, just like switches the place like a David Warner. 23 runs and moving to the over number 3. Big appeal, but goes just way outside from the leg stump, the line of the delivery. That's the end of the over in form of leg by. They gets a single. That's the end of a special over from Hayas. You have seen a boundary from the first ball, but it was restricted very well with the 7 runs. End of 3, 24 for the loss of 1. 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 24 റൺസുമായി YFC കണ്ണൂർ. Lost a big wicket of Nazir Cherugoli, but Sarjan joins as a very good company. He can rotate the strike really well. Arshad Bajal on the other side producing a paw-pack cricket with his stylish short collections that exploring here in Mannamkuzhi. He is on strike and the over number 4 coming. Madhu BFC coming into the attack. He's done well. That's a typical rolling delivery from Madhu to start the proceedings. Just gets an edge and comfortably gone past between the wicket by the batters of YFC Kannur. Super piece of attacking cricket that showcasing here by the team. Takes a single that brings a 25, a quarter of a century for the team YFC Kannur. Just lost 1 wicket. Outstanding game of cricket we are witnessing in consecutive 4th day of MPL. That's a clever moment. Just plays it that went through the onside region. Job done once again by Sarjan. And he just comes in at number 3 with a special duty and responsibility upon his shoulder.
rotate the strike and keep Arshad Bajal in strike for more time. That's the ask from the management of YFC Kannur. Oh man, high in the sky, and it's a flyer of a shot. Flat one from Arshad Bajal. You better again. Waiting for the signal from the center. Yes, it is. That's a massive. That's a Scud missile from Arshad Bajal's blade. Absolutely a fabulous hit. Gone all the way out of the ground for 6 runs. Gabbar back into the form. Gabbar is taking the stage. Gabbar is lifting Mannamkuzhi. And Gabbar is playing his pinnacle of game for YFC Kannur. Oh, he's done well. Appeal, strong appeal. But going between the wicket for a single. Well, they were going back. Madhu BFC showcasing his brilliant after conceding a sixer. Come back with a strong delivery. Outstanding way the match is going. An outstanding form that's showcasing by Gabbar. It is again, watchfully played through the onside region. Sargent playing a key role once again. Rotating strike every time. 3 balls, runables. 3 from Sargent on the other side. Having a very good company, and the partnership is building for the team. YFC Kannur moving to the last ball of the over number 4. Just a productive 9 runs already came from the first 5 balls of this over. Arshad goes again. It's through the onside. There is a man in deep, and Arshad looking for second. It will be. Looks easy in the end for the batters of YFC Kannur. Sargent and Arshad Bajal. They were working wonderfully between the wicket as well. 12 runs over comes to an end of 4. 36 for 1. YFC Kannur. 36 runs, 36 runs after 4 overs. Platform is set. ജനസാഗരം ഇരമ്പിയെത്തുന്ന മണ്ണൻകുഴി. ആർത്തിരമ്പുന്ന കാണികളെ, ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന കാണികളെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആവേശകരമായ ക്രിക്കറ്റ് മാമാങ്കം. മണ്ണൻകുഴിയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ, അണ്ടറാമിൻ്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഉളുവാറിൽ നിന്ന് ഒരു പറ്റം ഓവറാം ക്രിക്കറ്റ് സ്നേഹികൾ അണ്ടറാമിൻ്റെ ആക്ഷൻസ് കാണുവാൻ എത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തയുമായി അവരെത്തുന്നു. അമിഗോസ് ഉളുവാറിൻ്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ 16 ഫിക്സഡ് ടീം ഫ്ലഡ് അമിഗോസ് ട്രോഫി ഓൾ ഇന്ത്യ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് ഏപ്രിൽ മാസം 24, 25, 26 വെച്ച് ഉളുവാർ ബായ്ക്കട്ടയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന വിവരം കായിക പ്രേമികളിലേക്ക് അവർ അറിയിക്കുകയാണ്. "36 for 1. Hari Niroli coming with the over number 5, the penultimate over of the innings number 1. The man who having a wonderful form, Arshad Bajal. Sargent just directed nicely and just rotating the single once again. Consecutive 4 singles by Sargent Saju. His job is done again, and Arshad Bajal on strikers, and he's on 20 runs from 14. Little bit slow start, but he just accelerate in the right time for the team YFC Kannur. They were searching another victory, already having 4 points from B group from 3 matches. They were sitting comfortably in the point table.
Hari Niroli coming again. Arshad lofted towards the cover. There is no fielder in that position. And the fielder coming quickly and grabbing that one successfully. Outstanding piece of fielding in the deep we have seen. And just restricted with a couple of runs. 2 runs cut. And 2 runs added. YFC Kannur is moving in a rocketed way. Harshad Bajal is giving the power with his authority of strokes we have seen throughout his innings. 39 on card. Here comes again. Arshad trying and break the fields, and there will be a huge gap. This man is a perfect to stop the gap. Well, what an effort, what an interruption from the fielder. Restricted between the wicket, but 3 runs comfortably completed by the batters. They were taking all the advantage and bringing a runs into the scorecard of YFC Kannur. Gabbar is working. He's on 25. What a cricketing showcase he just delivering here in Mannamkuzhi. 42 on card. Sajan on strike. Hari Niroli again. This time. Oh, straight back. Oh, it was a chance, but escaped by Sajan, and he gets a single. 5 singles from 5 balls by Sajan. A sensible innings. Absolutely sensible innings from Sajan on the other side. Arshad Bajal going wild. Sajan keeping with singles. Arshad drives it that one through the covers region. What a cracker of a shot. And ball races away towards the fence through the covers for a boundary for 4. Such an elegant timing. Such an exquisite bat lift. Such a brilliant quality we are witnessing from the left-hander. Arshad Bajal. He is on 29. What an innings. He is just playing for YFC Kannur. Taking the game from Champions Sports Bandiot from single-handedly. Arshad again through the onset region. It will be close. Oh, he was easily completed in the end. Looks to be a tight, but in the end, all safe, all clear. End of the over number 5, 48 for 1. YFC in a strong position. 48 റൺസുകളുമായി 5 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം കടല വിൽപ്പനയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ 100 രൂപ വിലയുള്ള ടിക്കറ്റ് കൂപ്പണുമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. 100 രൂപ വിലയുള്ള ടിക്കറ്റ് കൂപ്പൺ ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിന്റെ നല്ല നടത്തിപ്പിന് ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 1ാം സ്ഥാനക്കാരന് ലഭിക്കുന്നത് TVS ജൂപ്പിറ്റർ സ്കൂട്ടറാണ് സമ്മാനമായി. 2ാം സ്ഥാനക്കാരനും 3ാം സ്ഥാനക്കാരനും സാംസങ് ഗാലക്സിയുടെ മൊബൈൽ ലഭിക്കുമ്പോൾ 4ാം സ്ഥാനക്കാരന് ബൈജൂസ് സ്മാർട്ട് ടാബ് ലഭിക്കുകയാണ്. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിനോടൊപ്പം ഭാഗവാക്കാകൂ, ഒപ്പം ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കൂ. Giri Mujengav is coming with the last over of the innings number 1. 48 numbers on card by YFC Kannur. They were sitting right on the top of the game for sure. Here comes the last over. Harshad Bajal on strike. What a shot! That is a rocket launched out of the ground for a huge one. Magnificent Harshad Bajal. It is flat. Done and dust. It is a missile. Absolute Russian-made missile. Down the ground for 6 runs. Harshad Bajal is taking the game away. What a player.
What a shot! And what a way to welcome the new bowler. It is absolutely gorgeous. Absolutely electrifying. And brings up the 50 for the team. YFC Kannur in style by Harshad Bajal. Is done well. That is gone a little bit away from the arc of Harshad. Timeout is a call from the umpire. One more fielder coming inside the ring. Arshad is going wild. He's on 36. 4 balls of cricket left. Can he get the first milestone of a 50? Oh well, there will be way wide from the target. First run completed. It will be restricted with a single. It will be going to upstairs. Need to check that delivery. Wide or what is the question? Oh no, ball or wide? We need to check that. Already having a huge score on the board. YFC Kannur right on the top of the game. Harshad Bajal kind of an innings at presenting here in Mannamkuzhi. That looks to be absolutely visual treat for the cricket lovers. Everybody enjoying the game. Everybody watching and enjoying the fabulous batting display of Harshad Bajal. Wide is the confirmation from the TV umpire. Wide +1 resulted in the end. 56 on card. Sajan played another sensible cricket here. And he's just ready to move to the non-striker's end. That's the intention. What a support on the other side by Sajan. That giving lot of confidence to play some shot with authority by Harshad Bajal. Absolute wonderful partnership. Oh man, that's another bullet shot from Harshad Bajal. Coming back for second. Looks easy for Harshad and looks comfortable. He get it, that one. Absolute electric run between the wicket. It's all taking by Harshad Bajal single-handedly. 2 balls remaining from the innings. It is the top score under the floodlights by YFC Kannur. And Harshad having 38 runs from 21 balls. Oh man, that's a cracker high in the sky. Is it a fielder? Yes, it is. And taken that one. And what an innings, what a brutal innings comes to an end from Harshad Bajal. Outstanding innings. And he receiving a claps and standing ovation from the dugout and the audience. Standard of innings. Stylish innings. Outstanding, excellent innings we have seen from this staggering genius. Harshad Bajal played a part. Have a look at that one. Well. MPL chairman Anif Umanga സ്റ്റേജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. New batter Shiva comes in. Shiva Mali. Last ball of the innings, number 1. Shiva tried but looks to be tight. Yes, it is. That's the end of the innings that called by the umpire. Fabulous innings by YFC Kannur. A visual treat by Harshad Bajal. Set a target of 60 runs. 59 on card and 60 runs to chase for the team. Champion Sports Bandiod. That's it from the innings number 1.
59 റൺസിൽ ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ, അതിശക്തമായി അവസാനിക്കുമ്പോൾ 60 റൺസിൻ്റെ വലിയൊരു ടാർഗറ്റ് ആദ്യ വിജയം തേടിയെത്തുന്ന ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ബന്ദിയോട് മുൻപിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോയിസ്. വെൽക്കമിംഗ് ബാക്ക് ടു ദ കോംബോക്സ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബേക്കൂർ. താങ്ക് യു DJ. അടുത്ത മത്സരത്തിന്റെ സൈനപ്പ് പുസ്തകം തുറന്നു വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഗുഡ് ലക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലബ് വേഴ്സസ് ഹൈ ഫ്ലൈസ് ദുബായ് തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ്. രണ്ട് ടീമും സൈനപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഗുഡ് ലക്ക് റിസോർട്ടിന്റെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും സൈനപ്പിനടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം രാകേഷ് ഷെട്ടി. 1 സെക്കൻഡ്. ഹൈ ഫ്ലൈസിന് വേണ്ടി കളിക്കുന്ന സത്താർ, അതേപോലെ അച്ചു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടീമിനൊപ്പം ചേരുക, സൈനപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ധന്യവാദ് डार्विन माइकल. आपको बहुत बड़े अवसर मिले हैं डार्विन, क्योंकि अरशद बजाल ने अपनी फॉर्म पर वापस लौटे हैं, तब आपको बहुत बड़े अवसर मिले हैं. क्योंकि वेस्टइंडीज के क्रिस गेल की तरह इन्होंने शुरुआत अच्छे दिए हैं. कोई भी टीम हो, स्टार्टिंग अच्छे मिलते ही गाड़ी आगे चले जाती है. देखिए 59-60 इज द विक्ट्री टारगेट. उसमें से 65% यानी कि अरशद बजाल के खाते पर स्कोर है. इंडिविजुअल स्कोर 38 पर आउट हुए हैं इन्होंने. अर्धशतक बनाने के लिए कोशिश तो करना चाहिए थे, लेकिन उन्होंने टीम के लिए खेले हैं. बहुत खूबसूरत योगदान दिए हैं, बहुत खूबसूरत योगदान दिए हैं अरशद बजाल. पूरी तरह रंगीन बनाए इस मैदान में. सिक्सटी इज द विक्ट्री टारगेट. 60 रन के लक्ष्य को यहां पर पीछा करने के लिए आरंभिक बल्लेबाज दो आए हैं. शिवमली गेंदबाज के रूप में है. तब पहली गेंद पर संघर्ष तो डाले हैं पहली गेंद पर, और एक रन तो 2 रन. दो रन खाते पर बैट के इशारा किए थे. अब अगली गेंद शिवमाली. स्ट्राइक पर मौजूद है बैट्समैन अश्वित का सरगोड़ हवा पर उठा कर खेला है. फील्डर नीचे है और इसी के साथ आउट. अश्वित के विकेट पतन होते ही सबसे ज्यादा महंगी खिलाड़ी है और 5,000 से ऊपर देकर खरीदा गए थे. बिल्कुल निराश किए इस मैच में भी इन्होंने.
जो भी हो, यहाँ पर मैच आगे बढ़ रही है। नए खिलाड़ी आ चुके हैं। न्यूमैन अयाज के आगमन हुए हैं। अयाज तो आज के दिन पहली दिन है इनके लिए एमपीएल, यादगार एमपीएल इनके लिए भी मौका मिले हैं। हकीम सुरिंजा के अभाव से इन्होंने आए हैं, अब तैयार हैं फिर एक बार। और इस गेंद बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर की तैनात पर गई है। वही एफसी कन्नूर के आरंभिक गेंदबाज देखिए बहुत अच्छी तरह ऑफ से आए हैं। पहली वाइड के साथ शुरुआत ही किए थे और उसके बाद विकेट हासिल किए, डॉट किए। फिर एक बार शिवमाली इस गेंद में खेला गया है, लोगों के ऊपर गेंद जाते हुए फील्डर पीछे हैं। 2 रन तो निश्चित रूप में दौड़कर पूरा कर चुके हैं। 2 रन के सहारे के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 4 ऑन द बोर्ड। 3 गेंदें फेंक चुके हैं, 4 रन खाते पर जोड़ा गया है। बहुत खूबसूरत मेला एमपीएल सीजन 10 और एमपीएल के पीछे है एक इंसान हनीफ नाम के उमंगा। सिर्फ एक एक इंसान है और गेंद उल्टा बल्ले में हो कैच ऑफ द टूर्नामेंट, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए कितनी बड़े इफेक्ट डाले इन्होंने इस गेंद के ऊपर। हो बिल्कुल परिंदा की तरह ये गेंद के नीचे पड़े और कैच हासिल किए। बिल्कुल जरूरी वाली विकेट अयाज डिबास। अब तो फील्डिंग में देखिए कितनी शानदार शानदार प्रदर्शन है इनकी, बहुत खूबसूरत योगदान देते हुए। नहीम अडका की योगदान दिख रही है मैदान पर। अब तैयार है शिवमली, दूसरी विकेट चटका लिया गया है। क्या शानदार गेंदबाजी जा रही है ओवर द विकेट। और नईम इस गेंद को खेलना चाहा, विकेट कीपर की तैनात पर नौफल छोड़कर उन्हें कोई गलती नहीं की है। धीमी गति के साथ गेंद आए थे, हर गेंद तो रफ्तार के साथ आए थे, इस गेंद तो पड़ने के बाद बिल्कुल धीमी हुए, विकेट कीपर की तरफ धीमी के साथ गए हैं, कोई गलती नहीं की नौफल जोड़कल ने। फिर एक बार तैयार है लंबे कदमों के साथ हिंदुस्तानी स्कूल एंड से शिवमाली वही एफसी कन्नूर के लिए ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए ओवर। शिवमाली 1 ओवर नो मेडन 4 रन 2 विकेट, व्हाट ए स्टार्टिंग। देखिए बल्लेबाजी में गब्बर ने स्टार्टिंग दी है, गेंदबाजी में शिवमाली ने स्टार्टिंग दी है। व्हाट ए ओवर, व्हाट ए मैच। वही एफसी कन्नूर यहां पर काफी संतुष्ट दिख रही है। वही एफसी के मालिक के चेहरे में मुस्कुराहट दिख रही है, क्योंकि अपनी आइकॉन खिलाड़ी गब्बर तो अपनी फॉर्म पर वापस लौट चुके हैं। अब तैयार है इनिंग्स की दूसरी ओवर। For recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, well. शमीम कलपारा यहां पर आ चुके हैं, आकर अतिथियों की बैठक में बैठे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं। लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, पहली गेंद, ओ हो, व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए डिलीवरी। देखिए गेंदबाजी में भी उन्होंने अपनी फॉर्म को बरकरार रही है, बहुत खूबसूरत गेंद, व्हाट ए डिलीवरी। अब अगली गेंद लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, वाइड चेक करना चाहते हैं, जी हाँ वाइड चेक करना चाहते हैं। ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर गए थे, इस वजह से बल्लेबाज ने कुछ संदेह दिए और इस वजह से अंपायर ने जो इस गेंद के बारे में जांचना चाहते हैं। अरशद बजाल मुस्कुरा रही है अंपायर की तरफ देखकर, बिल्कुल अच्छी नजारा है एमपीएल सीजन 10। बहुत खूबसूरत मेला जा रही है एमपीएल 10वीं सीजन। राकेश शेट्टी हमारे साथ मौजूद है, ऑक्शन के बंदोबस्त सभी किए हैं
लेकिन कोई लोग ऐसे नहीं कि ऑक्शन करेंगे, पैसा मांगेंगे, पॉकेट में डालेंगे, घर में जाकर बैठेंगे। लेकिन राकेश शेट्टी अलग है, 6 दिन भी यहाँ पर आकर बैठने के लिए इरादा है। चौथे दिन है, हमारे साथ मौजूद है। दैट्स ए वाइड, दैट्स ए वाइड। अच्छी गेंद नहीं थी, अतिरिक्त रन यहाँ पर मिल चुके हैं। अरशाद के चेहरे में निराश छाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर बात है कि 2 विकेट शिवमाली ने हासिल कर चुके हैं। अब अगली गेंद लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, अरशाद, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है। फिलहाल मौजूद इन्होंने गेंद को रोक दिया गया है, तब तक 1 रन पर संतुष्ट हुई, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अरशद बजाल फिर एक बार बहुत अच्छी खिलाड़ियों के खाते पर जोड़े हुए खिलाड़ी हैं। दक्षिण कन्नड़ा जिला के सबसे बड़े खिलाड़ी लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट। अच्छी गेंद उठा कर खेला है, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जाते हुए फिलहाल मौजूद है। इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए, तब तक मात्र 1 रन पर संतुष्ट हुए, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 7 रन। मैदान पर मौजूद है बल्लेबाज अच्छी गेंद ऑप्शन के बिल्कुल बाहर। गिरीश और नईम मैदान पर मौजूद हैं। अरशद बजाल गेंदबाजी कर रही है, 3 गेंदें फेंक चुके हैं। चौथी गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, और इस गेंद को खेला गया है सीधे अरशद की तरफ। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। व्हाट ए बॉलिंग! देखिए, एक इनिंग्स पूरी खेले हैं, फिर भी दूसरी इनिंग्स में गेंदबाजी कर रही है, लाजवाब गेंदबाजी। लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट, अरशद, ओहो बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, पैड पर खेले हैं। तब तक 1 रन तो मिल गई है लेग बाई के रूप में। 1 रन के सहारे के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंदे बचे हैं, लास्ट बॉल टू गो, और इस गेंद उठाकर खेला है हवा पर। गेंद जा रही है सीमा रेखे के बाहर, टन छक्का, बिल्कुल जरूरी वाली शॉट। इस शॉट के प्रायोजक है रेड क्लब उपला। (24 to go, 46 to get. Now score is 14 after completion of 2 over. पावर प्ले खत्म हो चुके हैं। YFC कन्नूर चैंपियन स्पोर्ट्स बंदियोड, 2 टीम के बीच में जबरदस्त मुकाबला जा रही है। अब तो कहीं लोग दूर दूर इलाके से यहाँ पर हमारे यहाँ मन्नमकुझी मिनी स्टेडियम पर आकर इस प्रतियोगिता को आनंद उठा रही है, और यूट्यूब के जरिए शाइन स्पोर्ट्स पुत्तूर के नाम पर देख रही हैं। सभी लोगों को स्वागत करना चाहता हूं। हमेशा की तरह आज भी मुश्ताक चंद पूरी तरह लाइव पर बैठकर इस मैच के आनंद उठा रही है, क्योंकि हर साल हमारे साथ मौजूद होते थे। इस साल तो सऊदी अरेबिया में इन्होंने MPL 10वीं सीजन को पूरी तरह आनंद उठा रही है, धन्यवाद देना चाहता हूं। अब तैयार है, तीसरे ओवर की शुरुआत ये करना चाहते हैं बॉलर नासिरुल्लू, इलेक्ट्रिक बॉलर, इलेक्ट्रिक बॉलर जाना जाती है। ये देखिए, शैली तो बहुत अच्छे हैं। अच्छी गेंद, हो व्हाट ए डिलीवरी! देखिए कितनी शानदार गेंद है, दिखने में आसान है लेकिन उनके सामने बहुत बड़े कैमरामैन साकिर साकी 3 बजे बैठे हैं वहां पर, अब तक अपने जगह से नहीं हिले हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उठाकर खेला है लॉन्ग ऑन मिड विकेट पर गेंद गई, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 15 ऑन द बोर्ड। 14 बॉल 15 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। अब तैयार है अगली गेंद लेकर नासिरुल्लू, भाग्यशाली गेंदबाज है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार नहीं खाते हैं, क्योंकि टेक्निकल गेंदबाज के रूप में जाना जाती है। अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल बॉल, ब्यूटीफुल डिलीवरी। यहाँ पर देखिए उनके शैली तो बहुत अच्छे लगते हैं, लंबे कदमों के इस्तेमाल, लेकिन
उतनी तेज तो नहीं फेंकते हैं, स्लो डिलीवरी फेंकते हैं। देखिए छुप छुप के आते हैं। और द विकेट इस बार उल्टा बल्ले में खेला गया है। एक रन तो तेजी के साथ तोड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए तोड़ा जा रही है, 2 रन भी पूरा कर चुके हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। सलमा नईम और गिरीश के बीच में इस जोड़ी मैदान पर मौजूद है। नईम अडका काफी साल से इंडराम क्रिकेट में मौजूद है, बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता में अपनी नाम दर्जा करते हैं। गिरीश कप्तान के रूप में खेल रही है। अब अगली गेंद नासिर, 17 ऑन द बोर्ड। अगली गेंद और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ धकल दिया गया है। कवर क्षेत्र पर गेंद गई, तब तक एक रन दूसरे रन के लिए तोड़ा जा रही है। और इसी के साथ भैया अगर थ्रो सही करते तब यहां पर करीबी मामला हो सकती थी, लेकिन थ्रो अच्छी तरह नहीं आए हैं, इस वजह से यहां पर 2 रन के लिए मौका भी मिले हैं। 2 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 19 ऑन द बोर्ड। वन मोर बॉल रिमेन। व्हाट ए बॉलिंग, कितनी जल्द गेंदबाजी करती है। देखिए सौरव गांगुली की तरह, सौरव गांगुली की गेंदबाजी देखते हुए सभी लोग जानते हैं ऐसी रन पहन के चुप चुप के आते हैं। और इस गेंद को उठा करके ला है हवा पर गेंद और सफलता हासिल की है। 5 रन 1 विकेट, 1 ओवर नो मेडन, 5 रन 1 विकेट। व्हाट ए ओवर। नासिर उल्लू समझदार ही गेंदबाज है। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप पर बीट हुई, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। 40 रन 41 रन चाहिए और भी 19 रन है खाते पर। 18 गेंद से 1 रन, 1 गेंद तो फेंक दिया है, 17 गेंद बचे हैं। ओह गेंद के गति को बल्लेबाज तो समझ नहीं पाए और पैड पर खेले हैं, तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 20 ऑन द बोर्ड, 20 रन। बिल्कुल हाथ को खींचकर गेंद को छोड़ दिए थे, कहा बिल्कुल धीमी गति के साथ गेंद पहुंचे हैं, तब तक लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट। अच्छी गेंद लेग स्टंप पर बीट हुई, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। 1 गेंद ऑफ स्टंप पर वाइड, वाइड बॉल, वाइड के इशारा किए और इस वाइड की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 21। अब अगली गेंद लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट अरशाद। ओह बढ़िया गेंद और इसी के साथ नईमू डिपार्ट्स, अभी डिपार्ट्स, अभी के विकेट पतन हुए हैं। बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी की मजा आ जा रही है। चौथे विकेट पतन हुए हैं चैंपियन स्पोर्ट्स बंदियोड़ के। Completion of
3.3 ओवर, 3 गेंदें फेंक चुके हैं अरशद बजाल। फिर एक बार फील्डिंग में बदलावन लाते हुए विकेट कीपर के पीछे तो 3 खिलाड़ी को खड़े किए, एक तो स्लिपर है, एक तो शॉर्ट फाइन लग है, बैकबॉल है। फिर एक बार लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला गया है। वाइडिश मिड विकेट पर गेंद के 1 रन तेजी के साथ तोड़कर पूरा किया, दूसरे रन के लिए तो कोई मौका नहीं। अच्छी फील्डिंग, अच्छी थ्रो, 22 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 4 विकेट। 4 गेंदें फेंक चुके हैं अरशद बजाल। अगली मैच के लिए टॉस के लिए आ जाइए। गुड लक कैप्टन, हाई फ्लाइज दुबई कैप्टन। यहां पर गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, बाउंड्री लाइन के करीब गेंद को रोक दिया गया है। तब तक दो रन, टू रन कंप्लीटेड। निराश है फील्डर से अरशद बजाल, बाउंड्री चेक करना चाहते हैं। बाउंड्री चेक कीजिए। कैप्टन ऑफ गुड लक पुसूट, कैप्टन ऑफ हाई फ्लाइज दुबई, दोनों टीम के कप्तान आ जाइए टॉस के लिए। टू रन से 2 रन को बचा दिया गया है, बाउंड्री के करीब गेंद को रोक दिया गया है। तब तक 2 ही रन, रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर 24 फॉर लॉस ऑफ 4 विकेट। अब अगली गेंद अरशद अपने ओवर के आखिरी गेंद लेकर, अंतिम गेंद रक्षात्मक तरीके के साथ इस गेंद को दखल दिया गया है। अरशद बजाल देखिए कितनी तेजी के साथ गेंद के नीचे दौड़ रही है, डीप तक इन्होंने दौड़े हैं। तब तक मात्र 1 रन, फील्डर मौजूद नहीं थी, बिल्कुल खाली जगह थे, डबल के लिए इन्होंने धकल दिया गए थे। तब तक 1 रन, रनों की संख्या टोटल स्कोर 25 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर, लॉस ऑफ 4 विकेट। अब 2 और बचे हैं, 12 गेंद बचे हैं, 35 रिक्वायर्ड, यानी कि 35 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। क्रिकेट में कोई भी मुश्किल काम तो नहीं है, कोशिश कर सकते हैं। तो बल्लेबाज तो 2 अच्छे बल्लेबाज मौजूद हैं मैदान पर, गिरीश मौजूद हैं और एक संतोष बेला। गुड लक ऑन द टॉस, हाई फ्लैश दुबई के सामना करते हुए गुड लक ने टॉस जीत चुके हैं। अब देखना होगा कि क्या फैसला सुनाएंगे। अब तैयार है नजीर चरगोली, ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, अपील और इसी के साथ गिरीश मुजिंगा उड़ीबाज।
नजीर चिरगोली गेंदबाजी करते हुए, तब संतोष वापस आ चुके हैं स्ट्राइक पर। संतोष बेला अच्छे खिलाड़ी हैं। संतोष बेला मिडिल ऑर्डर में काफी अच्छे खेलते हैं इन्होंने। ओवर द विकेट, और इस गेंद को उठा कर खेला है हवा पर। गेंद फील्डर मौजूद, इन्होंने गेंद को अंदर की तरफ धकल दिए। तब तक 2 रन तो दौड़कर पूरा भी नहीं किए। साली एडिका आउट। बहुत कुछ समय थे लेकिन പറഞ്ഞിരുന്നതും ശരിയുമ്മ. नए बल्लेबाज के आगमन हुए हैं, निजाम मुटम, उनके आगमन दिख रही है। तब गेंदबाजी में नजीर, तब स्ट्राइक पर संतोष बेला। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद उठाकर खेला है मिड विकेट की तरफ। गेंद जाते हुए तो तेजी के साथ दौड़कर पूरा किए। दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है, तब तक के 2 रन भी पूरा कर चुके हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट निजाम और संतोष के बीच में। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 29, लॉस ऑफ 6 विकेट। अच्छी गेंदबाजी की मजारा करते हुए 8 गेंदे बचे हैं और भी 31 रन बनाना है मैच को जीतने के लिए। इससे 2 गेंद तो महत्वपूर्ण है। बड़े शॉट तो खेल सकते हैं, तो वापस आने के लिए रास्ता ढूंढ सकते हैं। संतोष भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, हार्ड हिटर भी हैं। शैली देखकर समझ में आता है कि पिछले मैच में भी इनके 1-2 शॉट तो देख चुके हैं। खेलते हैं बहुत स्पोर्टिक शैली में, कलाएं के उपयोग भी करते हैं। ओवर द विकेट, और इस गेंद देखिए लक्ष्य पर बीट हुई। तब तक का कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। खड़े खड़े खेलने के लिए कोशिश किया। अंतिम क्षण पर इन्होंने वाइड समझकर जाने दिए थे, लेकिन विकेट कीपर के तरफ सीधे गए हैं। कोई खतरा नहीं, कोई रन नहीं। 7 to go, 31 to get। अब अगली गेंद नजीर, ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी। यहाँ पर खेलना चाहा, तब तक पैड पर टकराए। 1 रन। संतोष स्ट्राइक पर वापस आ चुके हैं। आखिरी ओवर बचे हैं, 30 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। यहां पर देखिए शानदार एमपीएल सीजन 10 टनाटन सीजन। പറഞ്ഞിരുന്നതും ശരിയും. विघ्नेश सुरम्बाइल, क्या नाम है? देखिए विक्की सुरम्बाइल, विघ्नेश सुरम्बाइल एक ही करके 2 खिलाड़ी। एक तो वाईएफसी में है और एक तो बाएं हाथ की है, एक तो दायां हाथ की है। पहली गेंद वाइड निकले हैं। तब तक 29 रिक्वायर्ड। एक बड़े मार्जिन के जीत चाहते हैं वाईएफसी कन्नौज। अच्छी गेंद उठाकर खेला है हवा पर। गेंद और सीमा रेखे के बाहर। 10 टनाटन छक्का। മാപ്പിള വന്നേ.
अब देखिए छक्के लगाए कितनी अच्छे शैली पर, 7 रन तो कर चुकी हैं पहली गेंद पर, 5 गेंदे बचे हैं। अब अगली गेंद ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, ब्यूटीफुल कमबैक। यहाँ पर बल्ले टूट गई है मेरे ख्याल में, उतने जोर से घुमाते हैं जमीन पर टकराए हैं बल्ले, और देखना होगा कि बल्ले बदलना होगा। जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बल्ले सुरक्षित हैं, 2 गेंदे फेंक चुके हैं। 23 रन और भी चाहिए मैच को जीतने के लिए। संतोष बेला मेरे ख्याल में कुछ आगे भेजना चाहिए थे इनको, कोशिश कर सकते थे। अब अगली गेंद ओवर द विकेट विघ्नेश, अच्छी गेंद उठा रही है, गेंद तो जा रही है, फिर एक बार फील्डर नीचे है और कैच हासिल कर चुके हैं। व्हाट अ कैच, संतू को बिग सैल्यूट, क्योंकि बहुत बड़े शॉट खेले आप। एक छक्के तो लगा दिए थे और दूसरी बार लगाने के चक्कर में आउट हुए हैं। और इस विकेट के प्रायोजक है टाई लाइन पचम्बला। बहुत खूबसूरत मैच, 3 गेंद सिर्फ बचे हैं नए बल्लेबाज के रूप में न्यूमैन। संतोष बेला आउट हुए हैं, उनके जगह पर संतोष नीरोली नए बल्लेबाज के रूप में आगमन हुए हैं। अच्छे अच्छे नामदार खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन कुछ आउट ऑफ फॉर्म दिख रही है यहां पर कुछ बल्लेबाजों ने। अब देखना बाकी है कि 3 गेंदे बचे हैं और भी 23 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, 23 रिक्वायर्ड। विकी फिर एक बार अच्छी गेंद उठा करके लाए, लोगों की तरफ गेंद जाते हुए मात्र 1 रन मिल जाएंगे यहां पर। 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 38, 22 रिक्वायर्ड। फिर एक बार तैयार, विकी ओवर द विकेट गेंद फेंकना चाहते हैं बायां हाथ के बल्लेबाज के लिए। निजाम के लिए 5वीं गेंद फेंकने के लिए तैयार है। निजाम बायां हाथ के बल्लेबाज हैं, इस वजह से अराउंड द विकेट गेंद फेंकने के लिए तैयारी हुए हैं। विकी तैयार है अराउंड द विकेट, अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी। अपील की है लेकिन अंपायर ने कोई असर नहीं, अंपायर की तरफ से कोई इशारा नहीं है। अंतिम गेंद बचे हैं, निजाम मौजूद है स्ट्राइक पर, 38, 22 रिक्वायर्ड फ्रॉम 1 डिलीवरी। विकी विघ्नेश क्षमा कीजिए, अराउंड द विकेट, और इस गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड, दूसरी वाइड लगा इस ओवर में। अब तैयार है फिर एक बार दूर वाली छोर से अराउंड द विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है निजाम मुट्टम के लिए, 21 रिक्वायर्ड। अच्छी गेंद उठा करके ला है, हवा पर गेंद, और इसी के साथ निजाम मुट्टम आउट। और इसी के साथ 20 रन के जबरदस्त जीत के साथ यहां पर काफी खुशी के नजारा है। वाईएफसी कन्नूर के सारे खिलाड़ियों के ऊपर नजर लगाएंगे तो पता सकता है कि पहली मैच हारने के बाद अब तक घूमकर नहीं देखे इस टीम, बहुत बड़े ऑप्सी आए हैं। आज तो स्पेशली इस टीम के लिए बहुत बड़े संतुष्ट होगा, क्योंकि अपनी आइकॉन तो अपने रिटर्न पर फॉर्म पर वापस लौट चुके हैं। धन्यवाद। Welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome. Yes, sir. Last match, man of the match award goes to none other than Mr. Arshad Bajal from
YFC Kannur. I'd like to welcome Mr. Rashad Vidal. Please come forward to receive your match number 15 of the day, number 4. Another one high voltage match between those teams. We have very good teams right now in the middle of the ground. That is, one is High Flyers Dubai. Another one is Good Black Pursuit. Very good teams in the particular tournament. That is, these both teams definitely they are in the middle to play against those teams. Definitely we have watching the match number 15. That is Mannamkuzhi Arts and Sports Club presenting MPL Season 10 with the leadership of Mr. Anifa Omanga. And we have Mr. Shamim Zaman Kalpara, one of the backbone of this MPL. And we have to very grateful to you. And definitely
Once again, warm welcoming for this particular tournament of MPL Season 10 over here. But takes a high flyers Dubai here. Jabi, the captain of Good Luck Pursuit, came into the attacking number 1 here. We have the striker, Mr. Shaki Jackie, a non-striker from the side of high flyers fired Machampadi. Yes, sir. One side we have Fahad Machampadi, another one we have Shaki Jackie, the tall guys in the middle right now to face Jabir. The first over, slightly making change in the fielding position of Fora. Shaki Jackie, have we go with the first delivery. Has the first delivery from the hands of Jabir Manjeshwar, the captain, comes into the attacking over number 1, taking the guard up right and over the stumps for Shaki Jackie here. Shakir, the known as the robot of Andram cricket, facing the first delivery of Jabir Manjeshwar. Very good sweep towards the fine leg. Meanwhile, fielder rushed towards the ball, collected perfectly and given right throw to the bowler's wicket keeper's hand. Meanwhile, taken comfortable welcome single over here. A very good running between the wicket. We can see from the batters slightly flicking the delivery to the fine leg region and taking single run. A good start from the side of Shakir for the side high flyers. Second delivery to Fahad Machampadi this time. Very good sweeper towards the short region and taken one more single here. Just rotated the striker in 2 deliveries. The scorecard is 2 on the board. Over number 1 is on progress right now in the hands of Jabir Manjeshwar. Captain so far perfectly bowled 2 deliveries. Once again facing Shaki Jackie. This time goes for cover drive. Fielder fixed, beat a bumble. But meanwhile satisfied with single more run here. They are not going for the big shot, just rotating the strike in the initial stage of over number 1. Because they knows very well Jabir Manjeshwar, one of the key bowler from the side of Good Luck Pursuit, came in the over number 1 to bowl for the perfect combination of batter, that is Shakir and Fahad Machampadi. Once again facing forward Machampadi this time. Nicely flicked. There is a catch or call, and this time couldn't able to control that
Fielder missed a chance over there. Rushed backwards, but he was not in the control. Meanwhile, ball landed safely. A very good effort from the fielder. We can see in the short mid-wicket region. Meanwhile, one more addition to the scorecard. Slowly towards the scorecard. 4 on the board. First over is in progress. First over is in progress of 4 deliveries. We have completed 2 more delivery left in this particular over number 1. Looking for the single sweep shot, single hand shot that one, but there was no connection at all between bat and ball. Meanwhile, they have collected one more run here in the form of leg by. Yes, definitely there was no connection at all between ball and bat. Meanwhile, ball hits to the pad of the batter. That is Jackie's pad. Meanwhile, the batter have been collected. One more addition to this scorecard here. Nice start. We can see from Jabin Manjesh, who just left 5 runs in 5 deliveries. Goes for a big shot this time. Nicely driven toward the deep onside region. Fielder Rahim Kumble walks into the ball. Meanwhile, taken couple of runs here. So far, a good over comes to an end after completion of over number 1. The scorecard is 7 on the board. There is no damage from the side of High Flyers Dubai. What a start from the hands of Rahim here. The dangerous man, the robot of un-tramp cricket, that is Jackie, just sweep the delivery towards the fine leg region and taken comfortable single. Yes, a drone which is introduced in the mark in this particular tournament to give a good view for the viewers. Definitely Stein is doing very perfect job. There is call a big appeal and umpire goes straight into the upstairs. Umpire goes straight into the upstairs to check. Yes, to check the run out over here. Yes, it might help the drone in such condition. Yes, it's called not out is a call. A very good perfection with the drone. We have seen in this last third umpire reply, which is came as a not out. And a very good comeback from the bowler here. 8 on the board after completion of 1.2 deliveries. Rahim Kumble so far perfectly bowling over here. Nicely delivered. Meanwhile, rushing towards this cook and completed a single run here. A very good running between the wicket. We can see both batters here doing perfect job in the batting marker. Checking for wide. Once again checking for wide. Umpire goes for
9 on the board. Umpires goes for upstairs here. Once again checking for the wide call. Yes, once again umpire is going for upstairs to check whether it is wide or not. Yes, it is no wide call from third umpire. The fade delivery, a legal delivery from the side of Raheem. A very good line and length towards stick was placing by Raheem in this particular over number second. The scorecard is 10 on the board right now. This time very good delivery. Meanwhile, straight away into the short fine leg region in the form of a leg by one more addition to the scorecard. Scorecard moving towards 11 on the board. What a good start we can see from Raheem Kumble in this particular over number second. Perfectly tackling the batters in the initial stage of innings number 1. Raheem Kumble once again taking the guard off right and over this time for Shakir Jackie here. A very good delivery, looks for the big shot, ups in the air. This time one bounce into the boundary line. 4 more addition. What a connection between the ball and bat. Nicely placed towards the deep onside region. One bounce boundary. 4 more addition to the scorecard. Scorecard jumping towards 15 on the board. A very good perfection by the batter, Shaki Jackie, the robot of Antram cricketer. Have been collected nicely towards the deep region. Once again goes for a big shot. This time same thing, and this time field fixed in the mid-off region. Collects perfectly. The big man Shakir Jackie walks back to the dugout. Shakir depart over here. What a catch in the mid-off region, fixed perfectly, and the catch was caught like anything. This is the perfection by the fielder, the man icon behind high flyers walking back to the dugout. Have a pin drop silence we can see from the dugout of high flyers. Definitely it is a big damage. Over number 2 completed. The scorecard is 15 on the board. Loss of 1 wicket. Big wicket have been lost from the side of high flyers. Jackie's innings comes to an end. It was a good stroke towards the mid-off region, but the fielder fixed perfectly in the mid-off. Caught perfectly in the region, and there is no mistake from the hands of the fielder. The big damage in the initial stage. After completion of 2 overs, the scorecard is 15 on the board. Making some changes in the fielding mark, settling down the fielders in the right position, sending the mid-wicket region fielder into the deep mid-wicket region. Fielding set up for Fahad right now. Fahad is doing very good job for a team like Team High Flyers Dubai. Once again, captain itself taken initiative to bowl here third over. Taking the guard up right and over. This time for Fahad Machampad. This time nicely sweep, nicely field of rushing towards the ball. A bit of bumble, but they went for the couple of runs. Here, have we go. Have a look. The Pumble made to go for a couple of runs. 2 more addition. With that Pumble, just a silly mistake, leads for the couple of runs. And making slight changes in the scorecard as well. Definitely, fielders has to be perfect in this situation like such a condition over here.
the tight match between those teams, the high voltage match between those teams. Every single score is very important for each teams. That's what we have to restrict each and every score over here. Once again, Jabi to Fahad Machampadi. Second time. This time nicely flick towards the fine leg region. Meanwhile, Sati is rushing towards the ball. Collects perfectly and given right throw to the wicket keeper's hand. A very good collection we can see from Satish Majingava. He came into the form back right now. He was on unformed, but this time in Mannamkuzhi, he came into the back into the form. That is what we can see. We have witnessed in the last previous match. He have batted very nicely in the previous match. Once again, Jabi comes into the attacking bowling number 3 to Tachi Musori. This time Tachi facing first delivery. Nicely driven to the short fine leg region. Meanwhile, call for a couple of runs, satisfied with single. Because they knows that the ball is in the hands of fielder. That is very danger for the batter to run between the wickets here. Have a look at the crackers are blasting and this particular night, the day number 4. They're making very colorful entertainment. The music, the match, the fielding, batting, bowling, everything is gives goosebumps for the people. Once again, reverse sweep, nice connection. Meanwhile, just going towards the fielder's hand and collects single more addition to the scorecard here. 20 on the board after completion of 2.4 deliveries. 2 more delivery left in this particular over number 3. A very good comeback we can see from Jabir Manjeshwar, the captain. Not letting the batsman to go for big shot. Restricting completely over here in this third delivery. Once again, this time away from the leg stump. 1 more addition, 1 + 1, 2 addition to the scorecard. Slightly moving towards 22 on the board. Definitely he have to minimize the extras because they all already scored 22 run. Around 40 to 48 run is very good total. In such a condition like fed light, dark light, it is not at all easy to chase around 40 to 48 runs over here. Nicely placed through the deep region. Meanwhile, it goes to the boundary line. Crossing the boundary line. 1 more boundary to the account of Fahad Machampadi here. What a stroke from the hands of Fahad. 26 on the board. Very good connection between ball and bat. Perfectly reverse sweep towards the deep region. Have been collected 4 more runs. Have a look at the boundary for the side of High Flyers Dubai. Have a look at the crowd silently watching this match between those teams. The interesting match between those teams. One side we have Good Luck Pursuit. Another one we have High Flyers Dubai. 26 on the board. Loss of 1 wicket. Last 1 more delivery left in this particular over number 3. Nicely reverse sweep towards the deep region. Meanwhile, there is a chance of couple of runs and this is suicidal. This is unnecessary running between the wicket. No need of running between the wicket. Why? When the ball is in the hands of fielder, it is definitely danger for the batter to take a couple of runs. This was suicidal. For High Flyers. The big man walking back to the dugout now. Tachi Musori walking towards dugout. Tachi's wicket have been lost by High Flyers. Fahad, you have did mistake, Fahad. Session and the scorecard is
27 on the board. Loss of two valuable wicket from the side of High Flyers Dubai. We have completed 3 overs, moving towards the over number 4. The new man came into the attacking over number 4. Sabira. Sharat, this time Sharat captain brings Sharat into the attacking over number 4. We are watching this beautiful match against those teams. Completed 3 overs. The scorecard is 27 on the board. Loss of 2 wickets. New man Sharat introduced in the bowling marker for Nasir Arimala. First delivery, nicely flick the delivery towards the fine leg region, and the completed single go call for a couple of runs. But the batter Fahad this time denied because Fahad did mistake in the earlier over. He don't want to do again. That is what the call came from Nasir for the couple. He denied completely in this particular over number 4. First delivery have been completed. Going for the second one. Taking the guard off right and over the stump for Fahad Machampad this time. The tall guy can go for big shot. Whether see. Yes, nicely. Nice flick towards the short fine leg region and taking comfortable single. That is what Fahad is doing. Not giving the wicket for the bowler. Not letting the bowler to take his wicket so far as now. Very good start. Very good start from the hands of Sharat here for good luck pursuit. Taking the guard once again for the new man Nasir Arimala. All the way from High Flyers Dubai. Nicely driven. There is a catch call, and this time comfortably taken single. The ball got pitched towards the ground and rised up in the air. Collected perfectly. There was no call for the out. Meanwhile, satisfied with single. One more addition to the scorecard. Sharat so far perfect delivery. 3 runs left in this particular over number 4. Once again, taking the guard of right and over this time for Sarah Fahad. This time nicely driven, swept and taken comfortable single here. A very good rotation of strike we can see from both the batters. Not going for big shot because Sharat is doing very perfect in the bowling mark. Have a look at the line and length towards the thick was placing perfectly in this over number 4. That is what Sharat came into attacking over number 4 here. Nicely, nice delivery. There is overthrow. That makes a couple of runs for the batter here. Definitely silly mistake. Call for the third number, but satisfied with couple of runs. That could have been controlled by himself. The wicket keeper throwed that which is not at all required in such condition. They were satisfied with single. That overthrow made to go the batter for the couple of runs. 2 more addition to the scorecard. 33 on the board. Loss of 2 wickets. Last 1 more delivery left in this over number 4. What an over comes in the end in the last delivery. Sharat once again for Nasir. This time there is no perfection with the bat. Slightly edge to the bat. Meanwhile going for the couple of runs. This time no. Don't make mistake again and again, Fahad. Here very good over comes and the over number 4 completed. 34 on the board. Loss of 2 wickets. Very good over comes and from Sharat for a good luck pursuit. So far bowlers did
And he did perfect job in the back of the stamps. Definitely one more run adding to the scorecard. 35 on the board. Fifth over is in progress right now. Nasir, we have Nasir in one side. Another one side we have Fahad Machampadi for team like team High Flyers Dubai. Shafil Hamid, the young man, nicely one towards the deep onside return. 1, 2, 3 into the boundary. What an height by Fahad Machampadi. Boundary have been collected for a second right now. 39 on the board. A very good stroke that I've been mentioning in the beginning of over number 5. The tall man all the way from High Flyers Dubai can go for the big shot that have been proven in the over number 5 here. Straight away into the onside region and gained 4 runs to the team over here. 39 on the board right now. Have a look at the sitting stroke towards the deep fine leg region, and single have been collected. Have a look at the drive. Have a look at the sensible cricketing stroke. We can see Van Fraud. Very good improvisation after hitting boundary, and soon after that, sitting shot we have seen from the side of Fahad Machampadi, and that leads 40 on the board right now. This time, very good delivery. Meanwhile, it goes to the favor one. Some bit of discussion between batter as well as a main umpire. It goes for checking for wide. The umpire going for the upstairs to check whether it is wide or not. 40 on the board. A very good score so far for the side of High Flyers Dubai. Yes, as I told, it is quite difficult to take a decision for the on-field umpires. We have Arish Padil. We have Mr. Mohan Ayadi. And the third umpire supporting Saif Padil. Definitely the live telecast will help for the good decision for the teams. Yes, its call is no wide call from third umpire. The delivery is fair right now. Legal delivery from the hands of bowler. That is Shafil Hamid, the young man, hero of last previous match. Shafil Hamid once again into the attacking mark, taking the guide right and round this time. Nicely delivered. Meanwhile, taken single more, going for the couple. Once again extra here. 1+1 added to the scorecard. 2 runs will be going to add for that particular delivery. The line was not at all perfect, slightly away from the leg stump region, and they have collected 1 more run. 2 runs will be adding to the scorecard. 42 on the board right now. Looking for the big shot, and meanwhile straight away to the fine leg region. Manoj doesn't make any damage, doesn't make any mistake in the fielding mark. Collected perfectly. 1 more addition to the scorecard here. Last 1 more delivery left in this particular over number 5. Once again, very good delivery so far. There is a bumble by Manoj and goes for the couple. This time, very good running between the wicket. We can see what a running between the wicket. We can see from Nasir Arimala. Wide call from official. Wide call. 2 consecutive extras have been placed by Shafil Hamid, and 2 couple of runs added. 3 runs for the scorecard. 3 runs. What a running between the wicket. Have a look at the dive. From Nasir Arimala. That is what sportsman spirit we can see from the particular person, Nasir Arimala. What a lightning running between the wicket we can see from the both batter Fahad
the opener. And Nasir is supporting Fahad. That's what required here. Understanding between each other. Very important in the game. Performance is very important. That is what we can see from the both the batter for High Flyers Dubai. 46 on the board right now. Last one more delivery left in this particular over. Number 5 looks for the big shot. Ups in the air. Fielders rushing towards the ball, and this time there is a bumble by the fielder. Meanwhile, goes for the couple of runs. That will be adding 2 runs to the scorecard. Have a look at that. Have a look at the drama in between the middle. The batter Nasir went for the big shot. Abs in the air. Field and couldn't able to control that catch. Meanwhile, he gives life for Nasir Arimala, that which leads to the scorecard 2 runs. After completion of over number 5, the scorecard is 48 on the board. Loss of 2 wickets. Yes, once again, thank you, DJ. Yes, a scorecard is 48 on the board. Very good score have been collected in 5 overs by High Flyers Dubai. Nizar Arimala and Fahad Machampadi is doing very good job in the batting marker. Now Sunil Singari into the attacking over number 6. Captain Jabir brings this time Sunil to bowl over number 6 for Fahad. Taking the guard off right and over the stamps for Fahad. The tall man once again looking for the big shot. Nicely driven to the onside region. Meanwhile, a fielder fixed perfectly just into the mid-on region and taking comfortable single here. The Fahad went for the big shot, but this time there was no good connection with bat and ball directly moves towards the mid-on region. And taking comfortable single over here. Very good start from Sunil. This time nicely flick inside edge. We can see from Nasir Arimala. That directly goes towards the hands of Manoj. Here indication coming from the center. Timeout indication coming from the center. One player, one fielder has to come inside the 30-yard circle. We can see Satish Mujangava entered into the 30-yard circle. Meanwhile, sending back Satish Mujangao and getting the deep fine leg fielder into the short fine leg. Yes, changes made for Fahad Machampadi this time. This time, once again, a very good running between the wicket. Wide +1, 2 run adding. This is not the right situation for the bowler to put wide deliveries, to place wide deliveries. We are in the final over. The bowler has to be restrict the batsman. Bowler has to be put right delivery, fade delivery towards the wickets here. Looks for the big shot, ups in the air. And this time, yes, collects perfectly. Refy Manjeshwar doesn't make any mistake in the deep offside region. Collects perfectly and sending Nasir Arimala into the pavilion. Sending Nasir to the dugout right now. Have a look at the connection by Nasir. The connection was perfect, but the power is not enough to cross the maximum boundary line. Meanwhile, the fielder Rifai fixed in the deep region. The tall guy doesn't make any mistake. Have been collected perfectly. We have seen Rifai's performance in the previous match. He was out of the park. What an fielding from Rifai Manjeshwar for good luck Pasota. So far, no issues for High Flyers Dubai because 52 on the board. Very good score have been collected by High Flyers Dubai. 52 right now. Last over is in progress. Once again, Sunil this time nicely flicked delivery towards the square leg reach and goes for the couple of runs. Call for couple, and this time a very good running between the wicket. We can see from the batter goes for the third. Not at all required. One shot call from umpire. Yes, one shot.
One shot as well as one more wicket have been fallen for the side of high flyers. Why they are doing mistakes in the middles? Sending good batter into the dugout. This time Sattar Billy Pada walking back to the dugout. Sattar is disappointedly walking back to the dugout. 53s on the board after completion of 5.4 deliveries. Last two more delivery left in this particular over number 6. Sunil once again for Machampadi settled down batter. Looking for the big shot. Nicely one to the middle region and chicken comfortable single. Ford goes for the big shot. But this time the perfection was not quite good in the batting mark. Meanwhile, ball goes to middle region, fielder perfectly fielded over there and given right towards the bowlers and taking a single, making scorecard 54 on the board. Last one more delivery in this particular over number 6. A nice little one to the onside region, a field of X there, and this time what a catch! What a catch from the small guy. One more wicket have been fallen. Rahim Kumble makes perfect in the deep region, sending back to the pavilion. Another one wicket have been fallen from the side of high flyers Dubai. A very good innings comes to the end. The scorecard is 54 on the board. 55 is the victory target for team Good Luck Pasota. Now the changes in microphone. I would like to call Mr. Darwin Michael to analyze upcoming innings. 55 is the victory target for Good Luck Pasota. Thank you. ഗ്രൂപ്പ് ചാമ്പ്യന്മാരെ താൽക്കാലികമായി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് 3 ടീമുകൾ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പോരടിക്കുന്ന ബി ഗ്രൂപ്പ് ആവേശകരമായ മത്സരങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ YFC കണ്ണൂർ, ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായ്, ഗുഡ് ലക്ക് പൊസോട്ട് 3 ടീമുകളും 6 പോയിന്റ് വീതം നേടിക്കൊണ്ട് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിൽ ഫൈനൽ ലാപ്പിലേക്ക് കടക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഈ മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കുന്നവർ ടേബിൾ ടോപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്പസമയത്തേക്ക് എന്നത് ഉറപ്പിക്കാം. High Flyers Dubai versus Good Luck Pasot, the high voltage game. Absolutely
100 watts of energy radiating match expecting by the full packed crowd of Mannamkuzhi. Ladies and gentlemen, warm welcome. Boys and girls, get ready for the action-packed second innings. Consecutive 55 runs of a target for the team. Good luck, Pasot. You have seen good luck have consecutive chasing innings. All set. Basit Ali and Sadish. Shakir Jaki, always a frontline weapon. Start with a wide ball. Gone way outside from the gate line from the right hander. Wide ball that opened the scorecard of good luck Pasot. First and on the board. We have seen a quality of Basit Ali, the man from Ulal. In the previous match, what a drive. Picks up that one nicely from his pads and sends it to the onside region. A crispy stroke from a masterful striker, Basit Ulal. Takes a run straight away off the mark. Good intention. Straight away off the mark, and Sadish Mujengao. Another such a star on strikers end for the team. Oh, trying for a scoop shot, and it's up in the sky and comfortably in the hands of the wicket keeper. Sadish Mujengao trying for a Surya Kumar Yadav type of stroke, but it was entered in the hands of the wicket keeper. Not gets a control. Sadish departs. Wicket number 1 down. 2 for 1. Jabir Manjeshwar comes in at number 3, the captain for the team. What a start by Jaki. Shakir Jaki, the gem from Mangalore. Bowling! What a delivery! That's a ripper bamboozling on the stumps. Jaki is just setting the tune. This is absolutely clinical execution on this occasion. Oh, Jabi is whacking back, and Jaki used tracks. What a delivery. Have a look at that one. Boom. Khatam. Early entrance for the mid-order batter. Wonderful start on the other side by high flyers. They were ready, their wings. And they were started to fly high in the sky. Trying for a safe shot. Works it on to the onside region. Straight away finds a run. And takes a single and off the mark by Manoj Sangadi. 3 runs on card by the team. Good luck Pasot. But what a 2 wickets in the front by Jaki Shakir. Absolutely shining Shakir right under the floodlight for the team. High flyers Dubai. Lofted shot straight down the ground and long chase for the fielder.
It just comes, but no chance over there. Ball win the race, and that's a boundary for 4. Important one, that breaking the shackles. Basit Ali from Ullal, the icon player, is always start with iconic touch for the team. Good luck, Posot. This man always keeping his quality and presenting his bat lift shot in such a brilliant way. Outstanding batter. 7 for the loss of 2. Moving to the last ball of the over. Counter attack is begin. Exactly that demand from the camp of Good Luck Posot. The planning in the first session that completely in the hands of the bowling side of high flyers. Icon versus icon. Both torpedoes Kana's player, and this time Shakir. What a way the man restrict over there. Appeal, but not a confident one from the fielders. Looks to be someone is coming, someone appealing, but that will be the end of the over. Yes, it is. What a absolute outstanding over from Shakir. 7 runs for the loss of 2. Good luck Posot in chasing. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വേദിയുടെ മുൻപിൽ നിരവധി വ്യക്തികൾ ഗ്രൗണ്ടിനടുത്തേക്ക് ബൗണ്ടറി ലൈനിന് അടുത്തേക്ക് കൂടി നിൽക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ്. ദയവായി നിങ്ങളൊന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം. ചെമ്മാരിമല ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യണേ. Seven for 2 after first over. 2 wickets lost by the team. Good luck Posot, but they need a victory here. This match winners will be sitting in the front line of B. Rafi is coming with the over number second, always coming and bowling a brilliant overs in power play for the team High Flyers Dubai. Lot of discussion going on there. Need to build a partnership by the batters of Good Luck Posot. "30 balls of cricket, 48 runs of targets." That's what Good Luck Posot looking from this match. Gafur Koppala sign-upന് വേണ്ടി report ചെയ്യുക. Gafur Koppala takes it through the onside region. Manoj Sangadi works it first run in a hard way. The man looking to surge the second, but restrict with a single. Basit just denied, and it was no chance in a comfortable way for coming back. Basit Ali, who has started with a boundary. This man is a big hope and dreams for the team. Good Luck Posot. They got a fantastic icon player from Kana. Here is again Rafi Naz. Coming back to reload the actions. Something special on his mind because the special man on strike isn't. Watchfully left. That goes way outside from the gate line. Giving an extra run. Wide been added. Moves on 9.
Good luck Posod is searching a partnership, and Basit Ali, the man, need to play a long innings. Lofted shot, high in the sky, high and hard, and absolutely handsome. That is terrific out of the ground by Basit Ulal. Such a beauty, showering beauty. Mesmerizing one out. Planning the counter-attack at his level best. Attack is the best medicine, that showcasing by Basit Ulal, treating with sixes and finding some juicy type of delivery and crunching outside. It's again high in the sky once again. It's landed, and there was a little bit time. It was up in the sky. It comes back for second. Little bit slower delivery from Rafinas, and once again Basis is taking and he's looking for some big shot. This is exactly the intention, that bringing a positive approach for the batting side of Good Luck Posod. 17 on card. Basit is ready to use the power play in power pack shots. Fantastic way the man approaching in front of over 50 score. Here comes again Rafinas, the man from Michilangod. Lovely rolling delivery and through the onside region. There will be powerful shot, but the fielder from mid-wicket, he comes to the deep square and grabs it that one nicely. Good way the man covers some yards and comfortably blocked it. Couple of runs. 2 more runs taken by the team. Good Luck Posod without any trouble. They got another double. Moving quickly, moving fantastically. The scorecard is working. Basit Ulal is striking. That is giving some goosebumps in the camps. Here comes again. Shot again from the spot. It's out of the park. What a biggie that is. When he playing this kind of shot in Sydney Cricket Ground, it will clear the distance. That kind of a caliber here, that kind of a potential here. What a stroke out of the park. Bye-bye ball. See you tomorrow. Basit on fire. A jacker of a sixer from Basit Ulal, setting the stage on fire. What a smoothie type of innings with some roaring statement that making by Basit Ulal with his muscle power, shot of authority, signature hit into the mid-wicket. Game on!
25 runs in first 11 balls. Power-packed, majestic power play so far for the batting side of Good Luck Pursuit. ആദ്യ ഓവറിൽ ഷാക്കിർ ജാക്കി കാണിച്ച മാജിക്കിന്റെ വിക്കറ്റ് ടേക്കിംഗ് അത് മറന്നേക്കൂ, പുതിയൊരു ചരിത്രത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കൂ മണ്ണൻകുഴി എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ബാസിത്തുള്ളാളിന്റെ ക്ലിനിക്കൽ ഫിനിഷിംഗ് മത്സരത്തിന് ചൂട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ആവേശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. Good Luck Pursuit rightly back in the track. This man is bringing the track on his custody with some sort of authority. Whatever, stamping his authority with scintillating shot. Huge six. Ball rest in peace. ആവേശകരമായ ക്രിക്കറ്റ്, അതിശയ ക്രിക്കറ്റ്, ആഡംബര ക്രിക്കറ്റ്, അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ്. മണ്ണൻകുഴി പ്രീമിയർ ലീഗ് അതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ലെവൽ കാണികൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. മഞ്ഞപ്പന്തിനെ എവിടെ കിട്ടിയാലും പ്രഹരിച്ച് മലപ്പുറത്തേക്ക് പറത്തുന്ന മംഗളൂരു സ്വദേശി ബാസിത്തുള്ളാൾ is taking the stage of Mannamkuzhi to lifting the fans of Good Luck Pursuit. This man is announcing his arrival as a force. Here it's last ball of the over, over number 2. This time the batters looks to be cross between the wicket. Easy way, in form of boy. Expensive over comes to an end. 19 runs came from this second over. It is 26 for the loss of 2 after 2 overs of power play. What a power play for the team. Good Luck Pursuit. നാല് പന്തുകൾ 29 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. 24 balls, 29 runs of target in front of Good Luck Pursuit. What a way they were sitting in the driving seat. But the mastermind Jackie back into the attack. Captain brings Jackie once again. ആപ്പു പച്ചിലമ്പാറ മൈക്ക് പോയിന്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആപ്പു പച്ചിലമ്പാറ. Cleverly placed. What a placement. Absolutely wonderful way the man opened the face of the blade in the last moment. And just an elegant touch at giving couple of runs comfortably from this park. What a perfection. This man is absolutely a gem of a player. Basitullal. Staggering genius. That was straight to the offside region. Long off finds and West. No, in the end will be a trouble or what? Manoj Sangadi. Diving dolphin in this pool. Is it out or what? The question goes upstairs. Have a look at that one. Fabulous effort in the field. It will be. Need to check both ends. Oh, Manoj Sangadi, you such a fantastic athlete. And we need to wait for the confirmation from third umpire. What a tournament. ആവേശഭരിതരായി 4 ദിനവും മത്സരങ്ങൾ ആഘോഷത്തോടുകൂടി ആനന്ദമാക്കുന്ന കായിക പ്രേമികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് സമ്പത്ത്. Hanif Umanga എന്ന one-man army. 26 years of legacy in organizing by Hanif Umanga.
and Shamim Zaman Kalpara giving more colors for this tournament. അതുപോലെ ബാരിക്കേഡിൽ ചാരി നിൽക്കുന്ന കാണികളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും പുതുതായി വന്ന കാണികൾ തന്നെയാണ് ബാരിക്കേഡിൽ ചാരി നിൽക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞവർ ഉടനെ അനുസരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണയും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം യെസ് ശക്തമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങളോട് കാണിച്ചതിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും ഏതെങ്കിലും കാണികൾ ഏതെങ്കിലും മൂലയ്ക്ക് ഓക്കെ. Both the ends batters are safe. They were comfortably completed. "29 on card with that single. Manoj Sangadi on strike right now is giving a good company on the other side when 2 wickets falls. Manoj just working with couple of singles and Basit Ali taking the charge and responsible to give some fire as a fire force. Shakir Jaki, the magician in bowling, setting the right fielders and coming into the attack again. Trying for a scoop shot. Just managed to get that one nicely. Manoj Sangadi was tried over the infield to place that delivery, but little bit missed, but it is safe. This is exactly the team wanted at this time. Almost runnable target. 25 from 21. Not a risky one. If these two stands, it will be looks easy. That exactly the thing of the team coach Badruddin. Nicely up on the face, but it goes to the straight region. Coming back for second. This is interesting. This is interesting. Oh man, Manoj, you are from out of the planet. Something supernatural. Standard of international cricket. Absolute athleticism at its level best. Manoj Sangadi. Oh, look at that one. Goosebumps. Man, oh man, boy, oh boy. You genius, Manoj. But you need to go back. It was in the end one more wicket in an important time. Meanwhile, they were moving to the junction of the second innings. They lost a gem of a batter like Manoj Sangadi. And new man Rahim Kumbala joins on the center onto the non-strikers end. Basit Ulal on strike. Nicely played, watchfully giving the treatment first and completed. He is calling, but this time respondis looks really good from Rahim Kumbala. Good piece of a run between the wicket by the batters in 2 times. Magnificently, the man Basit Ulal single-handedly making the match here for the team. Good luck for Sword in this half stage. 1 more ball to go from the over. 33 for 3. 22 required from 19. Jackie with his last ball and while up on the face of the bat once again. First and complete and looking. Oh no. It looks to be tight. Good call from Rahim to stop the second. End of the over number 3. 34 for the loss of 3. Good luck for Sword. And they need 21 from 18.
another table toppers for sure. What an outing for YFC Kannur. Harris, the team owner, is enjoying in front of the com box along with the players of YFC. That's a behind the screen action. And also the time for the toss for the next match. YFC Kannur, CSC Paivalige. Captains, please report for toss. Nasir Arimala coming. Moving to the second part of the second innings. Nicely plays that one and beats infield, and there will be a long chase, and Shakir is really quick, and Basit and Rahim both are very quick between the wicket. Easy two without any trouble for the batters of good luck pursuit. Moving fantastic way. A fantabulous batting showcase. A delivering and showcasing by the senior batter. The iconic player from Good Luck Pursuit is working wonderfully. Trying for a safe shot, beats infield, and exquisite timing. Ball rises away towards the fence for a boundary. Absolute majestic, absolute magnificent, absolute entertaining one. The innings turning out to be from Basit Ali. What a player. A serious, talented player. At this crucial stage, the man crafting an innings. He's just building a music here. What a wonderful way the man is working. Just like a music stage, the man start with a melody. Now he's going haro hara in style with some terrific hits. He's on 34. It's again. Just another one. Fantastic cricket that's showcasing under a ball target. 14 required from 15. Can you imagine? A pure talent, pure quality, pure brilliance, pure sheer brilliance. How can you describe the performance of Basit Ali at this stage? Incredible. Rahim Kumbala on strike for the first time and just managed to get a single between the wickets. Now runnable target for the team looks easy and comfortable cushions to the dugout of Good Luck Pursuit as well. What a match. What an entertainment. Basit Ali on 35. Safe shot, beats infield. Once again the rocket onto the carpet and rises away towards the fence for another boundary. Magical scenes. Oh man, you just genius. Taking Mannamkuzhi to Ullal by Basit Ullal. How big innings this is. How electrifying innings this is. Such a standard of innings. Such a gem of innings. Supercalifragilisticexpialidocious innings by Basit Ullal. You rocked it. Setting an agenda, my dears. Oh, Bowley! Absolute entertainment comes to an end finally. The curtains are fall. A big innings comes to an end. Mannamkuzhiയെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച ഇന്നിങ്സിന് ഇപ്പോൾ കൈയടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കൈയടിക്കും? അടിക്കടാ മക്കളെ കൈ. Basit going back. What an innings. Such a standard. True standard. Innings that remember for a long time for Good Luck Pursuit. 39 runs from just 18. End of Basit entertainment. 46 for the loss of 4. 9 required from 12 balls. 12 പന്തുകൾ 9 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. Wonderful way it's set. Wonderful way the platform is set. And the vehicle and fuel, everything is loaded on the track by Basit. Just a finishing touch that required from the other batters.
12 പന്തിൽ 9 റൺസിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ ബാസിത്തിന്റെ മാസ്മരികമായ 39 റൺസുകൾ മണ്ണൻകുഴിയെ കോരിത്തെരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ആവേശകരമായൊരു മത്സരം. 55 റൺസ് എന്നത് അണ്ടർ ദ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഇംപോസിബിൾ എന്ന് വിധി എഴുതിയ മത്സര വിധികർത്താക്കൾ കട്ടൻ കാപ്പിയും കുടിച്ചുകൊണ്ട് മൂലക്കിരിക്കുമ്പോൾ ഗുഡ് ലക്ക് പൊസോട്ട് is coming and roaring. They were ready to conquer. Sattar Ballipadav needs some wicket, needs some dot ball in a bundle. Rahim. No ball is the call. It will land and there will be coming back for second. Easy, juicy, fancy. Rahim Kumbala. No ball to start. Give some license for Rahim and he makes it between the wicket in an easy way. Need to execute the free hit again. It's another no ball. ഇനിയൊരു കഥ പറയാം. വർഷങ്ങൾ 15 പിറകോട്ട് ചിന്തിക്കണം. MPLന്റെ ആദ്യ സീസൺ +2 കഴിഞ്ഞൊരു 18-കാരൻ പയ്യനെ ഒരു ടീം പിടിച്ച് നായകനാക്കി ഇറക്കുന്നു മണ്ണൻകുഴിയിൽ. സെമി ഫൈനൽ വരെ ആ താരം എത്തിക്കുന്നു ആ ടീമിനെ. ഇന്നിതാ ഗുഡ് ലക്ക് പൊസോട്ട് ഒരു വലിയൊരു ചേസിനരികിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ നായകൻ അന്നത്തെ 18-കാരൻ 15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗുഡ് ലക്കിന്റെ കോച്ചിങ് പദവിയിലിരിക്കുന്നു. പേര് ബദ്രു ഗുഡ് ലക്ക്. വാട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് entertainer as a player, as a coach. Badruddin setting a team into the top of the table. The way and door is open. 12 balls, 4 required. Wonderful. Here is just a finishing touch required for the team. Lofted shot to try, but this finds a fielder, takes a single. Easy way, the team is moving. രചിച്ച തിരക്കഥകൾക്ക് വിട. 50-ന് മുകളിൽ ചേസിംഗ് നടക്കില്ല എന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് വിട. പുതുചരിത്രം രചിക്കുന്നു. മണ്ണൻകുഴി ആവേശത്തിലേക്ക്. MPL അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ല എന്നൊരു തിരക്കഥ രചിച്ചുകൊണ്ട് ബാസിത്തിന്റെ ശക്തമായ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം. That's high in the sky. Is it a catch or what? Yes, it is a catch. പടിക്കൽ ആ വിക്കറ്റ് ഉടയുന്നു. വിജയത്തിനരികെ നിൽക്കുമ്പോൾ റഹീം കുമ്പള just walking back. പുതിയൊരു ബാറ്റർക്കായിരിക്കുമോ ഫിനിഷിംഗ് നിയോഗം എന്നതുപോലെ മറ്റൊരു താരം കടന്നു വരുന്നു ഡഗൌട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് ഷബീർ ചെബി, the man from Papila. 53 for 5 by the team. Nine balls remaining. 2 runs required. Here comes. Easy job for the batters. Nicely gives it that one and first run completed. That brings the scores are level. Scores are level. Just one required to seal the deal. What a game of cricket. Underarm cricket at its level best. That's it, and that's a victory. A historical chase under the floodlight by the team. Good luck, Posot. What a chase. Nothing is impossible when you come in the front row with a confidence. That is, we have witnessed Basitulal salute, and that man is single-handedly takes the game away. Congratulations.
സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചരിത്ര നിയോഗമായൊരു പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ്. വെൽക്കം ബാസിത്തുള്ളാൽ ടു റിസീവ് ദി അവാർഡ്. And I welcome the man behind Good Luck Password, Nasir Good Luck. Welcome you to the stage to give away the Player of the Match award. And now we can see for the YouTube viewers the highlights of Basit innings. Have a look at that one. Easily the man playing the shot. Wonderful innings. It was crafted superbly. Outstanding type of cricket that showcased. Reverse stroke, proper stroke, straight drive, cover drive, stroke with so many authority in onside and offside. What a player, what a setting. Have a look at that one. Absolutely fantastic scenes for the cricket fans when watch the highlights. Time for the presentation. Good Luck Password, the icon player. Come and receive the Player of the Match award. And it's a time. Put your hands together for Basit. Wonderful performance. Mannamkuzhiയെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച പെർഫോമൻസിന് പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ്. And 500 offer by. And there is 1,000 offering. Ammi Crown offering a special cash award. Arshad Marwa 2,000. Ammi almost 4,000. Yes. And 500 another offer from Good Luck member Ajju. Lot of awards. 1,000 for another person. Lot of awards and accolades. Such an innings, such a stylish innings. Outstanding. Receiving the gift right now. We can see that one. Mohan Ayadi, our match official, is giving away the gift from MPL. And Altaf, the dream owner, is giving away a special cash award for Basitullal. Wonderful, wonderful. That's it from the presentation. Cash awardകൾ കൊണ്ട് മൂടി, സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ട് മൂടി, അതിശയ പ്രകടനത്തെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് മണ്ണംകുഴി. Congratulations. And that's it from the presentation. And changing the voice, welcome back Abdul Rahman Bekoor. माइकल, बहुत बड़े मैच, खूबसूरत मैच. गुड लक को जीत दिलवा दिए बासित. बहुत खूबसूरत मैच के अंत हुए हैं और एक जबरदस्त मैच के लिए शुरुआतें हो रही हैं.
ओके। धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। और एक जबरदस्त मैच आने वाले हैं। एक तरफ YFC कन्नूर, YFC कन्नूर और CSC पैवलिका के बीच में जोरदार मुकाबला होने वाली है। सभी टीम एक ही चाहते हैं कि MPL के सबसे आगे जाकर खड़े हो जाऊं। गुड लक पसूर तो शानदार जीत कर आत्मविश्वास के सबसे आगे जाकर खड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि YFC कन्नूर और CSC पैवलिका के बीच में इस मैच जारी है। YFC कन्नूर भी खेले हुए पहली मैच पर हार माने थे और इसके बाद घूमकर नहीं देखे हैं। अब आए हैं आरंभिक बल्लेबाज टॉस हारते पश्चात पहली बल्लेबाजी करते हुए। आरंभिक बल्लेबाज है रियाज चम्मू और रियाज यन्नम। चम्मू अरिमला, रियाज यन्नम, दो खिलाड़ी मौजूद हैं मैदान पर। YFC कन्नूर के लिए गेंदबाज के रूप में गेंदबाज भी तैयार हो चुके हैं शिवमाली। शिवमाली तो शानदार ऑलराउंडर गेंदबाज के रूप में, अटैकिंग गेंदबाज के रूप में योगदान दे रही है। तब रियाज यन्नम स्ट्राइक पर मौजूद है। बहुत बड़े मैच, लाजवाब मैच। विकेट कीपर के रूप में नौफल जोड़कल। खूबसूरत मेला सीजन 10 MPL। आए हुए सभी दर्शकों को फिर एक बार स्वागत करना चाहता हूं। YFC कन्नूर के लिए पहली ओवर के रूप में शिवमाली गेंद फेंकने के लिए तैयारी होते हुए हिंदुस्तानी स्कूलन से। ओ बढ़िया गेंद, हो। पहली गेंद पर विकेट। वाह भाई वाह, व्हाट अ डिलीवरी। शिवमाली के जो ड्रीम विकेट, देखिए खूबसूरत विकेट, पहली गेंद पर छटका मिले हैं CSC पैवलिका के लिए। वाह भाई वाह। पहली विकेट पतन हुए, नए बल्लेबाज के आगमन हुए हैं। अक्षय पैवलिका के आगमन हुए हैं CSC पैवलिका के लिए। शिवमाली पहली गेंद पर विकेट, वो भी रियाज यन्नम के विकेट। रनिंग मिशन, रन मशीन आउट हो चुके हैं। अब तो दूसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार है शिवमाली। दूरबाली चौक से अक्षय पैवलिका के लिए, और इस गेंद को कट करना चाहते थे ऑप्शन के बिल्कुल बाहर। वाइड के इशारा किए, वाइड की मदद से खाता खोल चुके हैं CSC पैवलिका ने। और इस गेंद को खेला गया है, गली इलाके पर गेंद गई, तब तक फील्डर मौजूद थे। 1 रन, और इस 1 रन के सहारे के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए 2 रन। 2 गेंदों पर 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत खूबसूरत योगदान देते हुए यहां पर शिवमाली। पहली गेंद पर विकेट, वो भी रियाज यन्नम के यहां पर छटकाए। सबसे बड़े विकेट यहां यही होगा CSC पैवलिका के लिए, सबसे बड़े सफलता। अगली गेंद लेकर तैयार है लंबे कदमों के साथ शिवमाली हिंदुस्तानी एंड से। अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, व्हाट ए डिलीवरी। नौफल जोड़कल ने कोई दिक्कत नहीं किए, गेंद से सलामत हाथ में लिए, औपात दिए, तब तक कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। स्ट्राइक पर मौजूद है चम्मू अरिमला। शिवमाली तो गेंद फेंकने के लिए तैयार है चौथी बार। चम्मू, इस गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑफ इलाके पर, गेंद जब को जगह बनाए तब तक का मात्र 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 3 ऑन द बोर्ड। 4 गेंदें फेंक चुके हैं, 5वें गेंद के लिए तैयारी करते हुए।
लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानी स्पिनर से शिवम अली। फिर एक बार अक्षय के सामने शानदार शुरुआती देने के बाद पांचवें गेंद, और इस गेंद लेग स्टंप पर थी, खेला है, हल्के से टर्न हुए थे गेंद, इस गेंद की गति को समझ नहीं पाए, अंतिम क्षण पर इन्होंने बल्ले घुमाए, तब तक स्क्वायर लेग पर गेंद गई 1 रन, और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 4 रन। अच्छी गेंदबाजी के मजारा करते हुए शिवम अली, शानदार शुरुआत है। अब अगली गेंद चम्मू अरिमला के लिए, खतरनाक खिलाड़ी है, आरंभिक खिलाड़ी के रूप में भेजा गया है पावर प्ले इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पर फिर एक बार तैयारी करते हुए मैदान के कोने कोने पे नजर लगाते हुए चम्मू तैयारी हो रही है। चम्मू अरिमला, फिर एक बार शिवम अली की आखिरी गेंद, 4 रन खाते पर 1 विकेट के नुकसान। One wicket after completion of 1 over. Season 10 बहुत खूबसूरत मेला 2026 सेलेक्टेड मन्नमकुझी ने पेश की है इस प्रतियोगिता। चौथी दिन जा रही है, बी पूल के मैच आप देख रही हैं। नए खिलाड़ी की योगदान दे रही हैं, अरशद बजाल के आगमन हुए हैं। अरशद बजाल अपनी फॉर्म पर वापस लौटने से बहुत काफी संतुष्ट है खुद से, और टीम सारे संतुष्ट है। वाईएफसी कन्नौर के डकआउट में काफी अच्छी नजारा दिख रही है, क्योंकि अपनी आइकॉन खिलाड़ी ने अपनी फॉर्म पर वापस लौट चुके हैं। लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट अरशद बजाल, बायर के कमरोडन से लंबे रनअप के सहारे लेने के बाद तैयारी करते हुए, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, सीधे गेंदबाज की तरफ, अरशद की तरफ खेले हुए हैं। कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। अक्षय स्ट्राइक पर है, 9 सेकंड पर चम्मू अरिमला, लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट अंपायर को घोष करते हुए, और इस गेंद उल्टा बल्ले में खेलना चाहा, बहुत अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, और इसी के साथ दूसरी गेंद भी नोट हो चुके हैं। लाजवाब शुरुआती देखिए वाईएफसी कन्नौर के शुरुआती गेंदबाज, पहली गेंद पर गोल्डन डेक पर आउट हुए थे रियाज रनम आउट होने की जगह पर नए खिलाड़ी आए हैं, अक्षय पैपलिका अब तैयार है दूसरी ओवर के रूप में। यहां पर अरशद बजाल भी काफी फॉर्म पर गेंदबाजी कर रही हैं। तीसरी गेंद लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट अक्षय, इस गेंद को खेला गया है, गली इलाके पर फील्डर मौजूद है, इन्होंने हल्के से चकमा का है, तब तक 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किए, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 7 रन। 3 गेंदें फेंक चुके हैं, रनों की संख्या अभी भी 7। 1 विकेट के नुकसान पर अब तैयार हैं अरशद बजाल, चम्मू अरिमला के लिए गेंद फेंकना चाहते हैं। बायर कई कम्बर उड़न से लंबे कदमों के साथ गेंद फेंकते हुए अरशद बजाल ने वाईएफसी कन्नौर के आइकॉन खिलाड़ी दूर वाली छो से गेंद फेंकते हुए लेफ्ट आर्म और विकेट जमीन पर टपकाने के बाद अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, मिड विकेट पर गेंद जाते हुए फील्डर तैनात है, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए, तब तक मात्र 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 8 रन। 8 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। अब तैयार हैं अरशद बजाल, लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट। अरशद बजाल के सामने अक्षय, अक्षय इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, बिल्कुल इन सिंगर गेंद थे, शरीर और बल्ले को एक साथ लाए, बिल्कुल मिड विकेट की तरफ इन गेंद आए थे, तब तक कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। फिर एक बार तैयार है लेफ्ट आर्मर ऑन द विकेट, और इस गेंद बहुत अच्छी गेंद, वाह भाई वाह, व्हाट ए बॉलिंग परफॉर्मेंस। अरशद 1 ओवर नो मेडन, 2 रन नो विकेट, बहुत अच्छी ओवर की समाप्ति।
नए गेंदबाज के आगमन हुए हैं इलेक्ट्रिक बॉलर नासिर उल्लू, उनके आगमन दिख रही हैं। लंबे कदमों के इस्तेमाल करते हैं इन्होंने हिंदुस्तानी स्कूल से। आखिरी मैच में 5 रन 2 विकेट, बहुत बढ़िया गेंदबाजी किए थे। अब तैयार है पहली गेंद लेकर चमो। इस गेंद को रचनात्मक तरीके के साथ खेला है चम्मू। स्फोटक शैली छोड़कर इन्होंने बिल्कुल सेंसिबल शैली पर आए हैं, डिफेंसिव मोड पर है। 1 रन हासिल किया और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 9 रन। नासिर उल्लू फिर एक बार तैयारी करते हुए दूर वाली चोट से लंबे कदमों के इस्तेमाल करने के बाद हिंदुस्तानी स्कूल से देखिए शानदार शैली इनके हैं। अब देखिए कोई जमीन पर नहीं टपकाते हैं, छुप छुप के आते हैं, गेंद हल्के छोड़ते हैं गेंद से और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है और इसी के साथ नासिर उल्लू टेक द विकेट, लॉस द सेकंड विकेट CSC पहलवाली का। व्हाट अ बॉलिंग नासिर उल्लू। नासिर उल्लू दूसरी गेंद सीधा खेला है लॉन्ग ऑफ इलाके पर, तब तक एकमात्र रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 10 ऑन द बोर्ड। तीसरी ओवर की प्रगति पर है। शानदार गेंदबाजी के मजा राजा यहाँ पर चलते हुए पहली शिवम अली स्टार्टिंग तो बहुत अच्छे थे, रियाज सन्नम को 0 पर आउट किया और इसके बाद अरशद बजाल 2 रन दिए। अब नासिर अच्छी गेंद उठा कर खेला है लॉन्ग ऑन पर, फिर एक बार गेंद जाते हुए फील्डर तैनात इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाया, तब तक 1 रन। नासिर अरिमला और शुहाइब के बीच में इस साझेदारी जारी है। सीनियर खिलाड़ी चम्मू अरिमला मौजूद हैं स्ट्राइक पर। चम्मू अरिमला और शुहाइब अब तैयार हैं ओवर द विकेट। नासिर उल्लू और इस गेंद को खेला गया है सीधा हवा पर और इसी के साथ टेक द सेकंड विकेट नासिर उल्लू। व्हाट अ बॉलिंग, देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी, दिखने में बिल्कुल हल्के गेंद है और दूसरी विकेट भी इन्होंने हासिल किए। लाजवाब ओवर। के लिए काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, सालों संग्राम क्रिकेट में मौजूद है CSC पहलिका में। नासिर के सामने अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, व्हाट ओवर, देखिए कितनी शानदार ओवर। 1 ओवर नो मेडन 3 रन 2 विकेट। आखिरी 2 मैच में इन्होंने 2 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट इन्होंने हासिल किए। लाजवाब गेंदबाजी, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी किए हैं नासिर उल्लू। और उससे पहले अरशद बजाल और पहली ओवर शिवम मली 1 ओवर नो मेडन 6 रन और 1 विकेट। अरशद 1 ओवर नो मेडन 2 रन नो विकेट। नासिर उल्लू 1 ओवर नो मेडन 3 रन 2 विकेट। व्हाट अ बॉलिंग YFC कानो। अब अरशद बजाल कंटिन्यू जारी रखने के लिए बायर के कम रन से अरशद बजाल के आगमन हुए हैं।
अरशाद की पहली गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ गुम गई थी। इस गेंद को अंतिम क्षण पर इन्होंने कलाई के इस्तेमाल किए हैं चमू अरिमला ने। 1 रन हासिल किए, रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 12 ऑन द बोर्ड। चौथी ओवर के पहली गेंद फेंक चुके हैं अरशाद बजाल, उनके सामने शाफी। कलाई के इस्तेमाल करने वाले सबसे खूबसूरत बल्लेबाज हैं। एक शाफी अमले, एक परवेज कुंजतूर, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और इस गेंद को देखिए, शानदार सिप की हैं, सिप के साथ अपनी खाता खोल चुके हैं। तब तक यहाँ पर रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 13 ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 3 विकेट। बहुत अच्छी तरह जा रही है वही एफसी कन्नूर। वन द टॉस सेलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट, ये तो फैसला के साथ दे रहे हैं। गेंदबाजों ने अच्छी फ्लिक की है, गेंद कोई खतरा हो सकती है लेकिन कोई मौका नहीं यहाँ पर। डायरेक्ट हिट लगती तो यहाँ पर कुछ मामला हो सकती थी, लेकिन करीबी मामला तो नहीं हुआ यहाँ पर। करीबी मामला थी लेकिन थ्रू नहीं पहुंचे थे। अब अगली गेंद अरशाद बजाल दूर वाली चोट से लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट। अंपायर को कोच करते हुए शाफी एमएलए के लिए गेंदबाजी कर रही हैं। शाफी सीनियर के लिए दूर वाली चोट से लंबे कदमों के साथ। व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए डिलीवरी। देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी जा रही है। अभी भी 14 रन, चौथी ओवर की मुकम्मल जा रही है। 4 गेंदे फेंक चुके हैं, 5वें गेंद लेकर अरशद बजाल। और इस गेंद को उल्टा बल्ले में उल्टा खड़े हुए थे, लेफ्ट हैंडर बन गए थे, इस वजह से वाइड भी नहीं मिले हैं। व्हाट ए टेक्निकल गेंदबाजी कर रही हैं। दिमाग की बत्ती जलाकर इन्होंने गेंद फेंकते हैं, बल्लेबाज के कमजोरी समझकर बल्ले फेंकते हैं। और इसी के साथ अरशद बजाल को पहली विकेट, शाफी सीनियर आउट। चार विकेट के नुकसान पर बिल्कुल परितापी स्थिति को सामना करते हुए सीएससी पब्लिका के डकआउट में पूरी तरह निराश छाया हुआ है। अब क्योंकि 14 रन 4 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट भी नुकसान हो चुके हैं। शुरुआत को तारीफ करना होगा, शिवम अली ने शुरुआत ही किए थे। और अरशद बजाल की खोटा देखिए, 2 ओवरों में इन्होंने पहली ओवर में 2 रन कर चुके थे। इस ओवर में इन्होंने 2 ओवर 5 रन 1 विकेट अरशद बजाल के। क्या गेंदबाजी की है, 7 डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी के मजा रखी है। ओ बढ़िया गेंद, व्हाट डिलीवरी। गेंदबाज को कितनी बड़े साथ दे रही है नौफल जोड़कल। देखिए विकेट कीपर के रूप में क्या योगदान दे रही है विकेट कीपर कम बैट्समैन नौफल जोड़कल। सही साथ दे रही है अपनी टीम के हर गेंदबाजों को। बॉलर नाजिर चरगोली ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रही हैं। काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं, सालों से कप्तान के रूप में खेलते हुए खिलाड़ी हैं। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, ड्राइव किए, हवा पर थी लेकिन पहुंच नहीं पाए गेंद तक। तब तक ही 1 रन दौड़कर पूरा किए और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 15 ऑन द बोर्ड, 15 रन। 2 गेंदे फेंक चुके हैं। वही एफसी कन्नूर के डकआउट से आवाजें सुनने लगे हैं क्योंकि काफी खुशी के नज़ारा वही एफसी कन्नूर के डकआउट में दिख रही है और शांत दिख रही है सीएससी पब्लिका की डकआउट, क्योंकि यहाँ पर रन बनाने में मुश्किल स्थिति को सामना कर रही हैं बल्लेबाजों ने। अब तैयार हैं। और इसी के साथ फिर 1 विकेट,
റിയാസ് ന്യൂ സ്റ്റാർ ഔട്ട്. MPL 10ാം പതിപ്പ് പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കവേ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ, വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒട്ടനവധി അതിഥികൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ ടൈംസ് ചാനൽ CEO രഘു ഭട്ട് മഞ്ചേശ്വരം. അദ്ദേഹം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി, സന്തോഷത്തോടുകൂടി പ്രധാന വേദിയിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. नज़ीर के खाते पर पहली विकेट. अब बस रियाज कुंजतुर्ग अपनी साथी खिलाड़ी को आउट किया इन्होंने. नज़ीर चिरगोली फिर एक बार नए बल्लेबाज के लिए उठा कर खेलना चाहा. हो व्हाट ए बॉलिंग नज़ीर चिरगोली. नए खिलाड़ी अजीम दीना के आगमन हुए हैं. अब देखना होगा कि नज़ीर भी कोई किसी से कम नहीं है, हर गेंदबाज की तरह. ओवर द विकेट, अच्छी गेंद उठा करके ला है. हेलीकॉप्टर शॉट यहां पर फील्डर की सामने आकर गिरे हैं. तब तक दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है, लेकिन मना की है. और इसी के साथ एक रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 16, लॉस ऑफ 5 विकेट. 5th ओवर प्रोग्रेस 5 ओवर की प्रगति पर मैच को देख रहे हैं. अब तैयार हैं अगली गेंद लेकर. नज़ीर चिरगोली 5 गेंदे फेंक चुके हैं, 2 रन कर चुके हैं, 1 विकेट भी. व्हाट ए डिलीवरी, व्हाट ए ओवर, 1 ओवर नो मेडन, 2 रन 1 विकेट. व्हाट ए ओवर. नज़ीर चिरगोली क्या गेंदबाजी कर रही है. पहली शोमली, दूसरी अरशद बजाल, तीसरी इलेक्ट्रिकल बॉलर नासिर उल्लू, चौथी अरशद बजाल, 5वीं नज़ीर चिरगोली. हो व्हाट ए ओवर. आखिरी 5 ओवरों में रन संख्या देखिए, रनों की संख्या 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर. आखिरी ओवर, डेथ ओवर बचे हैं. चम्मू अरिमला भी बचे हैं. चम्मू अरिमला. अब देखना होगा कि आखिरी ओवर में कितना रन बटोर सकते हैं. विघ्नेश को लाया गए हैं. सामने वाली टीम के सामने विघ्न बनकर खड़े हो जाएंगे, देखना बाकी है. हर खिलाड़ी विघ्न बन गई है. अब तो विघ्नेश आखिरी ओवर के रूप में. राइट आर्म ऑफ द विकेट, अच्छी गेंद उठा करके ला है. गेंद तो जा रही है मिड विकेट पर 1 रन आसानी के साथ, और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 17 रन, 17 ऑन द बोर्ड. बल्ला बदल रही है दोनों बल्लेबाजों ने. मैदान के बीचों बीच में आकर, पिच के बीचों बीच में आकर वापस अपनी अपनी जगह पर जाते हुए चम्मू अरिमला आरंभिक बल्लेबाज अभी भी मौजूद है. अब तक उन्होंने सिर्फ 9 रन बनाकर खेल रही है, 11 गेंद को सामना किए. सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज है चम्मू अरिमला. और बता विकेट विघ्नेश. उल्टा बल्ले सफल हुए. शॉट, गेंद जा रही है सीमा रेखे के बाहर. टनाटन चौका. पहली बाउंड्री निकले हैं यहां पर. चम्मू अरिमला उल्टा बल्ले में खेले, लॉन्ग ऑफ इलाके पर गेंद गई है, तब तक के चौका. शानदार शॉट. रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 21 ऑन द बोर्ड. 13 रन बनाकर खेल रही है चम्मू अरिमला. 12 गेंदे सामना किए, 3 गेंद पर 2 रन बनाकर अजीम दीना. अब अगली गेंद लेकर तैयार है.
फिर एक बार विघ्नेश तैयार है राइट आर्म ऑन द विकेट जम्मू अरेवाला के लिए चौका लगाने के आत्मविश्वास पर फिर एक बार सामना करने के लिए तैयार है। फिर एक बार उल्टा बल्ले खड़े हो गए हैं, तब तक फील्डर मौजूद हैं मिड ऑफ सर्कल में, तब तक मात्र एक रन के मध्य से रनों की संख्या बढ़ते हुए टाइम आउट। इतने छोटे रन में पकड़े फिर भी टाइम आउट है, कोई ज्यादा वाइड तो नहीं फेंके हैं, फिर भी टाइम आउट है। अगले मैच के लिए साइन अप के लिए तैयारी हो जाइए अक्ताक्षर के लिए। चैंपियन स्पोर्ट्स और रॉयल फ्रेंड्स पर चलम्बारा तैयार है। ओवर द विकेट अंपायर को घोष करते हुए अजीम खेलना चाहते थे लेकिन पैड पर खेले हैं, बैट पर नहीं खेले हैं। एक रन तो निश्चित रूप में मिले हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए 23। 4 गेंदें फेंक चुके हैं, 2 मोर बॉल लेफ्ट। विघ्नेश सबसे महंगी ओवर यही ओवर है। पहली ओवर में 6 रन और उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 3 और आखिरी ओवर थे नजीर चिरगोली की 4 रन। इस ओवर महंगी ओवर। अब अगली गेंद असीम दीनान ओवर द विकेट। अच्छी गेंद लेफ्ट स्टंप पर बीट हुई, तब तक अंपायर ने कहा कि वाइड है। इस वाइड की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 24 ऑन द बोर्ड। 24 रन तो पहुंच चुके हैं। एक समय पर ऐसे लग रही थी कि बिल्कुल परितापी यानी कि बिलो 22 के अंदर यहां पर बैठ जाएंगे, लेकिन जम्मू अरेवाला की इस शानदार बल्लेबाज के सहारे के साथ अच्छी स्कोर बन गई यहां पर। अब अगली गेंद ओवर द विकेट अंपायर को घोष करते हुए तैयार है जम्मू। इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है, तब तक फील्डर मौजूद है, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए। मात्र 1 रन। रनों की संख्या बढ़ते हुए क्वार्टर सेंचुरी पर पहुंच चुके हैं। 25 लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5.5 ओवर। अब अगली गेंद और इस तैयार है फेंकने के लिए विघ्नेश। 25 लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5.5 ओवर। अगली गेंद लेकर तैयार है दूरबाली 400 ओवर विकेट। अच्छी गेंद उठा कर खेला है, गेंद तो जा रही है फील्डर की तरफ, हल्के से मिसफील्ड हुए, तब तक 1 रन के जगह पर 2 रन। 2 रन के सहारे के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 27। 28 इज द विक्ट्री टारगेट। പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഓവറാം ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത. അമിഗോസ് ട്രോഫി 2026 അമിഗോസ് ഗ്രൗണ്ട് ഉളുവാർ ബായിക്കട്ട കുമ്പള ിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ഇത് വരുന്ന ഏപ്രിൽ മാസം 24, 25, 26 എന്നീ തീയതികളിൽ അമിഗോസ് ഗ്രൗണ്ട് ഉളുവാറിൽ വെച്ച് ഓവറാം ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. 1ാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപയും 2ാം സ്ഥാനക്കാർക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപയും സമ്മാനം നൽകുന്ന ക്യാഷ് പ്രൈസ് നൽകുന്ന ഈ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റിലേക്ക് ഏവരെയും ഞങ്ങൾ സാദരം ക്ഷണിക്കുകയാണ്, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. എൻട്രി ഫീസ് ഓൺലി 25,000. 25,000 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻട്രി ഫീസ്. അമിഗോസ് ട്രോഫി 2026 വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഡ്രോൺ ക്യാമറ മൈതാനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പറന്ന ഓരോ രംഗങ്ങളും ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 2 ദിവസങ്ങളിലായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു സംഘം ബക്കറ്റുമായി വരികയാണ്. ആദ്യം 5 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യ ദിവസം വന്നതെങ്കിൽ ഇന്നലെ ഒരു കുടുംബം കൂടി നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് 6 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നലെ വന്നത്. ഇന്ന് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ബക്കറ്റുമായി സംഘാടകർ വരികയാണ്, കാരുണ്യ പ്രവർത്തകർ വരികയാണ്. മുസ്തഫ PM,
റിയാസ് ബപ്പച്ച, ഷിഹാബ് പച്ചിലമ്പാറ, നിസാം മുട്ടം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 4 വൃക്ക രോഗികൾ, ഒരു ക്യാൻസർ രോഗം ബാധിച്ച ഒരു കുട്ടി, മറ്റൊരു അപകടത്തിൽ പരിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ അത്യാസന്ന നിലയിലാണ്. മരണവുമായി മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കൈനീട്ടുന്ന ആ ബക്കറ്റുമായി വരുന്ന അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തരുത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ ഓരോ തുണ്ട് സഹായവും അത് വലിയ ആശ്വാസമാവും ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബത്തിന്. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ ഉപകരിക്കട്ടെ, ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് വാങ്ങാനെങ്കിലും ഉപകരിക്കട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം തങ്ങുവാൻ എത്ര ചിലവ് വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങളോളം ചികിത്സ തേടുന്ന ആ പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സഹായിക്കണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സംഘാടകർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ബക്കറ്റുമായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ സഹായമാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആശ്വാസം. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ആ ബക്കറ്റിലേക്കിട്ട തുക 6 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പകുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ, ആ 6 കുടുംബങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്ത് ആ കരച്ചിലിനിടയിലും വിടർന്നു വരുന്ന ആ പുഞ്ചിരി, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥനയാവാം. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഓവർ ടു പ്രീതം കുമ്പള. Yes, thank you, Mr. Abdul Rahman Ji Bekora. We have finished our first innings. The scorecard is 27 and the 28 is the victory target. Here we go with the first delivery for Nizar Chirugoli. Nicely sweep towards the final leg region and taking comfortable single. A welcome single from the side of YFC Kanno. The openers have gathered. That is one side we have a Gabbar and Ram cricketer. Another one we have the captain Nasir Chirugoli. And the icon man from the side of bowling, that is Riaz and all the way from Bangalore. Yes, low scoring game. It is 28 is a victory target right now in front of Gabbar as well as Nizar Chirugoli. Yes, here we go, taking the guard of right hand around the wicket for Gabbar. This time Harshad is in strike of facing Riaz. This time second delivery, looking for the big shot. Meanwhile, nicely flicked towards the short mid-wicket region and taken comfortable single here. No need to go for a big shot. Have a look at this. Some discussion is going in between over there in the middle. Yes, Arshad is doing some discussion with the squad like umpire Saif Fadil. Yes, something discussion is going in the middle right now. A very good observation from Harshad. Umpire, whether it is no ball? Yes, it is no ball call and Nazir gets the chance for the field. What a bad start we can see from the start of Riaz Ennam here in this first initial over number 1. Definitely that which gives a very good backup for a team like YFC Kannur. Just 28 is a victory target in the initial over number 1. They have got the chance for a free hitter. Taking the guard, changing the guard for Riaz to Nasir this time. Right hand over the stamps for Nazir Chirugoli. Looking for the big shot, and this time there is no perfection with the bat and ball. Meanwhile, the ball slightly moving towards the fine rug region in the form of single, adding to the scorecard. Scorecard just moving towards the 4 on the board. First over is in progress right now. Slightly making changes in the fielding mark. Riaz Ennam changing fielders, getting the fielder into this deep square leg region because he knows that the left-hander Arshad Bajal, he's on strike. He can go for the big shot.
But here, no need of going for big shot. Just singles and couple of runs is more than enough to get the 28 runs of victory target. Once again, Riyaz to Harshada, sweeping shot. There is no connection at all. Meanwhile, batter are not rushing for the single. Just satisfied with the dot delivery, checking for the wide. Umpire goes for the upstairs to check whether it is wide or not. A very perfect innings. That was the first we have comes in the end. Just left 28 runs. It is very easy for the team like YFC Kannur in this particular situation. In 38 deliveries, they have very good batting lineup from the side of YFC Kannur. Have a look at the gathering, have a look at the crowd, those who have gathered to witness this particular match between those teams. The team both is having very good players. Both the teams is having very comfortable players in their setup. So it is one of the high voltage. We have to wait till the end of over number 6. What will going to happen? Yes, it is wide call from upstairs. One more addition to the scorecard in the form of extra. A very bad start we can see from the side of Riyaz Ennam in the beginning of over number 1. Because he knows that on one side we have Arshad Bajal, the top class batter, the top class all-rounder from the side of Mangalore, playing for YFC Kannur. Very good experience campaigner of Andhra cricket. Once again looking for the sweep shot here. Nicely flicked delivery and Akshay fielder fixed perfectly. Meanwhile, just a single run adding to the scorecard. One more run added to the scorecard. That single, the scorecard is 6 on the board after completion of 3 deliveries. A very good start for the team like YFC Kannur. The trump card, the icon player Arshad Bajal. We have seen his previous performance in the last match in the day number 4. Once again, sweep shot from Nasir this time, just rotating the strike themselves. They very well know just 28 is in front of them in 6 overs. So no need to give any wickets for the batter, for the bowler. Just going for singles, couples and adding the scorecard right now. Once again, Riyaz Ennam taking the guard off right hand around the wicket for Arshad Bajal. Looks for the stroke, but this time a very good line and length towards the stick was perfectly placed by Riyaz Ennam. There is no chance at all for Harshad to play for that particular delivery. Meanwhile, the dotted delivery, one more delivery remaining in this particular over number 1 here. Riyaz once again icon to icon. All the players from Mangalore here looking for the nice drive towards the deeper. Reaching and taking comfortable, a single here. Very good throw, very good throw. Appeal is going on from the side of Riyaz Ennam. But batters are in safer zone. Very quick action, very quick running between the wicket. We can see from Nasir Chirugoli as well as Arshad Bajal. We have completed over number 1. The scorecard is 8 on the board. Loss of no wickets. Just 20 more runs required in 5 overs. Just 20 runs required in the remaining 5 overs here for YFC Kannur. A very good start we can see from the batters. Have a look at that. Have a look at that. Those who are watching live telecast, they can see the drone show over here in this particular tournament. Definitely all the technologies are using over here to showcase a brilliant tournament of 2026, that is MPL season 10. പ്രിയമുള്ളവരെ, ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനവുമായി ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് ബക്കറ്റ് പിരിയുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുന്നവരെ നിങ്ങൾ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. 6 കുടുംബങ്ങളുടെ ആവശ്യാർത്ഥം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന
6 കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നവർ. അവരെ തീർച്ചയായും കൈവിടാതെ നിങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി തന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സംഭാവനകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു സംരംഭത്തെ ആ ഒരു കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമായി ഹോസ്പിറ്റൽ ചിലവിന് അല്പമെങ്കിലും ഒരു ആശ്വാസം പകരാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നൊരു പുണ്യമായി കരുതിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്ന് സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Yes, short while the captain brings Nasaf Killa here in the bowling marker. And the over number 2, the magical bowler from the side of CSC Paivalike. That is Nasaf Killa. Yes, taking the guard of right and over the stamps for Nasir this time. Thus to flick the delivery to the start. A final region and taking comfortable single. Yes, just rotating the strikes themselves, taking singles and adding the scorecard gently over here. Because one side Nasaf Killa, the magical deliverer, magical bowler from the side of CSC. He have that ability, he have that caliber and experience in the bowling mark to take any big wicket of the battle. Once again, for this time, Ashad looks for the big shot, the slight edge to the bat. Meanwhile, goes for the single run. A very good comeback from the side of CSC Palivaliki by introducing the bowler like Nasaf Killa, the killer of one-ram cricketer. Doing better start in the second over. A very good bowling performance we can see from Nasaf Killa so far. Just left 3 runs in the 3 deliveries. Once again for Nasir, this time goes for reverse sweeper. There is no perfection with the bat. This was another one. Wicket have been fallen from the side of YFC. Like before wicket, 1 wicket have been fallen. The first wicket from the side of YFC Kannora. Nasir Chirigoli walks back to the dugout. That is what I have been mentioning in the beginning of second over. The magical bowler, the magician of one-ram cricketer in the bowling mark. That is Nasaf Killer, killer of one-ram. He have that ability, he have that caliber, experience and tactics that which used in that particular delivery to take the wicket of Nasir Chirugoli in this particular condition. 4 deliveries have been completed, just left 3 runs and collected 1 valuable wicket from the side of YFC Kannur here. That gives a slight damage, a bit of damage for YFC Kannur so far. But they are not going to mind. We have Arshad Bajal over here, the tram car, the icon man from the side of YFC. Have a look at that, have a look at the position changing by Riaz NM, because he knows very well where to fix the fielders comfortably. Have a look at the same stroke driven to the same fielder, those who fixed by Riaz NM and taken comfortable single here. 1 more addition to the scorecard, 12 on the board. Loss of 1 wicket, last delivery of second over. Very good comeback from Nasaf Killer for CSC Paivalike. Just left 4 runs and have been collected 1 valuable wicket over here in this particular over. Number 2, last delivery for Arshad Bachal. This time taking the guard of right and round the wicket for Arshad. Looks for big shot. Nice cover drive. A fielder rushing towards the ball. Meanwhile, there goes for the couple of runs. And they have satisfied with couple of runs. Very good drive. Very good cover drive. We can see from Arshad Bajal. Here, very good. Over number 2 comes to an end with the scorecard of 14 on the board. Loss of 1 wicket. Yes, just 5 runs considered in this second over. Over number 2 by Nasaf Killa. What a bowling we had seen. Particularly second over by Nasaf Killa have did perfect job for CSC Paivaliki. And 28 is a victory target over here. Just 14 more runs are required to get the victory target of 28 runs in 4 overs. Definitely very easy for the batting mark. 4 overs remaining. 14 to get to the victory target of 28 runs here. Low scoring game. But anything will be possible. Anything will be happen in the one-ram cricket. We can't predict anything in cricket.
Yes, now captain brings Riaz and the icon man from the side of CSC Paivalike into the attacking mark over here. First delivery from Riaz. This time there is no connection at all with the bat. Meanwhile, ball rushing towards the back region and taken a comfortable single in the form of leg by. One more addition to the scorecard here. Yes, neutral match, neutral batting performance is more than enough to get a victory target. So the batters are not rushing for the maximum, not rushing for the boundaries, just settling down by themselves, rotating the strikes themselves. That is what we can see from them here. Once again, Riaz NM for Arshad Bajal away from the off stump region. Now one more addition in the form of extra here. പ്രിയമുള്ളവരെ, വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയല്ല. അത്രമേൽ ആവശ്യമുള്ള 6 കുടുംബങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ബക്കറ്റുമായി ഇവിടുത്തെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ഇറങ്ങുന്നത്. ദയവായി നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഞങ്ങൾ അകമഴിഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ നാണയത്തൊട്ടും നാളെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ജീവൻ്റെ വിലയായി, ഒരു മരുന്നിൻ്റെ വിലയായി, അവരുടെ ഒരു ആശ്വാസത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായി നിങ്ങൾ സഹായിക്കണമേ എന്ന് സവിനയം ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ബക്കറ്റുമായി ഇതാ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വലിയ ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സമയമെടുത്ത് നിങ്ങൾക്കരികിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. നിങ്ങൾ അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. This time Harshad went for the big shot, but there was no perfection with the batter. Meanwhile, one more dotted delivery in the over number 3 here. 3 deliveries have been completed. Once again, Riaz Ennam to Arshad. Icon to icon right now. Very good delivery from the hands of Riaz here. There is a misfield in the deep. That goes for the boundary region. What an runs are getting for the team like YFC Kannur. Here, what an runs have they collected? 4 runs which have been scored in this last delivery, which are spelled by Riaz Ennam. Definitely that took scorecard into 23 on the board right now. Once again, Riaz Ennam to Harshad Bajal. Reverse wave this time. Connection was perfect. Meanwhile, the fielder fits very well and takes catch perfectly in the deep square leg region. Now, Harshad Bajal, the icon man from the side of YFC Kannur, walking back to the dugout. Harshad depart here. What a clinical stroke have been blazed, but this time there was not enough power for that shot. Meanwhile, the fielder fixed perfectly. He did not miss any chance in the deep region. Collects perfectly and taken wicket of Harshad Bajal, sending Harshad Bajal into the pavilion. Riaz is doing perfect job in the bowling mark. He sent Harshad Bajal into the dugout right now. 23 on the board right now. Loss of 2 wickets. Third over is in progress. Last one more delivery left in this particular over number 5. After completion of over number 3, the scorecard is 23 on the board. Loss of 2 wickets. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു വട്ടം കൂടി ബക്കറ്റുമായി നിങ്ങൾക്കരികിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സ്കാനർ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്കാനറും ലഭിക്കും. 6 കുടുംബങ്ങൾ, 4 വൃക്കരോഗികൾ, ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ്, ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കേസ്, ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ ആക്സിഡൻറ്റ് കേസ്, അങ്ങനെ 6 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ബക്കറ്റുമായി ഈ ഒരു ടൂർണമെൻ്റ് ഭാഗമായി ഇവിടുത്തെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ദയവായി നിങ്ങളുടെ സഹകരണങ്ങൾ, സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നൽകിയ സപ്പോർട്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലും ഭേദപ്പെട്ട ഒരു തുക കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചതെങ്കിൽ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അത്രമേൽ ആവശ്യമുള്ള 6 കുടുംബങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ബക്കറ്റുമായി ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കരുണ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്.
Yes, Gafur started with the extra here. One more addition to the scorecard. 24 on the board. Just 4 more runs required to the victory target at 28. Once again, nice delivered, nicely delivered. There is no connection at all from the bat and ball. Meanwhile, something discussion is going between main umpire as well as square leg umpire Harish Padil as well as Saif Padil is doing some discussion between themselves. Yes, I'd like to call the captain of Champion Sports as well as the captain of Royal Friends Pachalampara. Please, it's out from the main umpire. Yes, one more wicket have been fallen from the side of YFC Kannur. That is what they have discussion doing in between the middle. Have taken right decision, sending one more batter into the pavilion right now. From the side of YFC Kannur, they just need 4 more runs to get the victory target of 28 run. We are in the 4th over. 4th over is in progress right now. Sharath walking into the batting mark. Sharath Kumbala got the chance to bat over here for the first time for Gafura. Nicely delivered towards the mid-on region and taken comfortable single and adding to the scorecard 25 on the board. Just 3 more runs required to get the victory target of 28 runs here. Shiva Mali from the side of YFC Kannur just flicking the delivery this time, directed towards the wicket here. Another one wicket, another win wicket have been fallen in the form of direct towards wooden sticks have been fallen in the middle. Shiva depart right now. Shiva walking back to the dugout. Very good delivery from Gafur. Doing very good job for CSC Paivalike, but the team YFC Kannur just need 3 runs to get the victory target of 28. If team CSC Paivalike might have scored 40 to 45 runs, means that which have been very difficult to chase for the team like the YFC Kannur in this such a condition. Have a look at that. They have lost 4 wickets. The middle order batter Shiva Mali even walks back to the dugout right now. Definitely very good bowling from Gafur. We can see in this particular over number 4 here. 3 deliveries completed once again for the new batter. Now fall some nicely flick the delivery towards the fine leg. Meanwhile, there is a chance of run out, but batters are safe in the area over there. Once more addition to the scorecard. 26 on the board. 2 more runs are required to the victory target right now. 4th over is in progress. Once again taking the guard of right and over. This time for Sharath. This time nicely placed towards the deep covers region. Taken comfortable. Single goes for a couple of runs. Completed comfortably couple of runs here. Congratulations team YFC Kannur for your brilliant performance in bowling as well as batting mark. And all the very best. Better luck next time team CSC Paivalike. Abdul Rahman ji, Bekur, please report immediately to commentary box.
Abdul Rahman ji, please report commentary box. Man of the match award. Very good performance they have been showed. 2 overs, 5 runs and taken 1 valuable wicket, and 13 runs have been scored in this last particular match. A very good performance have been showcased by Arshad Bajala. Box to hand over Man of the Match award to Arshad Bajal for his valuable performance in the last match, that is against CSC Paivalike. He has spent 2 overs and given 5 runs and collected 1 valuable wicket and have been scored 13 runs for his team. What a brilliant performance from Arshad Bajal. 2 overs, 5 runs and 1 wicket. And 13 runs for his team. Brilliant performance we can see from Arshad Bajal. Mannamkuzhi is presenting the Man of the Match award as well as Man of the Match gift for Arshad Bajal. Thank you, Mr. Mannamkuzhi, for presenting Man of the Match award. And once again, I would like to call Mr. Darwin Michael to analyze the upcoming match between those teams. Thank you. താങ്ക് യു പ്രീതം. യൂട്യൂബിലൂടെ മത്സരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്കാനർ മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്ന പേരിലുള്ള സ്കാനർ 6 കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ധനശേഖരണാർത്ഥം ഇറങ്ങിയിരുന്നു. 4 വൃക്കരോഗികൾ, ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ്, ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽപ്പെട്ട് ഗുരുതരമായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയാണ്. അവരുടെ ചികിത്സാ ധനസഹായാർത്ഥമുള്ള സ്കാനറാണ് സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സംഭാവനകൾ മത്സരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കായിക പ്രേമികളോടും നല്ലവരായ ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വാദകരോട് ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ ചെറിയ തുകയും അതൊരു വലിയ സംഭാവനയാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങൾക്ക് തണലേകാം, ആശ്വാസമേകാം. അതിന് കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന് യൂട്യൂബിലൂടെ മത്സരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ കായിക പ്രേമികളോടും ഞങ്ങൾ സവിനയം അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സഹകരണങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അടുത്ത 1 മിനിറ്റ് നേരം സ്കാനർ സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ബന്ദിയോട് വേഴ്സസ് റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് പച്ചിലമ്പാറ. ആദ്യ വിജയം തേടി ഇറങ്ങുന്ന 2 സംഘങ്ങൾ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ബന്ദിയോട് റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് പച്ചിലമ്പാറ. ഗിരി മുജങ്കാവ് ടൂർണമെൻറ്റിലുടനീളം നല്ലൊരു തുടക്കം ടീമിനെ സമ്മാനിക്കുന്നെങ്കിലും അത് കൃത്യമായി മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് വിജയമായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സംഘമായി മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഈ ഒരു മത്സരത്തിലൂടെ ശക്തമായ തങ്ങളുടെ പ്രദർശന മികവ് കളിക്കളത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ്. മറുഭാഗത്ത്
റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു രാജകീയമായ റോയലിക് കംബാക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ടീം. Santu Bela and Giri Mujengav, the openers, and this time fabulous way the over that was started by the bowler Nizam, and this time wide has been called, and there will be a wicket produced in form of run out as well. The wicket നഷ്ടപ്പെടുന്നു 3 റൺസിന് 1 എന്ന നിലയിൽ. പുതുതായി യൂട്യൂബിലേക്ക് കളി കാണാനെത്തിയവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്കാനർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന മംഗലാപുരത്തെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്കാനർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. യൂട്യൂബിലൂടെ കളി കാണുന്ന നല്ലവരായ കായിക പ്രേമികളെ നിങ്ങളുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. 6 കുടുംബങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പണ സമാഹരണാർത്ഥം നിങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Hayas comes in onto the non-striker's end and Giri just plays straight to the field. That will be the end of the over number 1. Tighty over from the strike bowler Nizam. End of the over number 1. 4 for the loss of 1. We can see the point table from B group. YFC Kannur standing on the top of the table with 8 points with a very huge net run rate, and Good Luck Pasod standing number 2 with 8 points, and High Flyers Dubai standing third on the table with 6 points. Falcon Fighters are in number 4. CSC Paivalige in number 5. Falcon and CSC having 5 points. And Royal Friends and Champion Sports Bandior, they were trying to open their account. Vicky Mujengao, the young gun, coming into the attack with the second over. Sweep shot, perfectly clears infield, and now the Sangadi looking to chase and ball win the race. Such a beautiful timing, perfection with that sweep shot by the man Hayas. Straight away first ball boundary that opened the account of Hayas in style, the icon player from Champion Sports Bandior. Such a superb cricket that showcased in front of the young and energetic talent Vicky Mujengao. Once again, left arm seamer, what a shot, but this time goes absolutely straight to the field. Right hander switches as a left hander and played in the air, and he gets a connection right, but not the elevation on this occasion. Easy catch for the field. Wicket number 2 down from the side. Hayas walking back. 8 for the loss of 2. Champion Sports Bandior. എട്ട് റൺസ് 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ പവർ പ്ലേ പുരോഗമിക്കുന്നു. വി ആർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഓവർ. ആവേശകരമായ ഒരു പിടി മത്സരങ്ങൾ കണ്ട ക്രിക്കറ്റ് ആസ്വാദകർക്ക് മനം നിറഞ്ഞൊരു ദിവസം കൂടിയായി 4ാമത്തെ ദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന 2 ടീമുകൾ ബി ഗ്രൂപ്പിൽ. Ashwit Kasargod, the new batter, joins a terrific all-rounder. Oh, that distance goes upstairs. Need to check the wide. Wide is a call from the TV umpire.
Nicely takes it that one from the track by Ashwit and just plays it through the onside region. Takes a single. And Ashwit, the man of the mark on this occasion for the team. Champion Sports Bandiod. Vicky Mujengov, the teenager, but a lot of caliber and talent. The man have a lot of potential to bowl in the front line. He loves to bowl in the power plays. That's a shot through the covers region. The fielder comes and grabs it successfully. Another wicket. This time the big wicket of Giri Mujengov. He just slowly walking back to the pavilion. Number 3 down from Champion Sports. Easy catching practice for the fielder. 10 for the loss of 3 by Champion Sports Bandiod. Vicky strikes twice. New batter comes in. It was gone little bit away, but there will be right in the channel that says by the ump. Fabulous execution, but it goes upstairs. Asking for the review by the batting team. It's for White. Review for White. The review from the batting side. On-field decision is fair delivery. And we need to confirm with the TV umpire. It's a fair delivery. The confirmation comes from the TV umpire. Successful job that doing by the on-field umpires. Moving to the last ball of the second over. Last ball of the power play as well. Trying for a safe shot. Easy one for the field. And number 3 in this over. And number 4 down from the side of Champions. 2 overs done and dust by the bowlers. 10 for the loss of 4. പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്. അജ്മൽ എന്ന പേരുള്ളവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അജ്മൽ എന്നൊരു കുട്ടി കളി കാണാൻ വേണ്ടി മണ്ണംകുഴി ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ആ കുട്ടിയെ കാണാനില്ല എന്നൊരു വിവരം കിട്ടുന്നു. അജ്മൽ എന്ന കുട്ടി എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്ക് പോയിന്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അജ്മൽ എന്ന കുട്ടി എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്തണം. ആർക്കെങ്കിലും അജ്മൽ എന്നൊരു കുട്ടിയെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക പ്ലീസ്. That's through the onside. Lovely stroke from Ashwit Kasargod, and he coming back for second. Nizam is doing his second over. Straight away, couple of runs taken by Ashwit, and this time wide ball is the call.
Dot ball to back in the process by Nizam, who just bowls a fantastic first over. But what a successful over bowl by Vicky Jr., the man from Mujengao. Trying for a big shot, but straight back to the bowler it lands. Nothing for the batter. Restricted the movement completely by the bowlers of Royal Friends Pachilambara. Having all the control so far, so good. Here comes again. Yes. No ball is a signal from the on-field umpire. Trying to lob that one and clears the infield. A bounce after it travel to the boundary for 4 from the blade of Ashwit Kasaragot. Beautiful connection. Uses the benefit of the free hit and freely coming down the track, and the man ready to dispatch out of the ground. Gets a boundary for 4. Important one for the team champions Sports Bandior. They lost 4 wickets in the front line. Ashwit Kasaragod, Abhi Kasaragod. Both are in the middle. Lovely way the man plays it and looking for second, but this time a little bit fumbles over there. Rarely we can see that kind of fumbles from Vicky Jr. And this time takes the opportunity. Oh, it goes upstairs. Have a look at that one. We have umpire Harish Padil as a TV umpire. Already down 4 wicket by the team champion Sports Bandiod. And these 2 batters are very crucial. They were in the 5th wicket. Need a partnership to secure a score for the fighting. 18 for 4 right now by the team champion Sports. Fantastic royal type of start by the team Royal Friends Pachilambara. You're watching a fabulous cricket tournament. Mega Cricket Carnival, MPL, Mannamkuzhi Premier League Season 10. 22 lakh prize money for the finalist. 2 motorbikes, LED TV, and so many exciting gifts and prizes for the players and team owners. കാണികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി മറ്റൊരറിയിപ്പ്. ഒരു ഗിവ് അവേ ഈ ഒരു ടൂർണമെൻ്റ് ഭാഗമായി സെലക്റ്റഡ് മണ്ണൻകുഴി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗിവ് അവേയിൽ വിജയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ബൈജൂസ് സ്മാർട്ട് ടാബാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കയറി സെലക്റ്റഡ് മണ്ണൻകുഴി എന്ന പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. അതിൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്ററിന് താഴെ MPL എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ബൈജൂസ് സ്മാർട്ട് ടാബ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കും. 2 കാര്യങ്ങൾ. ഫോളോ ദ പേജ് സെലക്റ്റഡ് മണ്ണൻകുഴി ആൻഡ് കമൻറ്റ് MPL. Not out is a call from TV umpire. Batters are safe. Two between the wicket completed. 3. 3 balls passed. Yes, this takes a single. Now moving to the last ball of the over, number 321 for the loss of 4.
Takes it through the onside region, drives it perfectly and beats infield trap and coming back for second, but no. Good piece of a fielding presentation in the deep for the team. Royal Friends and restricted with a single. That is the end of the over. 22 for the loss of 4. ഇരുപത്തിരണ്ട് റൺസുകളുമായി 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 12 റൺസ് അവസാന ഓവറിൽ പിറക്കുകയാണ്. ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ബന്ദിയോട് they were batting in the first innings. Fairuz Pachilambara coming with the over number 4. Steady way the scorecard is moving, but wicket grabs in the front line by Vicky. It brings up 3 successful wickets in the second over. Just takes a single by Abhi. Runnable cricket that showcasing by Abhi Pernadika and Ashwath. And Ashwath played a lofted shot in free hit delivery. That was resulted as a boundary. Here comes again. Trying for an improvisation by Ashwath. You can see a huge gap on his offside and suddenly the man turns as a left-hander, switches his place but not gets a connection right. Fairuz again. Nicely drives it, that one goes straight to the field. A powerful drive from the standing position by Ashwath. Gives it through the carpet. A clean all-round cricketer from Kasaragod. Takes another single. Running with singles. Abhi trying for something special, but this time out is a signal. Absolutely plumb, that says by the center of the court. Have a look at that one. Fairuz hits on the right channel. Bang, completely dead. Good call. Spot call from the umpire. 24 for the loss of 5. Shafiq Mujengao joins as a new batter for Champion Sports Bandiod. Fairuz picks up the wickets in the middle of this over. We have 2 more balls to go. Trying for a safe shot. Just gets a single, easily moving between the wicket by the batter. He was searching for second, but no chance. A very good attempt by Vicky. Restricted with a single. 25 by the team Champion Sports. Going in a decent way in the first innings. Half a wicket down from the side. Trying for a big shot. That is straight down the ground. Beautiful timing behind that stroke by Ashwath Kasaragod. Such an elegant timing perfection. Such an excellent start. He makes perfectly into the safest region of straight region. End of the over number 4. 29 for 5. 29-5. 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ബന്ദിയോട്. റൺസുകളുമായി 4 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുന്നു. 2 ഓവറുകൾ കൂടി ശേഷിക്കുകയാണ് ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സിൽ.
അശ്വത്ത് മൈതാന മധ്യത്തിൽ കളിമനയുന്നു ടീം ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ബന്ദിയോടിന് വേണ്ടി. Ashwit on 15 from 10 balls. A standard innings of Ashwit that giving a steadiness for the team. Champion Sports Bandiod right in the middle. Dawood is coming. Fabulous player Dawood Sangadi as a skipper of the team. Comes and straight away bowls a rolling delivery. Sipped it towards the onside region by Shafiq and takes a single. Ashit back to the striker's end, making a lot of changes in the fields. Here comes Dawood. Ashwit always trying to play the shot through the onside region. This time easy two for the batters. Ashwit responding superbly in front of the bowlers of Royal Friends Pachilambara. Man making a beautiful innings here for the team Champion Sports. Absolutely controlling the things really well in his custody. And completely dominating by Ashwit. So far, so good way. Here is Dawood Sangadi. Oh, trying for a fancy shot. He was aware about the field placement and looking to the line of the delivery and ready to give the treatment, but this time not get the right connection over there. It was a dot ball to back in the process by Dawood Sangadi. Appeal again, but this time that gone past and bat is moving between the wicket. This time, oh, looking for second between the wicket. Easily done by the batters. They were completed for couple. Easy two between the wickets. Oh, that's a beauty. That's a lightning quick action from the wicket keeper. Finally, Ashwit departs after played a gem of an innings in the top, who just makes a steadiness for the team. With that, the standard of innings comes to an end from Ashwit. Entertainment from Ashwit comes to an end. Another wicket goes down. 6 down, 34 for the loss of 6. വിക്കറ്റുകൾ കൃത്യമായ ഇന്റർവെൽസിൽ സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ബൗളേഴ്സ് റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് പച്ചിലമ്പാറയ്ക്ക് വേണ്ടി മനോഹരമായ ബൗളിംഗ് പ്രദർശനം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്ത് കൃത്യമായി നിലയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പ്രതികരിച്ച അശ്വത്ത് മനോഹരമായി ഒരു ഇന്നിങ്സിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. പുതിയ ബാറ്റർ ക്രീസിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഓവറിലെ അവസാന പന്ത്. Santu joins as a new batter. Dawood Sangadi trying to finish the over in a very good manner. What a stamping we have seen in the previous time. Nicely picks up that one straight to the fielder. Just takes a single. That's the end of the over. 5 overs done. 35 runs for the loss of 6. പ്രിയമുള്ളവരെ, ബക്കറ്റ് പിരിയുമായി നിങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരു കൈയും നീട്ടി ഞങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത തുക
27,788 രൂപയാണ്. നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നൽകിയ ഓരോ കരങ്ങൾക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ നൽകിയ സഹകരണത്തിന് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നാളെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങും. യൂട്യൂബിലൂടെയും സ്കാനർ അയച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിലും ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഇറങ്ങും. കാരണം 6 കുടുംബങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നതേയുള്ളൂ. ഭീമമായ ഒരു സംഖ്യ അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും സഹകരിക്കുക എന്നത് മനുഷ്യത്വപരമായി നമ്മുടെ കടമയാണ്. നാളെ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കണമേ എന്ന് നിങ്ങളോട് ഇപ്പോഴേ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും, സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. 5 overs done. Moving to the last over of the innings number 1. That was just takes a single by the batter. 36 റൺസുകൾ, ഒരു ഡീസൻറ്റ് സ്കോറിലേക്ക് ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ബന്ദിയോട് തുടരെ വിക്കറ്റുകൾ വീണെങ്കിലും കൃത്യമായി റൺസുകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ടീം വിജയിക്കുകയാണോ എന്ന രീതിയിൽ ഇന്നിങ്സ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. Moinu Pachilambara is the bowler. Always doing a fantastic job as a death bowler. These two teams are searching their first victory. It was wide on this occasion. നാളെ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ 5ാം ദിനം. നിരവധി കാര്യപരിപാടികൾ ഈ ഒരു മനോഹരമായ ടൂർണമെൻറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് പല വിശിഷ്ട വ്യക്തികളും നാളെ മൈതാനത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന, അതിനിടെ ടൈം ഔട്ട് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുകയാണ്, നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന കാണികളെ ഞങ്ങൾ അവസാന 2 ദിവസങ്ങളിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായ് ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാറുമായി ഇന്ന് ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ടീമുകൾ തയ്യാറായി നിൽക്കുക. അതുപോലെ നാളെ HN ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗർ ഉപ്പളയുടെ മനോഹരമായ ഒരു ചടങ്ങ് കൂടി ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പ്രധാന വേദിയിൽ നാളെ വൈകുന്നേരം രാത്രി കൃത്യം 9 മണിക്ക് HN ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗറിൻ്റെ ഒരു ജേഴ്സി ലോഞ്ചിങ് സെറമണി കൂടി നടക്കുന്ന വിവരം കായിക പ്രേമികളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. HN ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ടീം MPLൽ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വമ്പൻ ആരാധകരുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയ്ക്കിടെ HN ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗറിൻ്റെ ജേഴ്സി ലോഞ്ചിങ് സെറമണി നാളെ രാത്രി 9 മണിക്ക് ഇതേ വേദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന വിവരം കായിക പ്രേമികളെ അറിയിക്കുകയാണ്. 7 down on this occasion, 39 for 7. 2 balls to go from the innings number 1, Madhu BFC. The bowling all-rounder joins. Wonderful works by the umpires in complete 4 days of cricket. They were done and make the event superb with your spot-on actions. And we have Mohan Ayadi and Saif Padil standing as the on-field umpires. Harish Padil there as a TV umpire for this match. And we have a wonderful scorers, active scorers. Yes, that's the end of 6 overs. 40 runs on card. First innings completed. 40 റൺസുകളുമായി ആദ്യ ഇന്നിങ്സ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ 41ന്റെ ചേസിംഗ് ടാർഗറ്റ് റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് പച്ചിലമ്പാറയ്ക്ക്. Talking about the scoring boys, Khalil Peringadi is a permanent scorer for MPL in all the seasons, and along with Bati HN doing a wonderful work.
And we have Mehroof also doing a superb work as a scorer. Congratulations, scorers. ഒരിക്കൽ കൂടി ആ സ്കാനർ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ കളി കാണുന്ന മാന്യ പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്. പുതുതായി കളി കാണാൻ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കയറിയ പ്രേക്ഷകരുടെ കൂടി അറിവിലേക്ക് വിശദീകരിച്ച് പറയാം. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചികിത്സാ സഹായാർത്ഥം കഴിയുന്ന 6 കുടുംബങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സ്കാനർ യൂട്യൂബിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ സംഭാവനകൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് 3 ദിവസമായി നേരിയ തോതിൽ ഞങ്ങൾ പിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ ഓൺലൈനിലൂടെയും യൂട്യൂബിലൂടെ കളി കാണുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നിർലോഭമായ സഹകരണം സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. 4 വൃക്ക രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യൻറ്റിന് വേണ്ടി, ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് കേസിന് വേണ്ടി, അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജീവിതത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന നിസ്സഹായരായ നിർധനരായ കുടുംബങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം സ്വരൂപിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് ആ സ്കാനർ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ നല്ല ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികളുടെ സംഭാവനകൾ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതെത്ര തന്നെയായാലും ഞങ്ങൾക്കത് സ്വീകാര്യമാണ്. അത് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ആ കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരാശ്വാസമാണ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ സഹായിക്കണമേ എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഓവർ ടു പ്രീതം കുമ്പള. ബൗണ്ടറിയോടുകൂടി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ്. എസ് പ്രീതം കുമ്പളയും അബ്ദുറഹ്മാൻ ബേക്കൂറിനെയും കമൻട്രി ബോക്സിൽ കാണുവാനില്ല. വീണ്ടും ഞാൻ ബാക്ക് ടു ദ ബോക്സ്. Through the onside region, plays it nicely. It's an easy way. The man plays it through the backward of the deep square. Easily gets a boundary for 4. Second boundary of this over. One by Nizam, one by Musa. Steady start here. Such an elegant touch. Easy looks to be. Effortless shot from Musa. He's always known for big hits, but this time just making the placement. Fantastic cricket. Beautiful delivery from the bowler Hayas. How he's the man. Hayas is bowling his deliveries right on the track. Fabulous way, controlling the rhythm. 32 runs required from 31 balls. Through the offside, over to the covers region, over the head of the infield.
Lovely stroke from the man. That's the end of the over as well. First over concluded. 11 runs on card. 11 റൺസുമായി ആദ്യ ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 30 balls of cricket, 30 runs of targets. അടുത്ത മത്സരത്തിൻ്റെ സൈനപ്പ് പൂർത്തീകരിക്കുക. ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായ്, ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാർ. Ashwit Kasaragod. A fabulous bowler is coming with the over number second. Openers have made a good contact and they will start the proceedings in style while chasing the targets. 11 runs came from the first over. Runnable 30 required to win this game. Searching their first points by these two teams. Big swing from the batter, big intent behind that action by Nizam, but there is no reaction there. It was perfectly loaded delivery from Ashwit Kasaragod, right on the track. Beauty to watch. That was when Ashwit is sitting in the right on his top of the form. It looks good. Looks to be fantastic. Salam Bakrabail. സൈനപ്പിന് വേണ്ടി എത്താൻ ടീം മാനേജർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Two dot balls to start the proceedings on this over by Ashwit Kasaragod. Trying for a safe shot. And he's just ready to loft some power behind the stroke. The batter Nizam was trying for glamorous shot in consecutive time in front of Ashwit, but who won the battle in consecutive time to start the over in a beautiful way. Stroke. This time, right from the toe end of the bat. The man plays it through the mid-wicket region, comes and received it nicely by the fielder. Just takes a single. First run of this over. Ashwit is going a very good way, as in the style of Ashwit Kasaragod. Always the economical bowler. A wicket-taking machine in recent years in underarm cricket. Having a lot of experience in Kasaragod and Karnataka as a player. Looks to be at 29 runs of target in 26 balls. Lovely delivery. That is absolutely beautiful to watch. Rolling rockets right on the target. It's in the hands of the wicketkeeper. Makes it simple by the wicketkeeper. Beautifully collected. 5 balls passed. Lofted shot, the batter tried and over the infield, plays it superbly. No chance for coming back. A wonderful over from Ashwit comes to an end. Just 2 runs came from the over of Ashwit Kasaragod. A tighty power play comes to an end. 2 overs done, 13 for none. 13 റൺസുകൾ വിക്കറ്റ് നഷ്ടമില്ലാതെ. Cool and calm, composed way. We have seen the over of Ashwit. But productive runs in the first over that makes decent power play for the batting side, the chasing side of Royal Friends Pachilambara. After a small discussion, the fielders are spreading into the different parts of the ground because the power play is over. More fielders are coming outside of the ring.
Madhu BFC. The new bowler coming. He got a chance as a batter in this game for the first time. Playing for a stroke with a reverse action by the man. Takes a single by Musa. Steady way the innings is building by the openers. You have seen a tighty over from Ashwit. Except all things are controlling by the batters. Looks to be easy target. 27 runs of a target from 23 balls. വലിയൊരു ഷോട്ടിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. കൃത്യമായത് ഫീൽഡറുടെ കരങ്ങളിലേക്ക്. ഒരു റൺ കൂടി വിക്കറ്റിനിടയിലൂടെ സാവധാനം ഓടി നേടുകയാണ് ബാറ്റേഴ്സ്. ബി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഫിക്സർ പോയിന്റ് ടേബിൾ അത് വളരെ കൃത്യമായി ടോപ്പ് ഓർഡറിൽ ടീമുകളെ വ്യക്തമായി പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. YFC കണ്ണൂർ കളിച്ച 5 മത്സരങ്ങളിൽ 4 വിജയം സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് YFC കണ്ണൂറും ഗുഡ് ലക്ക് പൊസോട്ടും 1-2 സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ശക്തമായ നെറ്റ് റൺ റേറ്റിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ YFC കണ്ണൂർ 1-ാം സ്ഥാനം അരക്കെട്ടിട്ടുറപ്പിക്കുന്നു ഗുഡ് ലക്ക് പൊസോഡിന് മേൽ. 3-ാം സ്ഥാനത്ത് 5 മത്സരത്തിൽ നിന്ന് 3 വിജയവുമായി ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായ് 6 പോയിന്റോടുകൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ 4-5 സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമുകൾ ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാറും CSC പൈവളികയുമാണ്. 2 ടീമുകൾക്കും 5 പോയിന്റ് വീതം ഉണ്ടെങ്കിലും നെറ്റ് റൺ റേറ്റിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് 4-ാം സ്ഥാനത്തും CSC പൈവളികെ 5-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു. തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള 2 സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമുകൾ തമ്മിലാണ് മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. Twenty balls of cricket, 25 runs of target. അടുത്ത മത്സരം കടുത്ത മത്സരമായിരിക്കും. അടുത്ത മത്സരമായിരിക്കും. ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായും ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാറും തമ്മിൽ കടുത്തൊരു പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടി അടുത്ത മത്സരത്തിൽ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട കായിക പ്രേമികളെ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടുപോകരുത്. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ തീപാറും. Last ball of the over. Shot through the onside. And that will be gone for a boundary for 4 to finish the actions of the over number 3. 21 for 1 after 3 overs. 20 റൺസ് വേണം 18 പന്തുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ. ആദ്യത്തെ 18 പന്തിൽ 21 അടിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത 18-ൽ 20 റൺസിന്റെ ലക്ഷ്യം റോയൽ ഫ്രണ്ട്സ് പച്ചിലമ്പാറയ്ക്ക് മത്സരം വിജയിക്കാൻ. Yes, it's a time for the toss as well. I welcoming the captain of High Flyers Dubai and Falcon Fighters Kadambar. Captains, please join us for the toss. ഉപ്പളയിൽ എന്ന് കായിക ടൂർണമെൻറ്റുകൾ അരങ്ങേറുന്നു. അവിടെ ദേർലക്കട്ടയിൽ നിന്നും കടല സിദ്ദീഖ് നമ്മോടൊപ്പം ഓരോ ടൂർണമെൻറ്റുകളെയും ആവേശമാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവനാർത്ഥം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും നൽകി സഹകരിക്കുന്ന കായിക പ്രേമികൾക്ക് നന്ദി. അതുപോലെ കടല ചവച്ച് മത്സരം ആസ്വദിക്കാം. സിദ്ദീഖ് കടലയെ ഒരു കൈ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഒപ്പം 100 രൂപ വിലയുള്ള ടിക്കറ്റ് കൂപ്പൺ കൂടി
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ലക്കി ഡ്രോ കൂപ്പൺ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് MPL 2026. 100 രൂപ മുടക്കൂ, ജൂപ്പിറ്ററിൽ മടങ്ങൂ. അതാണ് ആപ്തവാക്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലക്കി ഡ്രോ ബൈ MPL 10. 1-ാം സ്ഥാനക്കാരന് ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ സ്കൂട്ടർ, 2-ാം സ്ഥാനക്കാരന് സാംസങ് ഗാലക്സി സ്മാർട്ട് ഫോൺ, 3-ാം സ്ഥാനക്കാരനെയും കാത്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു ഗാലക്സി സ്മാർട്ട് ഫോൺ, 4-ാം സ്ഥാനക്കാരന് ബൈജൂസ് സ്മാർട്ട് ടാബ്. ക്രിക്കറ്റിന് ആവേശമാണെങ്കിൽ അതിനെ അഭിനിവേശമാക്കി മാറ്റുന്ന കലയാണ് മണ്ണൻകുഴിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. MPL എപ്പോഴും ഏറ്റവും മികച്ചത് അവതരിപ്പിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നൊരു പക്ഷിയാണെങ്കിൽ MPLനെ നയിക്കുന്നത് ഹനീഫ് ഉമ്മങ്ങ എന്ന 1-man ആർമിയാണ്. 26 വർഷങ്ങൾ പിറകിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ചാൽ 2000-ന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉപ്പളയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഓർഗനൈസിംഗ് മികവുകൊണ്ട് കാണികളെ അമ്പരപ്പിച്ച പല ടൂർണമെൻറ്റുകൾ ചെറിയ തോതിൽ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റ് ഓർഗനൈസിംഗ് രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന ഹനീഫ് ഉമ്മങ്ങ ഇന്ന് കേരളക്കരയിൽ, കർണാടകയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘാടന മികവ് വിശ്വവിഖ്യാതമായി പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഹനീഫ് ഉമ്മങ്ങ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ദൃഢനിശ്ചയം, സമർപ്പണം, ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള അഭിനിവേശം, അത് തന്നെയാണ് MPL എന്ന ഇത്തരം വൻ പദ്ധതിയെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സല്യൂട്ട് ഹനീഫ് ഉമ്മങ്ങ. അതുപോലെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു നാമം ഷമീം സമാൻ കൽപ്പാറ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പിന്തുണ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇത്തരം വലിയ മേളകൾ അസാധ്യം എന്ന് കായിക ലോകം വിലയിരുത്തുന്നു. ഷമീം സമാൻ കൽപ്പാറയ്ക്ക് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സല്യൂട്ട് അർപ്പിക്കുകയാണ് MPL സീസൺ 10. ഒപ്പം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സിറാജ് IMS ദുബായ്. ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാവിധ ഫോഴ്സും ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ച സിറാജ് IMS ദുബായ്ക്ക് നന്ദിയും കടപ്പാടുകളും അറിയിക്കുകയാണ്. It goes upstairs and we have a run out check. TV umpire to director, we have a run out check. Not out is a goal. That's the end of the over as well. പന്ത്രണ്ട് പന്തിൽ 15 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്. Giri Mujangav is coming with the over number 5. 2 ഓവറുകൾ ശേഷിക്കുമ്പോൾ 15 റൺസ്, 15 required to seal the deal for the first time. Royal Friends Pachinambara versus Champion Sports Bandiot. Davud Sangadi on strike. Trying to loft that one. Beautiful shot. Through the covers region, the man tried. It goes through the extra cover and widest long off region. Takes a single. And controlling the rhythm really well by Davud Sangadi. Joins in at number 3 along with Nizam. And Nizam having a very good control on the other side. Runnable 14.
What a bat lift, but straight to the field, and that produced the breakthrough for the team. Girish Mujangav strikes with a wicket. Important wicket in the important time for the team. Very, very well settled batter is slowly going back. 27 for the loss of 2. 14 required from 10 balls. New batter Fairuz Pachilambara coming in at number 4. ₹22,00,000 ഫൈനലിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രൈസ് മണി നൽകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ പല പ്രമുഖ സംഘാടകർക്കും സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ അതിനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് എത്തുകയാണ്. ടെന്നീസ് ബോൾ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ മറ്റെങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വിശ്വവിഖ്യാതമായൊരു ടൂർണമെൻറ്റ് അണ്ടർ-ആം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സെലക്റ്റഡ് മണ്ണങ്കുഴി വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നു, ഹെഡ്ലൈൻസിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു. Beauty of a speed, but not perfect in the line. Gone way outside. Wide been call. Giri Mujangav need to load that one again. 9 പന്തുകൾ 13 റൺസുകൾ. വളരെ കൂളായി മൈതാന മധ്യത്ത് രണ്ട് ടീമുകളും. ബാറ്റേഴ്സ് ലുക്സ് വെരി കൂൾ. The fielders looks calm. And the ambience is just quiet, and there is Nizamuttam takes that one perfectly. That's another wicket in this over. Giri Mujangav is tightening the screws in this late night. Have a look at that one. From the back foot, the man just lifted and trying to loft. It's end in the hands of Nizamuttam, having a catching practice. അടുത്ത മത്സരത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു മത്സരത്തിൽ ഫാൽക്കൺ ഫൈറ്റേഴ്സ് കടമ്പാർ ഇറങ്ങുകയാണ് ഹൈ ഫ്ലയേഴ്സ് ദുബായ്ക്കെതിരെ. 6 പോയിന്റുള്ള ടീമും 5 പോയിന്റുള്ള ടീമും. ഇടനെഞ്ചിൽ തീയുമായി രണ്ട് ടീമുകൾ അടുത്ത റൗണ്ടിനെ നോട്ടമിട്ടുകൊണ്ട് വട്ടമിട്ട് പറക്കാൻ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട കായിക പ്രേമികളെ, don't miss the action for the next game. It will be a 100 kilowatts of energy match coming up next. Shot over the infield, lovely way the man plays as wide open the face of the bat. To the merit of the ball, the man strikes really well, gets a couple of runs. Just in a reverse shape, there will be some space over there, and coming back for seconds, easy to doubles without any troubles. Comfortably past the over. 5 overs done, and now 6 balls of cricket, 9 runs required for the team. Royal Friends Pachilambara. ആറ് പന്തുകളിൽ 9 റൺസിന്റെ ടാർഗറ്റ്.
വിജയത്തോടുകൂടി ആദ്യ വിജയത്തിൻ്റെ മധുരം നുകർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നീ ദിവസം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് ടീമുകൾ അവസാന ഓവറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്ത് വില കൊടുത്തും MPL പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെ സ്വപ്നമായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുക എന്നത് ഓരോ പ്ലേയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വപ്നമായി കാണുമ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് 14 ടീം ഓണേഴ്സ് ഒരു വലിയ സല്യൂട്ട് നൽകുന്നു ഓരോ ടീം ഓണേഴ്സിനും. കാസർഗോഡിലെ അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് വമ്പൻ വേദിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കിയ ഓരോ ടീം ഓണേഴ്സിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സംഘാടകരെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതും കാസർഗോഡിൻ്റെ കായിക മേഖലയെ വളർത്തുന്നതും അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതും ടീം ഓണേഴ്സ് തന്നെയാണ്. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. Appeal allowed over there. A threaded finger from Mohan Ayadi goes into the sky. Wicket to start. Have a look at that one. Oh, plum. The batter is going back without any question. That was absolutely plum. Easy call for the umpire. Without any hesitation, 5 balls left, 9 required. Ashik standing on the other side and Jabir Pachilambara, the new batter joining in. It's to the onside region and there will be single taken, 33 on card. പവർ പ്ലേയേഴ്സ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു. മൈതാന മധ്യത്ത് ഒരു ഫീൽഡർ കൂടി സർക്കിളിനകത്തേക്ക് എത്തുന്നു. MPL രണ്ടാം ദിനം. ഇന്ന് നമ്മൾ 4ാം ദിനത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ MPL രണ്ടാം ദിനം അവാർഡിൻ്റെ നിറവിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയ ഹസൻ പെർള, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ജൂനിയർ ഹസൻ കമൻട്രി ബോക്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ്. ഒരു മികച്ച ക്രിക്കറ്റർ ആകണം എന്നൊരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഹസൻ കുതുവയുടെ മകൻ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റുകൾ അതിൻ്റെ മത്സരങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിൻ്റെ ലെതർ ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ കൂടിയാണ് ഹയാൻ എന്ന ഹസൻ കുതുവയുടെ മകൻ. മികച്ചൊരു ഭാവി ആശംസിക്കുകയാണ്. അതിനിടെ മറ്റൊരു വിക്കറ്റ് കൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാണാം മനോഹരമായ വിഷ്വൽസ് ഓൺ യൂട്യൂബ് സ്ക്രീൻ. ആകാശ കാഴ്ച അത് മനോഹരമായി ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ മണ്ണൻകുഴിയുടെ മൈതാനത്തിനെ ഡ്രോൺ പകർത്തിയെടുക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ച. ഹാവ് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മണ്ണൻകുഴി സ്റ്റേഡിയം. ഷൈൻ സ്പോർട്സ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഷൈനിങ് ഹിയർ ഇൻ മണ്ണൻകുഴി. ക്യാമറാമാൻസ് സല്യൂട്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് പൊരിഞ്ഞ വെയിലത്ത് തുടങ്ങി കടുത്ത മഞ്ഞിനെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒറ്റയിരിപ്പ് എല്ലാവർക്കും സല്യൂട്ട് നൽകുകയാണ് 4ാം ദിനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ. ബട്ട് we have one exciting thriller of a match coming up. High Flyers Dubai versus Falcon Fighters Kadambar. Nicely on to the pads and given it out. Oh, you beauty. Another wicket in this over. What an over this is turning out to be. What a fantastic bowling display, that showcasing by the bowler. Hari Niroli is just making everything successfully.
Only one ball that left to close this encounter between these two teams. Royal Friends Pachilambara versus Champions Sports Bandiod. Here comes a curtain falling delivery from this match. No, yes it is. That's the end of the story. And there will be review asked by the batting team. Oh, it's given as a wide. Confirmation finally comes from the on-field umpire. Now the last ball, beautifully bowled by Hari Niroli, and here comes the first victory for the team. Champion Sports Bandiod won by 6 runs. Congratulations. മത്സരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഓൾറൗണ്ടർ കൂടിയായ അശ്വിത് കാസർഗോഡ്. ചാമ്പ്യൻ സ്പോർട്സ് ബന്ദിയോടിന് വേണ്ടി മനോഹരമായ ബാറ്റിംഗ് പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച അശ്വിത് കാസർഗോഡ് മത്സരത്തിലെ താരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. വാം വെൽക്കം അശ്വിത് ടു കളക്ട് the player of the match award from the beautiful presentation podium of MPL 2026. Welcome Ashit. That's it from the match, and we have one more match left from the day number 4 of MPL 2026. Once again, welcoming back to the combox Abdul Rahman Bekoor. Welcome you. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഫൈസൽ ഫ്രം ഷഹാറ സ്പോർട്സ്. ഈ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റിൽ MPL മണ്ണങ്കുഴി പ്രീമിയർ ലീഗിൻ്റെ പിറകിൽ ശക്തമായ പിന്തുണ അറിയിച്ച ഷഹാറ സ്പോർട്സിനെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഫൈസൽ അവർകളെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഫൈസൽ ഫ്രം ഷഹാറ സ്പോർട്സ്, ഐ വെൽക്കം യു ടു ഗിവ് അവേ ദ പ്ലെയർ ഓഫ് ദ മാച്ച് അവാർഡ്, ആൻഡ് ദി അവാർഡ് ആൻഡ് accolades goes to Ashwit Kasargod. Wonderful all-rounder, a champion all-rounder player from Champion Sports Bandiod, receiving the Player of the Match award. അടുത്ത മത്സരം കടുത്ത മത്സരം, കടുത്ത മത്സരം, അടുത്ത മത്സരം. അടുത്തതും കടുത്തതുമായ മത്സരത്തിൽ കമന്ററി വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ബേക്കൂറിനെ വീണ്ടും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. യുവർ ഫേവറേറ്റ് വോയിസ്, ദ വോയിസ് ഓഫ് അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റ്, ബാക്ക് ഇൻ ദിസ് ലേറ്റ് നൈറ്റ്. थैंक यू डार्विन। MPL सीजन 10वीं 5वीं दिन के लिए सभी दोस्तों को स्वागत करना चाहता हूं।
MPL ലീഗ് മത്സരങ്ങൾക്ക് പര്യവസാനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ബി പൂളിലെ 20ാമത്തെ മത്സരം, ക്ഷമിക്കുക 18ാമത്തെ മത്സരം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ MPLന്റെ 10ാം പതിപ്പിൻ്റെ ചാമ്പ്യന്മാർ ആരാണെന്നുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തകൃതിയായി നാടൊട്ടുക്കും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ MPL 10ാം പതിപ്പിൽ അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകിക്കൊണ്ട് നടത്തപ്പെടുന്ന ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് ക്യാഷ് അവാർഡ് ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു വശത്ത് അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രോഫി പണിപ്പുരയിലാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്നേ വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ട്രോഫി പണിപ്പുരയിൽ അവസാന മിനുക്കുപണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സഹാര സ്പോർട്സ് ദേർലക്കട്ടെ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിൽ അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്നേ വരെ ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ട്രോഫികളുടെ വളരെ മനോഹരമായ അവസാന മിനുക്കുപണികളിലാണ് സഹാര സ്പോർട്സ് ദേർലക്കട്ടെ. മറ്റന്നാൾ ഇവിടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ ട്രോഫി, മനോഹരമായ ട്രോഫിയെ വരവേൽക്കുവാൻ നാടൊട്ടുക്കും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെയും ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയുടെയും അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ മഹാരഥന്മാർ ഏറ്റുമുട്ടി അവസാനം 22-24 മത്സരാർത്ഥികളിലേക്ക് ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ചുരുങ്ങുമ്പോൾ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് അപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏവരെയും ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ നൽകിയ പിന്തുണ, അവസാന മത്സരത്തോളം നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു വശത്ത് 10ാം പതിപ്പ് തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ 2027ൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലിലാണ് 11ാം പതിപ്പ് ഏത് രീതിയിൽ കാഴ്ചവെക്കണമെന്നുള്ളത്. അണ്ടറാം ക്രിക്കറ്റിനെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ആ വാർത്ത അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വാസം. മത്സരത്തിലേക്ക് നേരെ കിടക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലെ അവസാന മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ബി പൂളിലെ 18ാമത്തെ മത്സരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 5ാം ദിവസത്തിലെ ആദ്യ മത്സരം, 5ാം ദിവസത്തിലെ ആദ്യ മത്സരം ഇവിടെ ഏറ്റുമുട്ടുകയാണ്. ഒരു വശത്ത് ഫാൽക്കൻ ഫൈറ്റേഴ്സ് കഡമ്പാർ, മറുവശത്ത് हाई फ्लाइज दुबई। दोस्तों, आप देख रहे हैं MPL सीजन 10वीं 5वें दिन के पहली मैच, यानी कि बी पूल के 18वां मैच यहां पर खेला जा रही है। फाल्कन फाइटर्स ऑन द टॉस इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। हाई फ्लाइज पहली पारी खेलते हुए आरंभिक बल्लेबाज है शाकिरानी जाकी। पहली गेंद पर उन्हीं की शैली पर स्विप किए हैं, हमेशा की तरह खाता खोल चुके हैं, बहुत खूबसूरती के साथ अपने खाता खोले हैं। तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से एक कदमबार के खाते पर फहद मच्छमाड़ी स्ट्राइक पर मौजूद हैं। 9 स्ट्राइक पर थी, अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। नौफल गोरी अंडरआर्म क्रिकेट के प्रमुख खिलाड़ियों से एक दक्षिण कन्नड़ा जिला के सबसे बेहतर ऑलराउंडर। अगले गेंद ओवर द विकेट, और इस गेंद को खेला गया है, बहुत अच्छी फील्डिंग, ओहो हो, ब्यूटीफुल फील्डिंग। ये मात्र 1 रन यहां पर फहद मच्छम्बाड़ी भी खाता खोल चुके हैं। जाकी यानी जाकिर नाम के जाकी। 9 स्ट्राइक पर फहद मच्छम्बाड़ी, गेंदबाजी पर नौफल गोरी, विकेट कीपर पर कार्तिक। अच्छी गेंद, लॉन्ग ऑफ पर जगह बनाए, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद जा रही है, रफ्तार ज्यादा है गेंद पर, रोकने के लिए प्रयास किए हैं, तब तक रोके हैं। रनों की संख्या 3 दौड़कर पूरा कर चुके हैं। रनों की संख्या कुल मिलाकर 5 रन, 3 गेंदे फेंके हैं, 5 रन बना लिया गया है। ഒരു താക്കോൽ ഡെക്കൗട്ടിൽ നിന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ട്. അതാരെങ്കിലും അറിയാതെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് അത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക. മനോഹരമായ ഷോട്ട്, ഇതാ റിവേഴ്സ് ഷോട്ട് മനോഹരമാക്കുന്നു. ഇവിടെ 2 റൺസ് ഓടി പൂർത്തീകരിക്കുന്നു, 3 റൺസ് ഓടി പൂർത്തീകരിക്കുന്നു.
8 रन खाते पर अब अगली गेंद नौफल गोरी ओवर द विकेट और इस गेंद को स्वीप किया गया है। गेंद तो तेज रफ्तार से फील्डर की तरफ गए शहद कड़बार गेंद को उठाएं थ्रो किया तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 9 ऑन द बोर्ड। अंतिम गेंद बचे हैं नौफल गोरी की स्ट्राइक पर फहद ओवर द विकेट नौफल और इस गेंद रक्षात्मक तरीके के साथ खेलने के प्रयास में पूरी तरह चकमा खाएं लेकिन अंपायर कह रहे हैं कि वाइड बॉल है अतिरिक्त गेंद है। रनों की संख्या बढ़ते हुए 10 रन 10 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार दूर वाली चूज से ओवर द विकेट लंबे कदमों के साथ नौफल गोरी फाद के लिए फाद खेला गया है। खेलना चाहते थे यहाँ पर फील्ड हुए थ्रू है तब तक अंपायर ने कहा कि वाइड है और बाई है। 2 रन और एक भी मिले हैं अतिरिक्त के खाते पर। अंतिम 3 रन यहाँ पर अतिरिक्त के खाते पर जोड़ा गया। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 12 ऑन द बोर्ड। अब अगली गेंद और इस गेंद को एक ही हाथ पर बल्ला घुमाए तब तक शहद फिर एक बार गेंद के ऊपर आए उठाएं थ्रो किए। ओवर की समाप्ति 13 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। नए ओवर की शुरुआत श्रवण और इस गेंद को खेला गया है। अच्छी फील्डिंग की लेकिन थ्रो नहीं किए। शहद के तरफ गेंद आते रहते हैं। शहद कहाँ है वहां पर गेंद आ रही है। अच्छी फील्डिंग पे ही करते हैं इन्होंने। रनों की संख्या बढ़ते हुए 14 रन 14 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार श्रवण हाई फ्लाइज के आरंभिक बल्लेबाज दोनों सुरक्षित है मैदान पर। फिर एक बार श्रवण और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है। फील्डर मौजूद उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाए थ्रो किया तब तक लेकिन थेड़े थ्रो थे सीधा नहीं किया राजिक ने। तब तक 1 रन। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 15 रन। फिर एक बार तैयार है श्रवण अपने ओवर के अगले गेंद लेकर तैयार है। जाकी के लिए गेंद फेंकना चाहते हैं दूर वाली चोट से ओवर द विकेट। जाकी बहुत अच्छी शॉट हवा पर गेंद थे फहद के हाथ से जो कुछ गलती हुए हैं तब तक यहाँ पर मौका मिले हैं दूसरे रन के। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान के साथ दूसरे ओवर की प्रगति पर जा रही हैं। श्रवण गेंदबाजी कर रही हैं। जाकी स्ट्राइक पर है। जाकी के लिए फाइन लेग फील्डर है बैकवर्ड है थर्डमैन है गली है मिड ऑफ है मिड विकेट है स्क्वायर लेग पर फील्डर है। फील्डर की तरफ गेंद गई है तब तक हाथों पर गेंद नहीं रुके हैं। 1 रन तो तेजी के साथ दौड़कर पूरा किए और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 18 रन 18 ऑन द बोर्ड। 18 रन बिल्कुल अच्छी तालमेल के साथ शुरुआती कर रही हैं दोनों बल्लेबाजों ने फहद मच्छमवाड़ी और इसी तरह जो जाकी। फिर एक बार श्रवण अपने ओवर के अगले गेंद ओवर द विकेट और इस गेंद को बहुत बढ़िया शॉट गेंद जा रही है वाइड मिड विकेट पर। फील्डर मौजूद है इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाए तब तक 2 रन तोड़कर पूरा कर चुके हैं। 2 रन के सहारे के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए 20 रन पर पहुंच चुके हैं 20 ऑन द बोर्ड। आखिरी गेंद श्रवण की 7 रन तो कर चुकी है श्रवण ने। अच्छी गेंदबाजी के मजा रखी। पहली ओवर तो हल्के महंगी साबित हुए थे। यहाँ पर श्रवण ने दूसरे ओवर के रूप में हिंदुस्तानी स्कूल से गेंदबाजी करते हुए फाल्कन फाइटर्स का डंबार के लिए फाल्कन फाइटर्स का डंबार खेले हुए पहली मैच में टाई हुए थे CSC पब्लिक के साथ में खेलते हुए
दूसरी ओवर के आखिरी गेंद बाकी है। फायद मच्छमबाड़ी को कुछ तकलीफ दिख रही है, इंजरी दिख रही है, लेकिन अब से आए हैं, कोई खतरा नहीं है। यहाँ पर श्रवण फायद मच्छमबाड़ी के लिए अपने ओवर के आखिरी गेंद लेकर जमीन पर टपकाने के बाद ओवर द विकेट, और इस गेंद को उठा कर कहना है मिड विकेट की तरफ, बिल्कुल खाली जगह, और वाइडिश मिड विकेट के फील्डर ने आकर गेंद को उठाई। तब तक 2 रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं, ओवर के संपन्न हो चुके हैं। अच्छी ओवर यहाँ पर जो हाई फ्लैश दुबई के लिए 2 ओवर की समाप्ति पर 22 4 रन, यानी कि 22 रन बिना किसी नुकसान के साथ। जाकिर और जाकी फायद मच्छमबाड़ी आरंभिक बल्लेबाजों के रूप में बहुत बड़े जम गई है मैदान पर। दोनों थक चुके हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल डबल दौड़े हैं। बहुत खूबसूरत स्कोर भी बना है। 11 की प्रतिशत यहाँ पर पावर प्ले में रन बनाए हैं। अब आने वाली 4 ओवर में कितना रन बटोर सकते हैं तो सब देखना बाकी है। इजाज के आगमन हुए बाहर के कंबरोडन से फाल्कन फाइटर्स के लिए तीसरी ओवर के रूप में गेंदबाजी करने के लिए तो पावर प्ले हटा दिए। 5 खिलाड़ी 30 दायरे के बाहर गए। मिड विकेट है, वाइडिश मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है, और लॉन्ग ऑफ कवर क्षेत्र बिल्कुल खाली है, और तैडमैन कैच कर रखे हैं। तब तक फील्डिंग में और एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। मिड ऑफ से फील्डर को लाए गए हैं, और पहली स्लिप में फील्डर मौजूद हैं, और स्क्वायर लेग शॉर्ट फाइन लेग में सर्किल के अंदर एक फील्डर को लाया गया है। फाइन लेग डीप में फील्डर को खड़े किए। जाकिर को जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने स्वीप शॉट खेलते हैं, उस वजह से फाइन लेग में फील्डर को खड़े किए, और शॉर्ट फाइन लेग से एक फील्डर को हटा खड़े किए। अगली गेंद नए गेंदबाज इजाज पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार है। पहली गेंद ड्राइव की है, लॉन्ग ऑफ बिल्कुल खाली जगह पर खेलते हुए गेंद तो गई है, सिमारे के खरी फील्ड किए तो रोकिए। तब तक 2 रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं। 24 बिना किसी चौके में, बिना किसी चक्के में यहाँ पर 24 रन बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा डबल हासिल किए हैं जाकिर ने और फाद मच्छमबाड़ी ने मिलकर। अब इजाज अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार है, लंबे कदमों छोटे कदमों के साथ बायार के कमर ढंग से। अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, पहली डॉट, यहाँ पर पहली डॉट। यहाँ पर देखिए विकेट कीपर, और इसी के साथ फाद मच्छमबाड़ी आउट। अगर फाहद के पहले जाकिर को पकड़ सकते थे, लेकिन कार्तिक कुंबला के हाथ में गेंद तो सुरक्षित नहीं हुए। यहाँ पर बच गई बाल जाकी, फाहद आउट हुए हैं। तच्छी मुसोड़ी के आगमन हुए हैं, कप्तान के आगमन, हाई फ्लैश दुबई के कप्तान के रूप में इन्होंने आगमन हुए थे एमपीएल सीजन 10वीं के लिए। नॉर्थ टेकन पर जाके आइकॉन खिलाड़ी मौजूद हैं आई फ्लैश के लिए। यहाँ पर फाल्कन फाइटर्स के लिए नौफल गोरी खेल रही हैं आइकॉन खिलाड़ी के रूप में। अब अगले गेंद इजाज ओवर द विकेट, टची गेंद को उठाकर खेले हैं, स्क्वायर लेग पर गेंद गए, वाइडिश मिड विकेट पर गेंद गए। तब तक फील्डर मौजूद थे तौसीफ, इन्होंने गेंद को उठाए, थ्रो किए, तब तक मात्र एक रन।
रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर 25 ऑन द बोर्ड, 25 रन। फिर एक बार तैयार है एजाज, कुछ धीमी दिख रही हैं स्कोर कार्ड में। जो फाद मच्छमवाड़ी दूसरी गेंद पर आउट हुए थे, यहाँ पर अब पहली गेंद पर डबल हासिल किए थे जाकी ने। फिर एक बार एजाज अपनी शैली पर झुके और जमीन पर टपकाने के बाद ओवर द विकेट। अच्छी गेंद लेग स्टंप पर, बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की मजारा की है। वाइड के इशारा भी किए हैं मैन अंपायर ने, और इस वाइड के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 26 ऑन द बोर्ड। अच्छी गेंद ड्राइव की है, लॉन्ग ऑन इलाके पर गेंद गई, तब तक फील्डर मौजूद थे, इन्होंने गेंद को तेजी के साथ उड़ाई, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 27, 1 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार इजाज ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार है। इजाज टू तची मुसोड़ी, दूर वाली 400 ओवर द विकेट। तची उठा कर खेलना चाहा, अपील 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 अपील, मैन अंपायर की तरफ देखकर बहुत बड़े अपील कर रही है। कोर्ट भी हैंड के लिए शायद अपील किए, लेकिन अंपायर ने कहा कि कुछ कोई मौका नहीं है। यहाँ पर तीसरी अंपायर के मदद मांग रही है, अंपायर ने टीवी अंपायर के मदद मांगे हैं, बल्ले के आवाज तो सुने हैं, लेकिन ये देखना बाकी है कि गेंद जमीन पर छुकने के बाद, चुम्मा देने के बाद हाथ पर आए ना सीधा आए, ये देखना बाकी है। ഒരു സംഖ്യ കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതാരുടേതാണോ അത് തിരിച്ചു തരാവുന്നതാണ്, തെളിവ് സഹിതം വരിക. നാളെ കൃത്യം 3 മണിക്ക് തന്നെ മത്സരം ആരംഭിക്കും. എന്നത്തേതും പോലെ തന്നെ 2:45 സൈനപ്പ്, 3 മണിക്ക് മത്സരം ആരംഭിക്കും. നാളെ എന്നത്തെയും പോലെ 9 മത്സരമല്ല, 10 മത്സരങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നു. നാളത്തെ ദിനം ഷെഡ്യൂൾ കടുത്തതാണ്, നോക്കൗട്ട് മത്സരങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം മത്സരിക്കുന്ന ടീം RK സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് BSC ബപ്പായി തൊട്ടി തമ്മിലുള്ള മത്സരമാണ് ആദ്യത്തെ മത്സരം. 2:45 സൈനപ്പ്, 3 മണിക്ക് മത്സരം തുടങ്ങും. ഔട്ട് എന്നാണ് വിധിച്ചത്. ഇവിടെ മികച്ച ഒരു തിരിച്ചുവരവ്. ഇജ എറിഞ്ഞ പന്തിൽ തച്ചി മൂസോടി കോട്ട് ബിഹൈൻഡിലൂടെ വിക്കറ്റിന്റെ പിറകിൽ വ്യക്തമായ രീതിയിൽ കാർത്തിക് കുമ്പള നടത്തിയ ആ പ്രകടനം വിക്കറ്റായി മാറുന്നു. ഓവർ സമാപിക്കുന്നു. 2 ഓവറുകൾ 3 ഓവറുകൾ സമാപിക്കുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡിൽ 27. 9 വീതം നേടിക്കൊണ്ട്
27 3 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 2 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ 22 റൺസായിരുന്നു ഇജാസിൻ്റെ അവ്യക്തമായ കർശനമായ ഇടപെടൽ. മൂർച്ചയേറിയ പന്തുകൾ, തീത്തുപ്പുന്ന പന്തുകളിൽ എതിരാളികളെ പിടിച്ചടക്കുന്നു, വിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കുന്നു, ഒരു റണ്ണൗട്ട് സ്വന്തമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ 5 റൺസ് മാത്രമാണ് വിട്ടുകൊടുത്തതെങ്കിൽ 3 ഓവറിൽ വെറും 27. झाकी स्ट्राइकिലാണ്. दोस्तों 3 ओवर की समाप्ति पर 27 रन बहुत अच्छे ऑफसेट किए हैं इजाज. अब गेंदबाजी में नौफल गोरी के आगमन दिख रही है. फिर एक बार पूरी तरह मैदान के कोने कोने पर नजर लगाकर इन्होंने फील्डिंग में परिवर्तन ला रही है. थर्डमैन पे डीप पर एक फील्डर को रखे हैं, लॉन्ग ऑन थर्डमैन पर, फाइन लेग लॉन्ग ऑन फाइन लेग पर यानी कि बाउंड्री लाइन के करीब एक फील्डर को रखे हैं. मिड विकेट है, लॉन्ग ऑफ है और इस गेंद को स्वीप किया गया है. जाड़ू बनाए बल्ले को. 1 रन तो तेजी के साथ दौड़कर पूरा किया. तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 28 for 2. नौफल गोरी अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार है. फाल्कन फाइटर्स कड़म बार के लिए गेंद फेंक रही है. दूर वाली चोट से ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए और इस गेंद को स्वीप किया गया है फील्डर की तरफ और इसी के साथ विकेट नंबर 3 नासर अरिमला डिपार्ट्स. सतार बिली पदाव के आगमन हुए हैं. आक्रमणकारी बल्लेबाज है. नौफल गोरी के सामने क्या कर पाएंगे देखना बाकी है. 3 विकेट पतन हुए. 28 for 3. अब अगली गेंद सतार के लिए. अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर बीट हुई. बहुत खूबसूरत गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी. नौफल गोरी बहुत साल से राम क्रिकेट में मौजूद है. बहुत अच्छे खिलाड़ी नौफल गोरी. 3 गेंदें फेंक चुके हैं, मात्र 1 रन कर चुकी हैं. फिर एक बार दूर वाली चोट से ओवर द विकेट झुके और जमीन पर टपकाने के बाद ओवर द विकेट. अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है. यहाँ पर फील्डर की तरफ जाते हुए लॉन्ग ऑन फील्डर की तरफ गए. तब तक 1 रन और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 29 for 3. नौफल गोरी अपनी खोटे की दूसरी ओवर फेंकते हुए हिंदुस्तानी स्कूल एंड से गेंदबाजी कर रही हैं. सामने जाकिर यानी कि जाकी के लिए लॉन्ग ऑफ से अंदर की तरफ खींच लिया गया फील्डर को. तौसीफ को बिल्कुल सामने लाए, मिड ऑफ सर्कल के अंदर स्लिम मिड ऑफ में लाया गया है. अब अगली गेंद ओवर द विकेट. अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के करार दिया गया है और इस वाइड की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए 30 पर पहुंच चुके हैं. 3 विकेट के नुकसान पर. चौथी ओवर की प्रगति पर गेंदबाजी कर रही है नौफल गोरी हिंदुस्तानी स्कूल एंड से. फिर एक बार और देखिए झाड़ू बनाए एक बल्ले को. गेंद तो तेज रफ्तार से तब तक दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है. 2 रन भी पूरा कर चुके हैं. रनिंग बिटवीन द विकेट देखिए कितनी तेजी के साथ 2 रन पूरा किए. रनों की संख्या बढ़ते हुए 32, लॉस ऑफ 3 विकेट. फिर एक बार ओवर द विकेट. लंबे कदमों के साथ नौफल गोरी ओवर द विकेट. अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल शॉट. लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद गई. तब तक फील्डर मौजूद थे, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ उठाए. मात्र 1 रन. रनों की संख्या बढ़ते हुए 33, लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर.
4 ओवर की समाप्ति पर 33 रन, अच्छी ओवर और 1 ओवर। नौफल गोरी 5 रन, 6 रन और 6 रन, 1 विकेट। बेहतरीन ओवर। अराउंड द विकेट पहली गेंद तौसीफ, बहुत खूबसूरत गेंद उठा करके लाए। गेंद तो लॉन्ग ऑन की तरफ जाते हैं, दूसरी रन के लिए दौड़ पड़े। 2 रन भी पूरा कर चुके हैं। 2 रन के सहारे के 7 रनों की संख्या बढ़ते हुए 35 में से 19 रन भी 14 गेंदों में बनाए जाकिर यानी कि जाकी। फिर एक बार तौसीफ, खड़े खड़े गेंद फेंक रही है और इस गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑफ। लॉन्ग ऑन के बीचों बीच में गेंद जा रही है, गेंद को रोकने के लिए कोई मौका नहीं। गेंद तो गई सीधा सीमा रेखे के बाहर। टन टना टन चौका। इनिंग्स की पहली बाउंड्री। देखिए कितनी शानदार इनिंग्स। अब पहली बाउंड्री है, 23 पर पहुंच चुके हैं जाकिर। बहुत खूबसूरत योगदान देते हुए अपनी टीम के लिए, हाई फ्लैश दुबई के लिए खेलते हुए दूर वाली चौसर ऑन द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। अराउंड द विकेट चलते चलते गए और एक हाथ पर बल्ले पकड़े। यहां पर खतरा हो सकती थी लेकिन गेंद नहीं रुके हैं हाथ पर फील्डर की। तब तक 2 रन दौड़कर पूरा भी कर चुके हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए 41 रन। 5th ओवर प्रोग्रेस यानी कि 5वीं ओवर की प्रगति पर है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। गेंद पहुंचने से पहले 1 रन पूरा करते हैं इन्होंने, बाद में शॉट खेलते हैं। आधी पिच से भी ज्यादा दौड़कर इन्होंने गेंद के पास जाती हैं। अब अगली गेंद लंबे कदमों के साथ, छोटे कदमों के साथ खड़े खड़े गेंद फेंकते हैं अराउंड द विकेट। ये देखिए झाड़ू बनाए, यहां पर शॉट खेले हैं, स्क्वायर लेग पर गेंद गई, तब तक फील्डर जाकर पहुंचे, 2 रन दौड़कर पूरा भी किए। देखिए कितनी शानदार खूबसूरत शैली पर बल्लेबाजी करते हुए जाकिर ने 43 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4.4 ओवर। 2 गेंदे बचे हैं। तौसीफ जाकी ज्यादा से ज्यादा ऑन साइड में रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल हर गेंद में रन बनाती है, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो। ट्रिपल भी हासिल किए, डबल हासिल किए, सिंगल हासिल किए, चौके भी लगाए, चक्का लगाना बाकी है। अब देखना होगा कि अगली गेंद आखिरी गेंद है तौसीफ के सामने है। सतार उठा करके ला है, लॉन्ग ऑफ इलाके पर जगह बनाए, तब तक फील्डर जाकर पहुंचे हैं। 2 रन दौड़कर पूरा भी कर चुके हैं। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 46 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर।
साहद कडम्बार नए गेंदबाज के रूप में उनके आगमन दिख रही है आखिरी ओवर के रूप में। हमेशा इस टीम में हर मैच में इन्होंने आखिरी ओवर के रूप में, डेथ ओवर के रूप में गेंदबाजी की है। अपनी योगदान तो बहुत अच्छे योगदान दिए हैं, अच्छे गेंदबाज भी किए। 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर साहद हिंदुस्तानी स्कूलन से तैयार है। सामने जाकी लंबे कदमों के साथ जमीन पर टपकाने की शैली देखिए, सुंदर शैली के साथ इन्होंने गेंद फेंकते हैं ओवर द विकेट। और भगली गेंद पर चलते चलते गए, गेंद के ऊपर गए, फील्डर पहुंचने से पहले 2 रन, 2 तो क्या 3 भी दौड़ सकते हैं क्योंकि गेंद पहुंचने से पहले 1 रन पूरे करते हैं इन दोनों। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। फील्डरों को बिल्कुल सर दर्द की बल्लेबाज है क्योंकि किस तरफ गेंद आएंगे ये नहीं जानते हैं। मिड विकेट गए हैं, वाइडिश मिड विकेट गए हैं, कवर क्षेत्र पर गए, गली पर गए, थर्डमैन पर गए, फाइन लेग पर गए गेंद। अब अगली गेंद ए देखिए उठा करके लाए, इस बार सर्किल के अंदर है, लॉन्ग ऑन सर्किल के अंदर, मात्र 1 रन, दूसरे के लिए कोई मौका नहीं। 49 लॉस ऑफ 3 विकेट। हाई फ्लैश दुबई के लिए काफी थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं खिलाड़ी जाकी। 49 में से मात्र 1 बाउंड्री, सिर्फ 1 चौका लगा दिए हैं, बाकी सभी सिंगल डबल के साथ हासिल किए। अगले गेंद अच्छी गेंद उठा करके लाए, सत्तार ने मिड विकेट की तरफ गेंद जाते हुए 1 रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा किए, दूसरे के लिए दौड़ना चाहते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द विकेट, सत्तार डिपार्स। नाचू बीसी रोड के आगमन दिख रही हैं हाई फ्लैश दुबई के लिए। सत्तार बच गई हैं जाकी के हाथ से, सत्तार तो बच गई। चक्के लगाएंगे 3000 रुपया शमीम कल्पारा देंगे, किसको? नाचू बीसी रोड को, जाकी को, क्षमा कीजिए जाकी। छक्के लगाएं 3000 रुपये कमा सकते हैं। ओ गेंद तो हवा पर, 3000 की लालच में आउट हुए हैं। अब तक सिंगल डबल ट्रिपल चौका, चक्के नहीं थी। जाकिर मुस्कुराते वापस जा रही है मैदान से बाहर। ये तो मैच है, बहुत खूबसूरत मैच है, आखिरी मैच तो बहुत बड़े मजेदार मैच है। हाई फ्लैश दुबई और फाल्कन फाइटर्स कडम्बार। बालाई चिलंगोड को भेजा गया है, बालाई चिलंगोड। छह 7 साल पहले एसीसी के मैदान पर अर्धशतक बनाकर अंडरआर्म क्रिकेट में प्रवेश किए, अंडरआर्म क्रिकेट में जान पहचानी हुए बालाई चिलंगोड की। अभी भी बड़े बड़े क्रिकेट प्रतियोगिता में बड़े बड़े टीमों में शामिल हो जाती है बालाई चिलंगोड। साहद अपनी योगदान तो बहुत अच्छी तरह निभा रही है। रनों की संख्या 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 2 गेंदे बचे हैं, जाके आउट हो चुके हैं, नाचू नो स्ट्राइक पर है, स्ट्राइक पर बालाई चिलंगोड है। पिंच हिटर के रूप में जाना जाती है इस खिलाड़ी को। अब अगली गेंद ओवर द विकेट। साहद उल्टा बल्ले में खेला गया है, तब तक फील्डर मौजूद हैं, मात्र 1 रन, दूसरे के लिए कोई मौका नहीं। नाचू यहां पर मौजूद है। 51 ऑन द बोर्ड। नाचू स्फोटक शैली में बल्ले घुमाने वाले बल्लेबाज है, देखना होगा कि क्या कर पाते हैं इस खिलाड़ी। हमेशा स्फोटक शैली पसंद करते हैं। साहद कडम्बार के सामने आखिरी गेंद को सामना करने के लिए तैयार है। जमीन पर टपकाने के बाद ओवर द विकेट। लेग स्टंप पर बीट हुई, तब अंपायर ने कहा कि गलत लेन है भैया, नाचू के लिए मौका मिलेगी यहां, क्योंकि नाचू को मौका देने के लिए खुदकुशी की है, आत्माहुति की है बालाई चिलंगोड ने।
2 रन तो फ्री में मिल गई थी, फिर ट्रिपल के लिए दौड़ रही थी 3 रन बनाने के लिए, और इस 2 रन के सहारे के साथ 53 लॉस ऑफ 6 विकेट। साहद सलाम 9 सेकंड पर आए, स्ट्राइक पर नाचू। नाचू बीसी रोड स्फोटक शैली में बल्ले घुमाते हैं, उठाकर खेला है मिड विकेट पर गेंद जाते हुए लोंगोन पर गए, तब तक दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है। कार्तिक ने कलेक्ट किए और आउट किए हैं, नासिर आउट, लॉस द 7th विकेट। 54-55 इज द विक्ट्री टारगेट। 55 रन, व्हाट ए डिजिटल नंबर, फैंसी नंबर निकले हैं 55। किसी का जैसी में 55 है क्या देखना बाकी है। 32 जैसी नंबर पहने थे रियाज एन्नम, 32 रन बनाए थे इन्होंने सीएससी पब्लिका के लिए, शानदार बल्लेबाजी किए थे। अब देखिए 55 रन के लक्ष्य रखे हैं, सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं जाकी, 31 रन 31 रन के पारी खेले हैं। हाई फ्लैश के सभी मालकों टीम के साथ बहुत खूबसूरती के संतुष्टि के साथ है, क्योंकि टीम के आइकॉन खिलाड़ी ने बहुत अच्छे खेले, हसन पेरला और इसी तरह फरजाद, बहुत खुशी की नज़ारा है वहाँ पर। कलील न्यू बॉयज़ और इसी तरह अजहर बिच्छू बॉयज़ और हनीफ कुंजी, जिया पैबली का भी है। जिया पैबली के कुछ देर तक सीएससी के मालक थे, अब तो यहाँ पर हाई फ्लैश के मालक बन गई है। इसको कहते हैं ये है क्रिकेट। सत्तार मुसोडी ऑलरेडी मौजूद है इस टीम के साथ में। अब तैयार है 55 को पीछा करने के लिए फाल्कन फाइटर्स के आरंभिक बल्लेबाज शम्मी और नौफल गोरी। देखिए यहाँ पर मालकों की बात कर रही थी, तब यहाँ पर कमेंट्रेटर मैं हूँ अब्दुर्रहमान बेकुर। मैंने कहा कि जो हाई फ्लैश के मालकों के संख्या में ज़्यादा होते जाती है, तब अब जिया पैबलिका ने कहा कि इस तारीफ करने से कमेंट्रेटर अब्दुल रहमान को 2000 रुपया यहाँ पर इनाम पुरस्कार इन्होंने घोषित किए। धन्यवाद। अब 55 रन के लक्ष्य को खड़े किए हाई फ्लैश दुबई और फाल्कन फाइटर्स कड़मबार के बीच में। बहुत अच्छी मैच है, बहुत खूबसूरत मैच है, क्योंकि दोनों को जीतना बिल्कुल जरूरी है। कोई मामूली मैच तो नहीं है, यहाँ पर अंतिम क्षण तक जा रही है लीग राउंड मैच। ब्यूटीफुल मैच। अब अगली गेंद, पहली गेंद, ओहो व्हाट ए स्टार्टिंग। लेकिन यहाँ पर अंपायर ने कहा कि गलत लाइन पर गेंद गिरे, तब तक वाइड के इशारा किए। वाइड के मदद से खाता खोल चुके हैं। जाकी गेंदबाज के रूप में तैयार है। फिर एक बार बता गेंद, ओहो लेग स्टंप पर बीट हुई इस बार। विकेट कीपर के हाथ पर गेंद नहीं रुके थे, फिर भी कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं।
1 बॉल 1 रन। अब अगली गेंद लंबे कदमों के साथ ओवर द विकेट अंपायर को घोष करते हुए तैयार है और इस गेंद को स्वीप किया गया है। जादू शॉट खेले हैं, फील्डर पहुंचे हैं, तब तक रोके हैं 1 रन। ये मात्र 1 रन पर रोक दिया गया है। अच्छी शॉट थी। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 2 ऑन द बोर्ड। जाकी गेंद फेंक रही है, तब स्ट्राइक पर पहुंचे हैं शम्मी परेड का और नौफल गोरी। 2 खिलाड़ी मौजूद हैं। शम्मी परेड का स्ट्राइक पर मौजूद है और वह विकेट नौफल और इस गेंद को उठा कर खेला है हवा पर। गेंद फील्डर नीचे थे लेकिन अंतिम क्षण पर गेंद हाथ से फिसल गई। ये तो बहुत बड़े नुकसान की बात है, निराश की बात है। नौफल गोरी तो काफी निराश है क्योंकि सबसे बड़े मछली को झाल में फंसाने की मौके को गवा दिया गया। यहां पर कैच छोड़ो यानी कि मैच छोड़ो, क्योंकि बड़े बल्लेबाज हैं। कैच दिए थे तब तक का लेग ब्रेक गेंद की गति समझ नहीं पाए थे, उठा कर खेले थे, टॉपेज भी हुए थे, फील्डर भी खड़े किए थे, पकड़े नहीं। अब अगली गेंद गेंद तो जा रही है शॉर्ट लेग पर, तब तक 1 रन और इस 1 रन के मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 4 ऑन द बोर्ड। 4 रन, 4 गेंदें फेंक चुके हैं नौफल गोरी और शमी परेड का। जाकी गेंदबाजी करते हुए ओवर द विकेट। अच्छी गेंद उठाकर खेलना चाहते थे और इसी के साथ चकमा का है। अच्छी गेंद थी, ब्यूटीफुल डिलीवरी। कोई रन नहीं, कोई खतरा भी नहीं है। कुछ चोट लगे हैं, इंजरी लगे हैं इनको, कुछ निराश दिख रही है, परेशानी दिखा रही है इन्होंने। जो भी हो फिर एक बार तैयारी करते हुए नौफल गोरी के लिए फिर एक बार लंबे कदमों के साथ जाके रन जाकी फील्डिंग में परिवर्तन लाए हैं। गली पर फील्डर को लाए गए और वह विकेट। व्हाट ए कीपिंग, व्हाट ए विकेट कीपिंग के मजा रखे हैं फहद मच्छम्बाड़ी। कोई भी काम जम जाती है इनको, दिखा दिए। फील्डिंग में नंबर 1, कीपिंग में नंबर 1, आरंभिक बल्लेबाज में नंबर 1 परफॉर्मेंस। अब देखिए शानदार गेंदबाजी भी कर लेते हैं, लेग स्पिन गेंद तो बहुत अच्छी तरह गेंद फेंकते हैं। अब देखिए शानदार ओवर की समाप्त हुए हैं। रनों की संख्या अभी भी 4 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। नासिर अली मला के आगमन हुए हैं। बायर के कमरोडन से खड़े खड़े गेंद फेंकने के लिए तैयार हैं। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, अपील की है लेकिन नकारा। 1 रन तो दौड़कर पूरा किए, लगभग के इशारा किए। बल्ले पर नहीं खेले हैं, पैड पर खेले हैं, दिखा रहे हैं। शम्मी स्ट्राइक पर थी, अब नौफल गोरी स्ट्राइक पर आ चुके हैं। बहुत अच्छी गेंद फेंके हैं। पहली गेंद स्कोर कार्ड पर 5 रन 0, 5 पर 0, 55 रन बनाना है। अभी भी 50 रन बनाना है मैच को जीतने के लिए फाल्कन फाइटर्स के बार को।
लंबे कदमों छोटे कदमों के साथ ओवर द विकेट और इस गेंद को उठा कर खेला है हवा पर गेंद फील्डर मौजूद गेंद के नीचे और इसी के साथ विकेट नंबर 1 डिपार्ट। किसके इंतजार थे उसी विकेट मिल गई है। नासिर अरीमला ने ब्रेक थ्रू दिए हैं, जबरदस्त विकेट। काफी ऊंचे गए थे यहां पर, तच्ची ने कोई गलती नहीं की, गेंद के नीचे से सलामत आए और इसी के साथ आउट। अब देखिए राजी कय्यार को भेजा गया है, बहुत बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं। उनको मेरे ख्याल में इस मैच में प्रमोट किया गया है, बैटिंग में आगे भेजे हैं। यहां पर 50 रन और भी बनाना है तो ऐसे बल्लेबाजों को भेजना ही होगा। नौफल गोरी के विकेट पतन हुए हैं, अब तो तैयारी कर रहे हैं फिर एक बार। नासिर अरीमला गेंदबाजी पर दूसरी ओवर के रूप में गेंदबाजी कर रही है। तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार है, 2 सफल गेंद फेंक चुके हैं। फिर एक बार ओवर द विकेट अंपायर को कोशिश करते हुए तैयार। अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, अपील और इसी के साथ राजी कय्यार दिबाक विकेट नंबर 2। देखिए अब हैट्रिक के लिए मौका है नासिर अरीमला को। कार्तिक कुंबला के आगमन हुए, लिटिल मास्टर ऑफ अंडराम क्रिकेट, उनके आगमन हुए तब अब तो बिल्कुल प्रेशर के साथ खेलना ही होगा। गेंदबाजों ने पूरी तरह आत्मविश्वास भरी हुई स्थिति पर हैं क्योंकि 2 खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी को आउट किए हैं। आरंभिक बल्लेबाज नौफल गोरी के विकेट मिले और उसके बाद राजिक के विकेट मिले हैं। अब तो हैट्रिक के किनारे पर हैं। अब देखना होगा कि कार्तिक कुंबला कैसे जम जाती हैं पिच पर। ओवर द विकेट, जमीन पर टपकाने की शैली देखिए। ओवर द विकेट और इस गेंद बिल्कुल गुम कर खड़े हुए थे, विकेट कीपर छोड़ते हुए वाइड और 1 बाई, 2 रन फ्री में मिले हैं। हैट्रिक अभी भी मौका है इनको, हैट्रिक के लिए अभी भी मौका है। स्ट्राइक पर मौजूद हैं 6वीं पीरियड का आरंभिक बल्लेबाज है, तैयार हैं ओवर द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए। 6वीं उठा कर खेला है, गेंद तो हवा पर जरूर है। यहां पर फील्डर तो काफी कोशिश किए, तब तक गेंद गई है सीमा रेखे के बाहर। टन टनाटन चौका। अब अगली गेंद दखल दी है थर्डमैन इलाके पर, तब तक मात्र 1 रन। रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 12 ऑन द बोर्ड, 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर की प्रगति पर है, आखिरी गेंद बचे हैं। नासिर अरीमला तो लाजवाब ब्रेक थ्रू दिए थे और 1 विकेट राजी के दूसरी विकेट भी हासिल किए थे। इस बार उल्टा बल्ले में खेला गया है, गेंद तो सीधा जा रही है सीमा रेखे के बाहर। टन टनाटन चौका।
जाकी को वापस मौका मिले तीसरे ओवर के रूप में गेंदबाजी करने के लिए। 24 गेंदे बचे हैं और भी रन बनाना है, 39 रन बनाना है मैच को जीतने के लिए। जाकिर के आगमन हुए हैं, 2 बार चौके लगाए, तब देखिए कितनी शानदार वापसी आए हैं स्कोर कार्ड पर। जाकी आए हैं स्ट्राइक पर सेमी पीरियड का, नॉट सेकंड पर कार्तिक है। अब अगले गेंद कोटे की दूसरी ओवर फेंकने के लिए आइकॉन खिलाड़ी नौफल गोरी तैयारी हुए हैं, तब वो फील्डिंग में परिवर्तन ला रही हैं। स्ट्राइक पर सेमी पीरियड का दूर वाली चूज से विकेट नौफल गोरी, और इस गेंद को रक्षात्मक तरीके के साथ खेला है, कोई फील्डर मौजूद नहीं थी। स्क्वायर लेग के फाइन लेग के फील्डर ने तेजी के साथ आए, जल्दबाजी की है, तब तक एक के जगह में 2। 23 टू गो, 37 टू गेट। धीरे धीरे मैच को अपने तरफ खींचते हुए दोनों बल्लेबाजों ने, सेमी पीरियड का और कार्तिक कुंबला ने। अब तो ब्रेक थ्रू जरूरी है यहां पर हाई फ्लैश को, ये तो कोशिश करते ही होंगे नौफल ने। ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, बहुत अच्छी गेंद थे। कदमों को आगे बढ़ाएं, क्रिस्ट से बाहर निकले, यहां पर पुश करना चाहते थे। जो गली इलाके बिल्कुल खाली थे उसी इलाके पर खेलना चाहते थे मेरे ख्याल में। अब अगले गेंद, ये देखिए उसी शैली पर इस बार सफल हुए हैं। एक रन तेजी के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है और खतरा हो सकते हैं, लेकिन खरीबी मामला थे, बच गई बाल बाल। 2 रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं। 2 रन के सहारे के साथ रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस, देखिए खिलाड़ी आ रही थी तब तक दूसरे खिलाड़ी ने आकर, तच्छी ने आकर परिंदा की तरह गेंद कुटाए। थ्रो टू 1 बाउंस के बाद विकेट कीपर की तरफ पहुंचे हैं, वरना यहां पर करीबी मामला हो सकती थी। 2 रन के साथ 20 रन, अभी भी 35 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। तीसरी ओवर की प्रगति पर है मैच, 3 गेंदे बचे हैं इस ओवर में। नौफल गोरी, क्षमा कीजिए, जाकिर नहीं जाकी। नौफल गोरी की पहली विकेट पतन हुए, दूसरी रांची कैयार के बड़े बड़े विकेट पतन हुए हैं जल्द। अब अगले गेंद ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी, दखल दिए, मिड ऑफ सर्कल के अंदर फील्डर थे उनके तरफ गेंद गए, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से 21 ऑन द बोर्ड, 34 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 20 डिलीवरी। 20 गेंदे बचे हैं। नौफल गोरी ने जो जाकी ने फील्डिंग में कुछ ही परिवर्तन ला रही है, गली पर फील्डर को लाया जा रहे हैं। कार्तिक कुंबला के लिए तैडमन खींच कर रखे हैं, फाइन लेग खींच कर रखे हैं, बाउंड्री रोकना चाहते हैं। अब तैयार है अगले गेंद लेकर नौफल जाकी। बढ़िया गेंद थी, विकेट कीपर के हाथ पर गेंद नहीं रुके। नौफल के क्या कसूर है, जाकी की क्या कसूर है, बहुत बड़े गेंद फेंके थे। बाउंस के ओन बाउंस के बाद विकेट कीपर के तरफ पहुंचे हैं फहद। अब तो देख रही हैं चारों तरफ अपने जगह पर आकर खड़े हुए हैं विकेट कीपर के स्थान पर। अब अगली गेंद जाकी, ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, सीधा खेले है जाकी। हो ये देखिए लॉटरी विकेट। इस विकेट के बिल्कुल जरूरत थी, क्योंकि विकेटों के बीच में दौड़ना इनके आगे बहुत कम लोग हैं। देखिए बहुत बड़े विकेट सीधे खेले थे जाकी के हाथ पर। जाकी बायां हाथ पर गेंद कुटाए, सीधे थ्रो किए, तब तक डायरेक्ट हिट। कार्तिक डिपार्ट। नए बल्लेबाज के आगमन हुए हैं, विश्वजीत कुंबला। विश्वजीत के आगमन हुए हैं, अच्छी बल्लेबाज के रूप में जाना जाती है इनको। सेमी पीरियड का कब तक मैदान पर मौजूद हो तब तक यहां पर उम्मीद तो फाल्कन फाइटर्स को होगा, क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज हैं। अब देखना है कि ओवर समाप्त हुए हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 22 for 3।
नौफल आउट हुए, राशिक आउट हुए, अभी अभी कार्तिक भी आउट हुए हैं और एक विकेट के इंतजार तो करते ही होगा, क्योंकि चम्मी पीरियड का जैसे बल्लेबाज को अगर अंतिम क्षण तक रहने छोड़ेंगे तब यहां पर खतरनाक हो सकते हैं। अब नए गेंदबाज के आगमन हुए हैं, न्यू बॉलर राफी चिलंगोट। राफी चिलंगोट के आगमन हुए तब स्ट्राइक पर विश्वजीत कुंबला। लंबे कदमों के साथ अराउंड द विकेट। अच्छी गेंद ड्राइव की है, गेंद तो बल्ले की बारी सा लगकर गेंद गई, तब तक विकेट कीपर ने जाकर गेंद कुटाए। मात्र 1 रन, रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इस 23 ऑन द बोर्ड। फिर एक बार तैयारी करते हुए राफी टू चेमी पीरियड का के लिए अपने ओवर के दूसरे गेंद के लिए तैयारी कर रही हैं। जमीन पर हल्के हल्के टपकाने के बाद सुंदर शैली के साथ ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, खराब गेंद। अतिरिक्त गेंद यहां पर बहुत बड़े नुकसान पहुंचा सकती हैं कोई भी टीम को। रिक्वायर्ड आउट ऑफ 17 डिलीवरी, 17 गेंदे बचे हैं, 30 रन चाहिए। विश्वजीत कुंबला स्ट्राइक पर आ चुके हैं। अराउंड द विकेट राफी के सामने विश्वजीत अराउंड द विकेट। अच्छी गेंद उठा करके ले हैं मिड विकेट की तरफ, तेज रफ्तार से जाते हुए, कोई मौका नहीं फील्डर को, सीमा रेखा के बाहर, टन टनाटन चौका। व्हाट ए शॉट! विश्वजीत AK-47 से निकलता हुआ गोली की तरह गेंद तो गई है मिड विकेट की तरफ, 2 फील्डर के बीचों बीच में। पटने के बाद देखिए उछाल के साथ आए थे, पूरी तरह ग्रास भरी हुई जगह है और इस जगह में अचानक एक बाउंस मिले हैं। उस बाउंस के साथ फील्डर को दौड़ नहीं पाए, तब तक चौका। रनों की संख्या बढ़ती हुई टोटल स्कोर इस 29, 16 बॉल 26 रिक्वायर्ड। राफी अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार है, दूर वाली चौसर ऑन द विकेट। अंपायर को घोष करते हुए विश्वजीत के लिए, विश्वजीत खेलना की प्रयास की है, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर ने कहा कि अतिरिक्त गेंद है, वाइड बॉल है। जाकी मांग रही है रिव्यू मांगे हैं, मात्र 2 रिव्यू रह जाती हैं और इस पहली रिव्यू तो इन्होंने यूज कर रही हैं। अगर सक्सेसफुल हो तो, सफल हो तो और भी मौका मिलेंगे। अब तैयार हैं तीसरे अंपायर। That's a wide. रिव्यू तो नुकसान के हैं, अब एक रिव्यू बचे हैं। बल्लेबाजों के लिए 2 रिव्यू भी बचे हैं। ये तो बहुत बड़े तरीका है, आजकल तो डिजिटल संविधान है तो उपयोग करते हैं। अरुण विकेट राफी दूर वाली छो से अरुण विकेट गेंदबाजी करते हुए बायर के कंबर ओडन से राफी। विश्वजीत अपील की है और इसी के साथ महत्वपूर्ण ऑप्सी 2 टन डिलीवरी। अच्छी गेंद की मजारा की है, ऑप्सी तो बहुत अच्छे किए। फिर एक बार तैयारी करते हुए राफी ने
दूर वाली चौसर ऑन द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए राफी टू विश्वजीत। अच्छी गेंद, बल्ले की बारी, हिस्सा लगकर वहीं चकमाकाए, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। काफी खुश हैं सारे खिलाड़ी आई फ्लैश के डेकआउट से हल्के हल्के आवाज आने लगे हैं। खामोश हैं दोनों डेकआउट, क्योंकि जीतना बिल्कुल जरूरी है दोनों टीम के लिए। 14 गेंदे बचे हैं, अभी भी 25 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। 25 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 14 डिलीवरी। फिर एक बार तैयारी है, अपनी ओर की 5वीं गेंद लेकर तैयार है राफी चलंगोड, उनके सामने विश्वजीत फिर एक बार तैयारी कर रही है। दूर वाली चौसर ऑन द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए तैयार है। विश्वजीत के सामने राफी लंबे कदमों के साथ। अच्छी गेंद और अपील 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 अपील, लेकिन अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया। लेग बाई के इशारा तो जरूर किए हैं, पैड पर खेले जरूर, लेकिन स्टंप के आगे पैर नहीं थी, यानी कि पैड नहीं थी। बिल्कुल अच्छी ऑफ की है राफी ने। 13 टू गो, 24 टू गेट। 24 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। फिर एक बार राफी दुर्वाली चौसर ऑन द विकेट अंपायर को क्रॉस करते हुए राफी टू चमी। चमी पीरियड का भी मौजूद है। दुर्वाली चौसर ऑन द विकेट राफी आखिरी गेंद लेकर, और इस गेंद को उल्टा बल्ले में खेला गया है तब, और इसी के साथ चमी पीरियड का के विकेट के पतन भी हो चुके हैं। बहुत खूबसूरत विकेट, इस इनिंग्स के गोल्डन विकेट कहना होगा इस समय पर, क्योंकि गलती तो मेरे ख्याल में चमी ने की है। स्वीप करना चाहते थे, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन टॉपेज हुए हैं और इसी के साथ विकेट पतन भी हुए हैं। अब पूरी तरह विश्वास विश्वजीत के ऊपर रखना ही होगा। नए खिलाड़ी की आगमन हो रही है, 77 नंबर के खिलाड़ी हैं। अश्रु के आगमन हुए हैं। अश्रु अब तो स्ट्राइक पर विश्वजीत जरूर आएंगे। लाजवाब आउटस्टैंडिंग चौके लगाए थे विश्वजीत ने। 12 टू गो, 24 टू गेट। हिशाम कन्नूर, हिशाम के आगमन हुए हैं। हिशाम तो गेंदबाजी के लिए तैयारी भी हुए हैं। अब अराउंड विकेट तैयारी होते हुए लंबे कदमों के साथ दूर वाली चोर से स्ट्राइक पर मौजूद हैं विश्वजीत। ईशाम तो अपने योगदान तो कितने शानदार निभा रहे हैं, देखिए पहले मैचों में। और इस गेंद को खेला गया है, स्क्वायर लेग पर तेज रफ्तार से गेंद गई, तब तक फील्डर पहुंच गई हैं और थ्रो भी किए, तब तक 2 रन दौड़कर पूरा कर चुके हैं। विश्वजीत लड़ रही है, बिल्कुल अंतिम क्षण तक लड़ेंगे तब कुछ ना कुछ यहां पर फाल्कन फाइटर्स के लिए कर सकते हैं। 11 में 22, अभी भी प्रतिशत 12 के हैं। हर गेंद में डबल डबल हासिल करते रहना चाहिए। अगले गेंद दूर वाली चौसर ऑन द विकेट। हिशाम टू विश्वजीत। बड़े 1-2 शॉट दुनिया बदल सकते हैं। अच्छी गेंद यहाँ पर देखिए, फील्डर की तरफ गेंद गई है शॉर्ट फाइन लेग पर, तब तक 1 रन। अभी भी 21 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए 10 गेंदों में। 12 से ऊपर गई है रिकॉर्ड रन रेट। .6 12.6 के प्रतिशत यहां पर बनाना है मैच को जीतने के लिए। एक डॉट होते ही यहां पर सिंगल आते ही जो प्रतिशत बढ़ते जाएंगे। अब अगली गेंद शाम दूर वाली चौसर ऑन द विकेट, और इस गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, ब्यूटीफुल डिलीवरी, कोई रन नहीं, कोई खतरा नहीं। महरूफ ईशाम, क्षमा कीजिए ईशाम कन्नूर
शानदार गेंदबाजी करते हुए 9 गेंदों पर 21 रिकॉर्ड रन रेट 14 पर पहुंच चुके हैं, 14 पर पहुंच चुके हैं। अब हिशाम देखिए कितने शानदार गेंदबाजी कर रही है, मालक के विश्वास के ऊपर इन्होंने जो योगदान दे रही है अराउंड द विकेट। अच्छी गेंद उठा करके ले हैं मिड विकेट की तरफ गेंद जाते हुए, और इसी के साथ एक रन मिड ऑफ की सर्किल, मिड ऑफ के पास लोगों पर गेंद गई, तब तक 1 रन, और इस 1 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर ऐसा 35, 20 रिकॉर्ड आउट ऑफ 8 डिलीवरी, रिकॉर्ड रन रेट इज 15, सिंगल डॉट बॉल, यहां पर स्ट्राइक रेट, रिकॉर्ड रन रेट बढ़ते जा रही है अराउंड द विकेट इशाम। अब अगली गेंद दूर वाली चूसर अराउंड द विकेट, इशाम कन्नूर तैयार है। लेग स्टंप के काफी बाहर, यहां पर रनआउट के लिए खतरा हो सकती थी, लेकिन वाइड बॉल थे, बाई में रन दौड़ना चाहते थे। एक रन मिले हैं वाइड के रूप में, अभी भी 19 रन चाहिए, 8 गेंदे बचे हैं। छक्के चौके दुनिया बदल सकते हैं, स्कोर कार्ड बदल सकते हैं, फाइटर्स की तरफ जा सकते हैं। अब इशाम अराउंड द विकेट, अच्छी गेंद उठा करके लाए, तब तक स्क्वायर लेग वाइड मिड विकेट पर गेंद गई, तब तक 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ा जा रही है, 2 रन भी पूरा कर चुके हैं। 17 रिक्वायर्ड आउट ऑफ 7 डिलीवरी, 7 में 17। टाइम आउट, ये तो बिल्कुल मदद मिलेंगे बल्लेबाज को, क्योंकि 5 के जगह से 4 बन जाएंगे। $38, 17 रिक्वायर्ड। अब अगली गेंद लेकर तैयार है दूर वाली जो से अराउंड द विकेट, विश्वजीत लड़ रही है और अच्छी गेंद खेला गया है, तब तक का मात्र 1 रन। अब ओवर की समाप्ति, 16 रन की जरूरत है 6 गेंदों में, 16 रिकॉर्ड आउट ऑफ 6 डिलीवरी। आखिरी ओवर के रूप में बाला चिलंगोड़ के योगदान दिख रही है, 16 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। मन्नगुझी मिनी स्टेडियम पर 16 रन बने हुए रजिस्टर हैं, 23 रन बनाए हैं एचएन फ्रेंड्स हिदायत नगर के सामने। बीपी सिद्दीक ने गेंदबाजी किए थे, 23 रन की जरूरत थी, तब सामने वाली टीम ने आसानी के साथ बनाए थे। वाइड प्लस नो बॉल। रिक्वायर्ड बालाई चिलंगोड़। ओह, पहली गेंद पर झटका, वो भी सबसे उम्मीद वाली खिलाड़ी थे, विश्वजीत के ऊपर पूरी तरह उम्मीद रखे थे, क्योंकि हार्ड हिटर है। उनके विकेट पतन हुए, तब नए खिलाड़ी के आगमन हुए।
बच्ची बल्लूर के आगमन हुए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज स्फोटक शैली में बल्लेबाजी करते हैं इन्होंने। अब तो बाला चिलंगोड के सामने क्या कर पाएंगे देखना बाकी है। हाई फ्लैश दुबई के लिए व्हाट डिलीवरी, देखिए कितनी शानदार गेंद है। 4 गेंद में 16 रन की जरूरत है। 4 to go, 16 to get, 39 ऑन द बोर्ड। अब अगली गेंद बाला बच्ची उठा करके ले हैं हवा पर गेंद और इसी के साथ आउट। 3 to go, 16 to get। बच्ची बल्लूर भी आउट हुए। 3 to go, 16 to get। स्ट्राइक पर न्यूमैन श्रावण ओवर द विकेट। अच्छी गेंद, ब्यूटीफुल डिलीवरी। फिर एक बार बॉल, बाला चिलंगो टेक द सेकंड विकेट। टेक द थर्ड विकेट। Two to go, 16 to get। दो गेंदे बचे हैं, 16 रन की जरूरत है अब मैच को जीतने के लिए। फाल्कन फाइटर्स इजाज वाइड बॉल। और इस गेंद को स्वीप किया गया है। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद जाते हुए फिर लेते ना आते इन्होंने गेंद को तेजी के साथ रोके। तब तक 2 रन, 2 रन की मदद से रनों की संख्या बढ़ते हुए टोटल स्कोर इज 42 ऑन द बोर्ड। 13 मोर रन रिक्वायर्ड आउट ऑफ 1 डिलीवरी। टाइम आउट 4 में से 3 बन गई है। आखिरी गेंद डॉट हुए और इसी के साथ हाई फ्लैश दुबई के लिए बहुत बड़े जीत यहां पर दिलवा दिए हैं गेंदबाजों ने मिलकर। कंग्रेचुलेशन हाई फ्लैश दुबई, थैंक यू फाल्कन फाइटर्स कड़ंबा। മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് കടക്കേണ്ടതുണ്ട്. മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാര വേദിയിൽ 5ാം ദിവസം നടന്ന ആദ്യ മത്സരം ഇവിടെ ഇതാ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുമ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല മത്സരാർത്ഥിക്കുള്ള അവാർഡ് അഫ്സൽ ഹിദായത്ത് നഗർ നൽകുന്ന മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം അണ്ടർആം ക്രിക്കറ്റിന്റെ റോബർട്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജാക്കിർ എന്ന ജാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുമ്പോൾ HN ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗർ എന്ന മഹാസംഘടനയുടെ അനിഷേധ്യനായ അധ്യക്ഷൻ അഫ്സൽ അദ്ദേഹം നൽകുന്നു.
മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാര വേദിയിലേക്ക് സന്തോഷപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ് എച്ച് എൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഹിദായത്ത് നഗർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അഫ്സൽ ഹിദായത്ത് നഗർ നൽകുന്ന മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് പുരസ്കാരം ഗോസ് ടു സാക്കിർ എന്ന ജാക്കി. അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം നൽകുമ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് വിടാം. താങ്ക് യു, ഗുഡ് ബൈ. ₹500 ക്യാഷ് അവാർഡും കൂടി നൽകുകയാണ്. അത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി സത്താർ അണ്ടറാം ചാരിറ്റി അസോസിയേഷൻ്റെ നിഷേധനായ അധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹം നൽകുന്ന ക്യാഷ് അവാർഡ് 1500. അതേപോലെ ₹500 ക്യാഷ് അവാർഡ് ഫഹദ് മച്ചമ്പാടിക്ക് നൽകുന്നു. ഫഹദ് മച്ചമ്പാടിക്ക് നൽകുന്ന ക്യാഷ് അവാർഡ്. ടൂർണമെന്റ് വളരെ മനോഹരമായി മുന്നിട്ട് നടത്തുമ്പോൾ അഞ്ചാം ദിവസത്തിലെ ആദ്യ മത്സരം ഇവിടെ പരിസമാപ്തി കുറിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങും. ഒന്ന് ചെറിയ ഉറക്കം, അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ വരുന്നു. ഐഫ്ലേസ് നൽകുന്ന ₹2000. ആർക്ക്? The bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello,
welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and press the bell icon for recent updates. Hello, welcome to Shine Sports. Subscribe to the channel and